Here I welcome everyone here present physically and who are joining online on World Brain Day. World Brain Day is celebrated on 22nd July every year. The theme proposed by World Federation of Neurology is Brain Health for All. We today in AIIMS will be converging our thoughts and discussions on brain health issues in school children and concerns and solutions. Brain is perceptive and is continuously challenged by pandemics, wars, climate change, and other defined and undefined factors. There are about 10 trillion connections between billion of neurons which help us to read, write, learn, plan, think, feel, move, and solve problems daily. Here today we invite the pediatrician, pediatric neurologist, neuroscientist, health professionals, trainees, technologists, parent and patient support groups to grace the occasion on World Brain Day. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर काकली। आप सभी को नमस्कार और आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। प्रथम चरण में समय के अभाव के कारण मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर विश्वजीत साहा सर को। सर सीबीएसई में डायरेक्टर इन ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन है और हमें सरकारी नीति, सरकारी पहल जो बच्चों और किशोरों के व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध है, उनसे हमारा परिचय कराएंगे, जिनसे हम सभी इनका अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आपका सादर आमंत्रण है सर। सर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। school level we can definitely use, and we can empower the parents especially. That is the core objective. I feel everybody will receive in a very well mannered way. So at this stage, if we look into the study of cognitive development, especially in school age children, this has been a central focus of development research over past 30 years. And
there is an enormous research literature. What is the nature of children's knowledge? How does their knowledge changes with the development? And in pursuing these fundamental questions in the study of cognitive development, researchers are trying to focus on multiple areas, and how the government or regulator are going to accept those literature and gradually formulate the policy which in turns help the children and parents especially to their empowering experiences. So this is a big questions which we all are realizing. But if in Western world versus in India and other geography, much research are not being carried out because the children centric. How first of all, our key concern is how children learn. There are definitely some amount of research being carried out at NCRT, but these kind of intersections or collaborations between the premier health institutes, and I have seen Professor Tapanji is also very much here. So the IIT and AIIMS, when they collaborate, I think there would be a positive infusions on the brain development behaviors. And I think that is definitely going to give the lot of inputs which Indian parents in a way can take up, and they can also get up to date knowledge. So in general, orientations or investigations of this cognitive development are similar for all ages, rather age group I should say, this is whether it is infancy, childhood and adulthood. The vast majority of investigations, however, involve school children, especially with this age group between 4 to 18. Let me try to discuss about emerging consciousness, about the pattern of cognitive development in school age children. Descriptions of these consciousness lead naturally to a set of core issues that must be dealt with if development scientists are to build a more adequate explanation. How does this pattern of development vary across the traditional categories of behavior, such as cognitions, emotion, and social behavior? And what methods are available for addressing these issues? So, in research literature, the different frameworks are being dealt. But majorly, if we look into the relationship between the cognitive development and emotional dynamics, the relationship between the brain changes and cognitive development, and the role of informal teaching and other modes of social interactions in cognitive development. And of course, we must highlight on the nature and effect of schooling and literacy. So, under new national education policy, all the policymakers realize these core issues of brain development, and that too also in the early year. And that's why FLN mission, the foundation's literacy and numeracy as a national mission has been launched by Ministry of Education. And there, how this numeracy and reading skills, because many a times we carried out, we at CBSE carried out multiple dipstick studies at different part of the country. And the major outcome, especially if I shared with you, the class 8 students, his reading ability, whether he can able to read right for at class 5th level, or for the class 5th student, whether they are able to read the textual materials of class 3rd level. So all these core issues we try to put into the table, and the dipsticks shows that there are majority of percentage who are not able to, maybe at class 9th or 10th, but not able to cater the requirement of class 8 level. And similarly, those percentage
again we took whether they are able to read or write of class 5th level. And again, the data shows something alarming for all of us. And if we correlate these things with national assessment survey carried out by NCERT, CBSE, and other bodies under Ministry of Education, I think our CBSE-led dipstick studies vis-a-vis next survey report, which are very much there in the web portal of NCERT and Ministry of Education, that correlates. So how to address these issues? That's why I think these premier health institutes like AIIMS and other medical institutes, and my humble request to the faculty members, how these development metrics and pattern can be developed in the different part of the country, because this is not a uniform or a standalone prescription will not fit the entire nation. So some way, our core objective should be, with respect to the social background, their emotional behaviors, their cognitive abilities, how we can correlate. We at CBSE try to come up with a small project, and in fact, we are requesting and to all of you, those who can contribute in this line will be happy to work together so that the learning dynamics of the children, if that pattern is known to the teacher, I think the so-called adaptive learning or peer-based learning strategy can be well discussed, well developed, and well executed. So children do not develop in stages, but many a times we argue on this a specific topic, because their behavior changes gradually, not abruptly. They developed at different rates, and in fact in different domain, rather showing synchronous changes across domain. And that too also, different children develop different way. So what would be the strategy for the teachers to look into this cognitive development? So there are, again, I'm referring certain literatures which I have came across, where the people start talking about the fuzzy criteria, or sometimes people start talking about how if conservations of amount of clay, certain studies, how children are learning in a different way, that has been experimented by many psychologists or behavioral scientists. So whether the conservations of the weight of the clay, or how effectively these predictions of sequence of that modeling, it always varies. And these stages often marks the major qualitative changes in the behavior. So the changes in the behavioral organizations, this is in addition to developing more of the ability they already have. And children also seen to develop new types of ability while they co-work or in a collaborative environment. And if an individual is interacting with other individual and doing some work together, and then initially that work is in silos, or maybe when they starts working, then that behavior of both individuals comes into existence, and they receive something from each other, and that is also part of the cognitive development. So that's why many teachers, in fact, in whether it is CBSE affiliated or in other school board, this collaborative model of classroom teachings are being well discussed, and many schools these days started changing their that presence model of education's delivery. I believe this is applicable all across the group, whether it is medical institutes or school. I think that collaborative or embedded mode of teaching learning process is very much essential at this stage, and that will definitely that the behavior stages wherever the children are lacking,
I think gradually those issues can be addressed. And over a period of time, if we correlate this cognitive development vis-a-vis this sports activity, and if we look into these WHO reports or World Bank reports and other development studies, so in every forum, some way they try to conclude that every day 60 minutes physical activity in any form can definitely changes the behavioral and emotional pattern of an individual child. And as a policy intervention, CBSE in 2018, we come up with a circular that every day 1 hour compulsory physical activity classes to be made in every schools. And that is ultimately addressing this behavioral, mental health, and peers learning, and all those issues, I think gradually can be addressed through this kind of mechanism. And over a period of time, I think there are a lot of understanding a child's behavioral pattern, how for a year age or year 6, how understanding how a doctor relates to a patient and how a mother relates to a father. So this understanding that developed gradually through social interactions, and social interactions one way, and social mobility issue, that also gives a new kind of pattern to the child. So I think large scale development organizations and reorganizations, the gradually we need to work together, and whether it is a middle class children or many structural theories, whatever that concrete operations constitute independent level, and and this kind of involvement of children of different age group sometimes gives definitely going to give excellent result. Now, one core issues which especially for the age group of 10 to 12, that is middle class children, uh, they developed a new ability to generalize across concrete instance and handle complexities of some tasks that requires hypothetical reasoning. And on the contrary, the brain development growth also suggests at this particular age, the development is not much as in the ages between 4 to 6 or 6 to 8. So naturally, in schools, many a times teachers may focus upon that certain percentage or majority of percentage of the student of age group 10 to 12 may be a slow learner. There may be argument. It can be. I don't have that kind of evidence, but those core issues can be correlate clinically by our professors from AIIMS. So, lastly, I want to focus upon this. If we look into World Economic Forum's reports, the future skills requirement and how students are supposed to work together. So they are also certain core issues are coming up, and especially again I am referring this World Bank report where they are talking about the future skills requirement towards one is cognitive skills, socio-emotional skills, technical skills, and digital skills. So all these 4 5 skills, how it can be embedded in the curriculum. So of course we are taking the sole spirit from our new education policy, and how these cognitive skills can be encompass the ability to understand the complex idea, and that too also in the early age. So different flagship programs we are trying to promote. One way, innovation ambassador program, and then for school we are coming up with school entrepreneurships and innovations council kind of strategy, so that within the curriculum, beyond the curriculum, how children can independently think, so their overall growth of brain development with can be depicted naturally
and ultimately all innovative idea towards patent development. And here, of course, I'll request Mr. Gandhi and others how you can help us so that uh, that school days behavior towards brain development and to the patent and entrepreneurial journey. So all those things we can work together. With this, let me once again congratulate all the faculty members of AIIMS for celebrating World's Brain Day, and of course, all our school leaders and teachers who are joining us virtually. This is a fantastic programs, and whole day there would be a lot of deliberations, and we can learn from each other. Also, I appeal that how we can work together with the school so that these behavioral issues can be tapped, researched, and then a separate way of prescribing certain pattern to the Indian community. Thank you once again. Thank you, Dr. Vishwajit Shah, for such a valuable inputs, which are very much required for the special need children, especially the scholastically weak children. Now, I would request all the delegates, dignitaries, to come towards the dais, towards the right corner, so that we can do the lamp lighting. I would request Dr. Guleria. I would request Dr. Subroto Sena. I would request Shri Jaishankar. I would request Dr. Bagga. I would request Professor Saroj ma'am to come to the dais and grace the occasion with lighting the lamp. Thanks for gracing the occasion with lighting the lamp. I would now request Dr. Randeep Guleria to come to the dais and please chair the session. I would request Dr. Subroto Sinha also please to come to the dais. I would request Sri Jaishankar sir. I would request Dr. Bagga to come and um, take a place here in the dais and lead the welcome address. दीप प्रज्वलन कर माँ शारदे का वर्णन करते हुए सभी की ओर से सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बाल चिकित्सा विभाग के हेड प्रोफेसर अरविंद बग्गा सर को कि सभी का अभिनंदन कर हम सभी का मार्गदर्शन करें और कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें. Thank you, Richa. Thank you, Shefali, for this opportunity. On behalf of the entire Department of Pediatrics, it's my privilege to welcome all of you to this meeting, those who are here physically as well as those who are present virtually. I'd like to thank the respected director, the dean, the managing director of IIFCL for being here, Dr. Tapan Gandhi from IIT Delhi, members of the faculty who are present here, Dr. Hamid, I think, is online from GOS London, Dr. Yadav from NCRT. Thank you, ma'am, for taking our time to be here.
other experts, from various organizations, both governmental as well as non-governmental. We have just had such an inspiring talk by Dr. Saha. So again, we welcome you all for being here. Parents and children who are perhaps mostly online, thank you very much, and we hope that the proceedings of this meeting are prove useful for our endeavor to promote brain health for all, which is the motto or the logo for this year's uh, World Brain Day. Like to thank Professor Guleria for his inspiration and leadership in helping us guide the institute and the department over the years. Professor Sinha, he's got enough accomplishments in neurosciences, and I think he's a very apt speaker for today. So thank you very much. Thank you, Jai Shankar ji, as well, for the constant support that the department has got through IIFCL, and you and your entire staff for being here, and all the colleagues, who are here from across the institute, across other departments and other organizations. As you can see, the program is really, has got multiple aspects to it. There would be perhaps 2 plenary lectures, and in addition, there are at least 3 panel discussions. Again, trying to emphasize how we reach out to children who are normal children, who are healthy children, but also to the ones who have some language delays, who have other problems as well, both through textbooks and other things, interacting with parents, but also as Shefali has been able to get across through various apps, and being able to recognize, for physicians to be able to recognize the early dysfunction and so on. So I think all these things are critically important for children. The brain development in child in a child really begins as early as in utero. So that issues in the first trimester, maternal nutrition, postnatal nutrition, genetics, socioeconomic things. So all these things are so many factors that affect the growth of a child's brain, and perhaps we should try to emphasize on each of these aspects. I hope that the deliberations today are useful, and thank you once again, Shefali, and the entire division of nephrology for leading of neurology. Sorry. Of neurology for leading this endeavor. They have been doing great work over the last so many years, and we are really proud of you, Shefali, Bisaru, Prashant. Thank you. Thank you, sir, for welcoming each and everyone with so much respect. Now, I would like to welcome Dr. Subroto Sinha, Dean Academic, is also Professor Head of Department of Biochemistry, AIIMS. Sir has served NBRC from 2010 to 2017, and during this tenure, he also served as Executive Director of RCB from 2015 to 2016. He has many awards and honors in his allocates. He is a fellow of many prestigious organizations and is recipient of many prestigious fellowships. To his allocates, he has many awards, orations, and plenary lectures. So let's join our hands together to welcome Dr. Subroto Sinha for his talk on importance of brain health in children. Sir. Good morning, everybody. Professor Randeep Guleria, Sri Jai Shankar, Professor Shefali Gulati, and Professor Arvind Bagga, all the dignitaries who are gracing this wonderful occasion on World Brain Day. Now, this is a topic whose importance nobody needs to say anything more about. And I was listening through part of the talk, and which was preceding this occasion. And I also fully agree that, there is this, of course, we all know that the brain is something that we know the least about. And the interplay between the environment and the biology is so complex that we are yet just scratching the surface. But yet, in the process of even scratching the surface, we have found many modes, and I'm sure you know better than me, of remediation, many quantitatively assessed ways by which the brain can be stimulated to do better and better and better.
So I understand that this, Center for Childhood Neurodevelopmental Disorders really has taken the lead in not only in doing more research and clinical work, but also in sort of an outreach program so that the fruits of the research can be made available to the larger community. And on this occasion, this perhaps this, you know, basically evidence-based models of remediation which are being sort of talked about today assume utmost importance. I think underlying all of this is this great mystery of brain plasticity. Now, brain plasticity is something which makes the brain as yet very vulnerable, and yet it's a wonderful tool for us to exploit and to work on to get new connections, uh, new learnings, and new development in the child's brain. I think the objectives of this are twofold. One is, of course, that you would be treating people who have very known and marked disorders which affect different brain functions, whether it be at the level of biology, for example, epilepsies, or whether it be at the level of intellectual disability and so on. At the other level is this whole gamut of, you know, basically you may call it subclinical or sort of with the brain achieving lesser potential than is possible. And in order to do this, I think even this outreach based, evidence based tools of firstly early detection and also of remediation, this is something that we really need to emphasize. So, we've had a number of, let me say, biologically validated methods by which the brain of a child can be made to achieve its full potential, regardless of what be, or not regardless, but with less regard to what be its innate sort of or self-evident potential. And in order to do this, there has been a lot of research and, including, uh, let's say, deep cognition testing, fMRI, EEG based methods, so that we can now, in a way, quantify and assess the performances of these remediation methods in a manner that is perhaps, you know, much more based on hardcore evidence than we earlier could do. And it is these methods and tools of early detection and of remediation which are being discussed. I will not say more except that the two aspects of detection and remediation really go hand in hand. And along with it, this whole concept of multiple intelligences, which you can sort of, in a way, awaken through this uh, brain, the plasticity of the brain. For example, in specific learning disorders, in autism, in various other disabilities related to cognition and social recognition. These become very, very important in training the brain of the child to really do the best possible under the best possible ever. And along with it, there is also perhaps a little lesson for us to learn for typically developing children. Perhaps you may think about that many of these tools which are applied to people with learning disorders, with social cognition disorders, with many other situations, can they be adapted to the typically developing child also to enhance their own potential? So this is something, of course, I mean, I know we have such a large number of people who need urgent help.
So this is one aspect, but the teaching community also, I'm sure, and I know they are aware of it, and many of these techniques and tools are now being sort of generalized into a larger population process. So with this, once more, welcome to this. I am so happy that this very interdisciplinary uh, approach between the clinicians, the scientists. Dr. Tapan Gandhi is from IIT. He's a very hardcore physicist and engineer, social scientists, educators, disability experts. We have all come together to solve this problem and to do better and better. Thank you very much. धन्यवाद प्रोफेसर सुब्रतो. Center of Excellence and Advanced Research in Childhood Neurodevelopmental Disorder, Child Neurology Division. हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं IIFCL. मैं IIFCL के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रिया जयशंकर सर को आमंत्रित करती हूँ. सर अपने विचार IIFCL का मस्तिष्क स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण हम सभी के साथ साझा करें. सर. Thank you very much, and very good morning to all of you. Dr. Guleria, Dr. Sinha, Dr. Baga, and Dr. Gulati. Gives me very great pleasure to be amongst all of you, and I congratulate AIIMS for this public lecture on the occasion of this World Brain Day, and facilitating these discussions and leading the discussions with the eminent brains in the country on this very, very important topic. I think it's a very, very important topic, and it's apt at this point of time, particularly in view of the environment, the complex environment issues, consequential nutritional issues, as well as the lifestyles. I think children are the future of tomorrow, and I think from that point of view, the Child Neurology Division of AIIMS, I am sure, is taking the right steps for bringing out the right discussion points, and this lecture will throw out many more approaches, and will lead to all the necessary ingredients that is necessary for ensuring good brain health, a state of which is and to bring the best and optimize the kind of abilities to optimize the abilities to, optimize the cognitive, psychological, and behavioral abilities to realize one's own potential in any given lifestyle situation. I think that's very, very apt and very, very important for the young population of the country today. IIFCL as such is infrastructure finance institution. We have been doing our bit to finance infrastructure. Health infrastructure seems to be the most important area today, where we have been able to foray into various areas in the field of health. Insofar as the CSR activities are concerned, as a responsible organization, we have been able to partner with AIIMS in this bid for this Center for Excellence. And I must congratulate Dr. Guleria and his team for the various activities that this Center of Excellence has already been doing. And in the process, I suppose the launch of this
the launch of this web application today would also be a feather in the cap. And this artificial intelligence based web application, I am told, would aid children with dyslexia, and has already, in the pilot stage, has already demonstrated its effectiveness. And I hope this will be used in a larger way to cover the various needy population, the young population, more effectively throughout the country in the coming days. So I suppose these are all very, very important steps. And as a financial institution and as an institution with greater social responsibility for developing infrastructure, particularly the health infrastructure, IIFCL would be more glad to foray its greater assistance, whatever is necessary in this regard, in partnership with the AIIMS, as well as how to Ministry of Health to further such initiatives and strengthen the ties further. And I'm sure the team in the AIIMS, under the leadership of Dr. Guleria, would definitely lead the way in all these endeavors. So I must congratulate Dr. Guleria and his teams once again, and thank you for inviting me. Thank you very much. Thank you, Shri Jaishankar sir, for such a valuable inputs. And every time you come, you really boost our brains to do more and more research, which we'll definitely do and bother you for more funding together for AIIMS and as well as our division. Now, next we have Dr. Shefali and Dr. Tapan, who had been involved in technology-based collaboration since a decade. Dr. Shefali is associated with AIIMS since her MBBS. She has more than 25 years of experience and has developed pediatric neurology in India as a specialty in academics, clinical care, patient empowerment, research advocacy, and other public health domain. She has received more than 25 national and international awards. She has envisioned, conceptualized, and is heading the Center of Excellence with core support from IIFCL. She holds prestigious posts in many of the scientific associations and advisory board. She has been instrumental in transforming care for children with neurodevelopmental disorder across India. Dr. Tapan, faculty of Department of Electrical Engineering, IIT Delhi. He has been recipient of many prestigious awards and has been many publications, including research article published in Nature Journal. Dr. Shefali and Dr. Tapan has many collaborative projects in area of virtual reality, artificial intelligence, and augmenting reality. I would now request Dr. Shefali and Dr. Tapan to lead the talk on the role of technology to promote brain function. Thanks, Kakule. Respected Director, Sir, Professor Guleria, Dean Dr. Subrata Sinha, Mr. Jaishankar, who has been supporting the Center of Excellence, and most importantly, our pillar of support and strength, Professor Baga, and all of the dignitaries and all the participants across online. We have been trying to develop technology, as very rightly said by Professor Subrata Sinha. It's not only for the special needs. There is educational technology helping the typically developing children also, which has come up in a very big way. And that I will be alluding to in my talk, which is there after this. And what we did was, can I have the slide? What we did was, we were trying to do for SLD patients. We have developed many screening and diagnostic tools. What is this? What are you doing? Yeah. So basically, dyslexia is a very common thing. What it is? Yeah, specific learning disability, based on DSM-5,
with one of the following of these conditions are present at least for 6 months, despite giving extra help to the child, giving stimulating environment to the child, and giving targeted instructions. Because sometimes you have poor environment. If the poor environment is not taken care of, you can't call it as SLD. So after that, if you have inaccurate or slow effortful word reading, difficulty in understanding the meaning of what is read, or difficulties with spelling, written expression, or calculations, or mathematical reasoning, all these can have problems. So most common problem is dyslexia, which has impairment in reading, word reading accuracy, there's a reading fluency rate, and reading comprehension. The lesser in frequency, the lesser are dysgraphia, in which there's an impairment in written expression, spelling accuracy, grammar and punctuation accuracy, and clarity of organization of written expression, and impairment in mathematics with calculations. So basically, SLD will be there because of poor stimulation for at least 6 months, and it can be all these areas. We were focusing because dyslexia is the most common, so we focused on the dyslexia part. And in that, see if you can see, this is our patients only who are making similar spelling mistakes, reading errors. They substitute some word, and they omit certain alphabets. Then they have problem in grammatical mistakes can be there, and they can be their problems in calculation. So all this can be there. And then these children not only have problem in reading, writing and all, they also have problem basically also in deficits in working memory, attention, that leads to slower information processing, word finding problems, and poor organization skills. So that is also there. So basically, we had developed this remedial intervention program for dyslexia in basically, and for English. And in that situation, we had covered the modules. There are 8 modules. We'll not go into details of that, but they were from simple to complex. It went on for all the things. Like for the phonemes, if you see, the S in snake is SN, but for sense it's CE. So it is confusing to a patient. So like that, there were 8 modules. And then we had this modules were developed and indigenously here. And then we had studied on 44 patients. And then we had done functional MRI, and Dr. Senthil has been always very helpful for all these fMRIs, SLD patients. In 25, we did fMRI, and then we showed that post-intervention, the fMRI of these dyslexic children were comparable to controls. So there was a definitive improvement which was there. And Dr. Badal, who is a colonel in the army now, and he had come, he did his DM, that was his DM dissertation, and he got and the importance is reflected by, he got the Best Young Investigator Award from International Child Neurology Association. So this was actually a very good research. And if you see the fMRI post minus pre, there were so much areas which showed much improvement, in addition to the scores which were there on the evaluation when we did on the GLAD scores, in which we were seeing actually on doing the exercises. Next. So we thought that we should use this, like these are different modules which are there, and they were made in hard copies. Parents were given hard copies. They were taught in tutorials here, and then they were given hard copies at home and followed up. So it was tedious. So we thought how to simplify it. Then because we had a collaboration with Dr. Tapan Gandhi, so we discussed with that why can't we make it AI based? All these things can be integrated, and as the child keeps answering something, obviously the AI will give you the higher task, a more difficult task. So see, if this child, the first paragraph is written by a child with dyslexia who says, I have dyslexia. Now after the intervention, next please. After the intervention, now the child is saying, hi, I had dyslexia. So things were clear, which were all muddled up for him before, were improved. And we also showed, again, fMRI with Dr. Senthil's support. We saw that a functional MRI resting state connectivity we had shown, and we saw that post-intervention there was an increased activation of the language networks, and the left inferior and superior frontal gyrus with the middle temporal and superior temporal gyrus. So basically, there was a definitive improvement. So we have made it into a web-based application. We actually wanted to make an app, but because the IIT Delhi was closed for lot of time, and we were also closed because of the COVID time, we made it to a web-based application and worked it out. Now we will be converting into an app. So I will, Ashirwad is an engineer who's employed in the Center of Excellence, working with Dr. Tapan Gandhi. Dr. Tapan Gandhi is not here with us right now because he's in Assam. He was trying to join online, but there was very poor connectivity. So, sir, I would request you to, the link. This is the web application address is readabled.com. Ashirwad,
So you have to register, the student has to register in that, and then you can get all the modules which keep coming, and with the, as the child does, it gets the higher severity level. Sayoni? So the second aspect of this was given to Sayoni for her thesis, and now we have put in for award right now. I hope she gets the award. Can you say? So this is a AI algorithm based wave application. So this the after logging with the specific credentials, the user will be logged into this first web page where there are 8 modules. Now this 8 modules are based in the order of increasing severity levels, particularly targeting levels, increasing difficulty levels, which are targeting the different phonological abilities of the child. So this one module has various multiple submodules, and under each submodule there are all throughout more than exposure to 1,000+ words. So this is the at the word list interface. So the first is the S. We are dealing with the phoneme in the first module. So this is the S sound will come, and after at this word list interface, the user has to first read all the words. Then he had to listen to all the words. Ashirwad, you can click one word, just. So this was based, this was, the voice was recognized and the Indian accent was used for this. So after the child speaks all these words, then he has to also read all these words, then he has to also speak into the device, and the device will recognize based on this wave speech API, and then the child will get a feedback whether he is being right or he is wrong. So the child has to complete all the modules which are in order of increasing difficulty, and the intervention to be completed for like 5 to 7 days a week for a definite period of time. And there are assessments in between. You want Yes. to add something, Ashirwad? Because Dr. Tappan is not. This Doctor. this application is actually it's a web-based application, and you can see it is developed using JavaScript frameworks. We have like encryption to prevent any leakage of user data, and this application is currently hosted at the cloud servers of IIT Delhi. And our main idea now, Dr. Badal is also joined online, and Dr. Vishal Sundi also, who gave inputs for this part of the studies, also joined online. And our plan is basically to make it into an app and then work on Hindi. Hindi is going to be very, very difficult. English was very simple, and then going to dysgraphia and dyscalculia. And actually when we had, we were starting to do, we thought that there are so many modules and all available, but there was nothing actually definitive available. We had spoken, so that's why it was started indigenously. So I think it is one stepping stone in the direction forward. I would now request Dr. Shifali and Dr. Guleria, Dr. Arvind Bagga sir, and Dr. Jay Shankar, Dr. Subruta Sinha to launch the pamphlets which we had been developing for the special needs children. Yeah. We had designed a special movement on for this World Brain Day. We would like to
release that also and have a memento as a memory with everyone. I would now request Dr. Shifali to give the memento to Dr. Subroto Sinha. I would request Dr. Shifali to give the memento to Dr. Shri P.R. Jaishankar. I would now request Dr. Shifali to give the memento to Dr. Arvind Bagga. चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीज़न पीडियाट्रिक्स और हम सभी गौरवान्वित हैं आज कि हमारे समक्ष एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया सर उपस्थित हैं। सर हमारे हर छोटे बड़े कदम पर हमारा संबल रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूं आपको सर, अपने शब्दों से इस अवसर पर हम सभी को प्रोत्साहित करें। Thank you. Good morning. Shri P.R. Jaishankar ji, Managing Director, IIFCL. Professor Sinha, Dean Academics and Dean Research. Professor Arvind Bagga, Head of the Department of Pediatrics. Dr. Yadav from NCRT. Dr. Shifali Gulati and her team from the Department of Child Neurology Division. My faculty colleagues, parents, teachers, healthcare professionals, caregivers, ladies and gentlemen who have joined physically and online. At the onset, let me really take this opportunity to congratulate the Department of Pediatrics and the Pediatric Child Neurology Division for this initiative on World Brain Day, which the motto being Brain Health for All, for organizing this public lecture, which I think is an academic feast actually, on brain health issues as far as school children are concerned. As has already been said, good brain health is something which is very, very important. And it basically involves recognizing your own abilities, optimizing your cognitive, emotional, psychological, and behavioral functions so as to be able to cope with life situation. And it's something which we all tend to do and consider a natural sort of development. But it is challenging, and there is always a mind-body connection, and you need to really be mentally and physically fit to be healthy as far as today's times are concerned. But I'd also like to say that this topic is more and more important today because there is a huge change in the landscape that we are seeing as far as children are concerned, as far as overall development is concerned, and that has happened in one generation. We have moved now more and more to a digital space. There is digitalization in everything. And if you look at children, you'll see that whether it's being their play, whether it be their learning, or even interaction with their friends, it's more on a digital space than what it was in the past in terms of physical interaction. This itself has effect as far as overall brain growth is concerned, and as has already been said, that we need to understand the interaction between the environment and the brain, and this has changed in one generation as to what we used to see. Children spend more time on the screen and on their phone than they would spend outside interacting or socially talking with their colleagues on a playing field or even going for walks or things like that. So when this has happened, there is a huge need for us to understand how do we look at brain development and growth in this new environment that we're seeing and the challenges that we're facing because of this. There are already studies which suggest that especially in the younger age group, increased screen time leads to cognitive impairment, and there are other issues that happen with children who spend a lot of time on the screen. So how do we address these, and how do we find solutions so that brain growth continues to be optimal? We've actually
moved a lot as far as outer space is concerned. Thanks to the James Webb telescope, we've seen pictures of galaxies which we thought were never possible. As we explore the outer space, I think it's also important for us to start exploring the inner space, and that inner space is our brain development. And I think that is what is very, very important, and we need to look at brain fitness. How can we say that our brain is optimally fit, and what are the actions that we need to take? And I think a lot of the discussions and topics today are going to address those issues in healthy children, but also in children with special needs. And both of these are very, very important. I think what we need to do is firstly invest much more in this area. Invest in terms of research. Like I said, with changing times, we need to look at new challenges and how do we look at these new areas with digitalization and other things happening as far as children are concerned. But also, how do we develop new learning strategies with the whole issue of changing technology coming into education in such a big way? How does that affect our learning strategies, both in young children, middle school children, and even in children who are, I would say, adults going to college? All of that needs to be looked at in a comprehensive manner. And I think there has to be a major sort of relook at curriculum and how do we really go about teaching the new generation with this dramatic shift in technology which has occurred. And therefore, there is a need to do research in this and see how we can translate that to better learning abilities, both in terms of normal healthy children, but also for children with special needs. And I'd like to take this opportunity to congratulate Dr. Shefali and her team, firstly for the launch of this web-based app. Congratulations to the IIT team also. This is something which is needed, and as was being said, this needs to be translated to not only Hindi but to many regional languages, because that would how this reach would really become much more. But I also understand that that itself is going to be a big challenge, and it's going to be one step at a time. Also, I'd like to take this opportunity to really congratulate the entire department for this activity. I think it's very, very important, not only from the point of view of increasing awareness among parents, teachers, health professionals, but also motivating the young generation to look at this area and do research in this area so that we can really develop new translation modules which will help in better learning abilities and better and healthy brain, and we will really be able to address the issue of ideal brain fitness. So congratulations, and I wish you all the best. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर शेफाली गुलाटी मैम से निवेदन करती हूँ कि धन्यवाद कर इस औपचारिक कार्यक्रम को परिणाम दें। Thank you. Meanwhile, can you please, as a token of respect, can you please hand over the planters, because now you need pollution. For pollution, I think it's better to have planters than to have bouquets. Yeah. So, Dr. Kakuli, Professor Gule. Dr. Subrata Swami. Jai Shankar sir. Dr. Bagga. Thank you. Now I thank the Media and Protocol Division for having given us this opportunity, and the SET facility, and also the CMET, and the IFCL for having provided her support for the Center of Excellence, and our collaborators, IIT, with whom we are working closely even before the, with Dr. Tapan, I've been working even before the Center of Excellence, and of course the director, without whose support and encouragement for last so many years, it was not possible, and our Dean Academics, Dean Research, and so many things, and my teacher, because he was my teacher when I joined in 88 batch. I'm 88 batch, so he taught me that time. So we're really grateful to him and for his encouragement and guidance all along. Always, his name is synonymous with everything related to brain. And of course, our HOD, who has the always encouraging us for everything and supporting. And he always gives a helping hand for everybody. And then all our department colleagues, my division colleagues, all the residents, all the administrative and research staff, all the patients and caregivers who provide us, who entrust the faith in us to help us do the research, and all the
all the participants here and all the dignitaries who have agreed to come online as well as in physical presence, and all of those who are participating. Really grateful to all of you. And we need, and probably we will try to help both typically developing and special needs. And it's very important, and we don't even know many things with pollution and all that stuff. Air pollution is, there is a definite risk for autism, sir, with air pollution in the third trimester of pregnancy. So there's so many things happening. Pesticides we have in all our food. So we have to be looking at the causality and prevention. So brain health will be very, very important because it's controlling everything. So thank you so much. And we hope we'll have a fruitful discussion today. Thank you. Thank you, sir. कोई लेके जाए. As we are going late, we'll start with the panel. I will do my talk in the end because everything has to go in line because Dr. Biju will be joining sharp at 12 from Gosh. स्लाइड्स चलाएं ये प्रेजेंटेशन कहाँ से ले आई है पैनल में? एक बार देख लो वो ऑनलाइन में ज्वाइन किया है. आकाश मैम का ये लोड कर देंगे क्या? नहीं नहीं, रूल ऑफ टेक्नोलॉजी. And I can handle myself also. Yes, That will be yes, better. yes. Just invite me or something. Understand.
The topic is poor scholastic performance in a typically developing child, red flags for parents and pediatricians. The panel is facilitated by Dr. Shifali Gulati. Dr. Vishwarup Chakravarti would be moderating this. I'll now invite the panelists. We have 6 panelists. I'll now invite the panelists to come to the dais and take their chairs. Srimati Anu Jain is the Joint Director, Department of School and Education, MHRD, Government of India. She would be joining online. Shri Nishit Verma is the Chief Consultant, Planning and ICT, MHRD, Government of India, would be joining online. Dr. Radhika Tandon is Professor, Department of Ophthalmology. She is the Chairperson of National Eye Bank Low Vision Services. She is awardee of many prestigious national and international awards. Dr. Rakesh um, is a professor, otorhinolaryngology and HNS AIIMS. I would like to invite sir to the dais and take the chair. Professor Saroj Yadav is former Dean Academic NCRT Adolescent Health and Wellness. Her specializations include economics of education, population education, adolescence education, health and physical education, program planning and monitoring education. Ma'am, please come to the dais and take your chair. Dr. Prashant Johri is Associate Professor in Department of Pediatrics, AIIMS. We'll just wait for a few seconds till ma'am is already there. इट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू कंसिडर कि न्यूरोटिपिकल बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. बेसिकली स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वी डू नॉट नो कि क्या क्या प्रॉब्लम है. उसमें क्या है कि जो अपेरेंटली सही दिख रहे हैं, किसी में उसमें SLD हो सकती है जिसके लिए हमने वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया, किसी में हाइपर एक्टिविटी हो सकती है. तो वो वाली चीज़ें क्या है, उसको कैसे देखना है, ये हमारा पहला पैनल का फोकस रहेगा. सेकंड पैनल का फोकस रहेगा कि स्पेशल नीड्स वाले जो ऑलरेडी हैं उनके लिए क्या स्पेसिफिक है. और थर्ड पैनल वाले में जो इश्यूज होते हैं, कई जो होते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और आजकल स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा क्वेरी है जो कि स्क्रीन टाइम अब तो ज़्यादा करना ही पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है. एंड वो जो बाद में जो मैंने मेरा एंड में वो मैं टॉक करूँगी बीच में, वो जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड वैसे टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशल नीड्स क्या है, वेरी ब्रीफली 15 मिनट्स बाद में. अभी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि 12 बजे डॉक्टर बीजू हमीद न्यूरो रिहेबिलिटेशन के हेड हैं ग्रेट ऑर्डमेंट स्ट्रीन हॉस्पिटल UCL में, तो वो लॉग इन करेंगे 12 बजे, जो ब्रेन इंजरीज़ के बारे में बताएंगे. इज़ वेरी मच फोकस ऑन वर्क इज़ ब्रेन इंजरीज़ एज अ वेरी प्राइमरी फोकस. तो मैं बोला कि एंड वो इंडियन ओरिजिन के हैं तो वो हमारी उनको पता है कि क्या होता है हमारी सोसाइटी में और सभ्यता में, तो ही अंडरस्टैंड्स. तो एंड वी विल गेट अ पिक्चर फ्रॉम देयर साइड क्योंकि वहाँ वो पिछले 30 साल से हैं. तो अभी वी स्टार्ट. डॉक्टर बिशरू, कैन यू प्लीज मॉडरेट दिस चैनल. एंड आई थिंक प्रोफेसर राधिका टंडन मैम विल जॉइन सब्सिक्वेंटली, तो उनके क्वेश्चन को बाईपास करके बाद में कर लेंगे. थैंक यू सो मच मैम. तो इस पैनल में हमारा फोकस ये रहेगा कि जो अदरवाइज जो बच्चे आते हैं स्कूल में, जिनको पेरेंट्स को भी खास डाउट नहीं होता है बहुत बार कि शायद बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स भी बहुत बार एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, जिनके प्रॉब्लम्स हमारे आंखों के सामने ऑब्वियस नहीं है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई देम एट द अर्लीस्ट, ताकि जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनको वो जल्दी मिल पाए और उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ. सो विल स्टार्ट विद द पैनल स्ट्रेट अवे. So it is in school children concerns and I'll do from here. I'll do it from here. So as you can see, the title is poor scholastic performance in a typically developing child. जो आम तौर पे हमें लगता है कि बच्चा तो ठीक है लेकिन क्यों नहीं कर रहा है पढ़ाई में अच्छा. So we would like to focus on their red flags, the warning signs which we should identify as parents as well as caregivers. So my first question is for Saroj Yadav ma'am. Ma'am, a mother complains of poor scholastic performance for a 9-year-old kid. बोलती है कि मेरा बच्चा जो है अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है. तो हम इस चीज़ को क्या समझे जब हम बोल रहे हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम उस चीज़ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं फॉर आवर टीचर्स, फॉर आवर पेरेंट्स,
और उनको कब एक बाल रोग विशेषज्ञ या एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए इस सिचुएशन में? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी एंड विशेषकर एम्स का डॉक्टर सफाली का कि शी गेव मी द अपॉर्चुनिटी एंड टू बी अमंग यू. आई थिंक सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि वी पेरेंट्स बिलीव ओनली इन 99% मार्क्स. और उसकी वजह से क्या है कि जो बच्चा इवन अच्छी लर्निंग भी कर रहा है 60% भी कर रहा है, हम उसको भी स्लो कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये भी एक स्लो लर्नर है. But you have seen most of the people who have gone ahead, they are not 99 only, even 60-70% marks are there. So first and foremost, we have to change the mindset of the parents that they should not, you can say, stigmatize the child that he or she is a slow learner. Rather, he or the parent should go along with the child, help the child. Even the new education policy says that 85% of the brain developed by the age the child reached to the age of 6. So it means that we have to start little bit early. But the thing is that children and teachers both have to consider children as a resource. That is very, very important. And definitely because there are learning outcomes are given in, you can say, at various classes from class 1 to class 12. So what are those learning outcomes? It is not rote memorization. It is the learning. And the teachers have to adapt different pedagogies. Actually, we used to say that children have been integrated into the normal school. There is a difference between integration and inclusion. Integration means that you have given the opportunity to the child to be in the school, but the child has to learn as per the system is giving that. But inclusive means that you as a teacher, as a parents have to find out the pedagogy, or you can say strategy, the way the child can learn. So that means that slow learner can also, there is actually the education policy says there's no slow learner, there's no, you can say, learning disabilities, everybody's, you can say, learning at their own pace. Even I also learn at my own pace, you also learn at your own pace. So definitely the parents have to recognize that the child will learn at his or her pace. The teacher has to realize that they will realize at their own pace. So they have to devise the methodology, whether the child is able to, you can say, listen well, whether the child is more active when the activities are organized, when the child is able to learn when some pictures are shown, when some charts are given. So the parents and teachers have to find out the ways, and there is lot of materials are available. Even in NCERT, there's a NROER, National Repository of Open Educational Resources. And on Diksha portal also, lot of information is being given. So as a parents, as a teacher, first and foremost, we have to change our mindset, and then we have to adopt, we have to find out those, you can say, resources for dealing with their children. And definitely once we are able to identify that, even irrespective of the fact that I as a parents or a teacher is not able to make the child to come up that stage, the learning outcomes, then definitely they must consult the doctor. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think it was very clear that how we should define the outcomes and then when actually we should seek a specialist's help. Moving on to the next question. This is for Dr. Prashant Johari. So, Dr. Prashant, there is a teacher who complains of excessive sleepiness and poor attention of a class 6 student in a parent-teacher meet. Now, following this, the mother noticed that the child had frequent awakening at night. तो ये बताएं कि उसको occasional bed wetting भी है. So how are you going to handle this situation as a doctor when you are referred this case? आप इसको कैसे handle करेंगे और किस तरह से counsel करेंगे और क्या modalities बताएंगे इलाज के लिए parent को? So this actually brings us to a very important topic, which is sleep. So you don't have to be a medical graduate to know that sleep is very important for our overall well-being of us. So coming to children, if you have a chronic disrupted sleep behavior, then it will actually eventually impact your cognitive development, your behavior, your social adaptive skills. So all these problems are there. Now, what we have seen through various studies in various communities, that almost a third of patients, children, the school-going children, will have some or the other form of sleep problem.
and majority of them, they don't come for medical advice upfront. The problems stay there because the parents, the primary caregivers are not aware of such issues. So it is very important to understand that sleep is significant, plays a significant impact on our growth, on the brain health, and there are issues which are more these days because of the change in patterns, the lifestyle changes that has happened overall. So this is very relevant. Now, coming with this background, coming to this specific child that we have now, this child is a class 6 student. Now, the class 6 student would mean that possibly the age would be somewhere around 10 or 11-year-old. Now, he has got frequent awakenings at night. That means the sleep is disrupted. So, what does that mean? Not only the kids, but the family sleep is also getting disrupted. And then there are bedwetting issues, so which is definitely for a 10-year-old, enuresis of any kind would be abnormal. So what I am seeing is that I have a child with some sleep abnormalities with enuresis happening. So this definitely suggests that there is an underlying sleep problem which has to be appropriately addressed. So the parent in such settings, if they encounter such a problem, they should ideally make a sleep diary kind of a thing, note down whether these problems are there frequently happening, and at least for a week or two they should do that. And then if they see yes, it is persistently there, they should seek a medical advice. Now when these kids come to us, so now it is not a single diagnosis that you encounter a physician and will give you that this is a some sleep problem. So as per the recent guidelines, there are 7 subgroups of disorders which can actually be there in such children. It can be some sort of a insomnia, parasomnias, which can be confusional arousals, some sort of a nightmares happening. There are other sleep-related breathing disorders. There are some sleep-related movement disorders. So there are almost 7 categories, and under them there are different disorders. So it is altogether a big issue that has to be catered. So there is no one diagnosis, but all these things have to be then evaluated by the physician who is looking in. So sometimes what we do is that we often ask for some self-reported questionnaires. So these questionnaires very simple, where the parents, the primary caregivers, the teachers, counselors, they can run them and they can easily get to a possible diagnosis of a sleep problem. And in fact, we ourselves have developed one such sleep questionnaire, which is a childhood and adolescent sleep evaluation questionnaire at our institute under Dr. Shifali's ma'am's supervision. Dr. Mishruf himself actually developed that. So this is for 2 to 18-year-old children, where this can be applied by the primary caregivers and they can come to a possible problem. So if we identify these, then we go ahead with formal evaluation. Some of these kids would just require psychological or behavioral counseling. Some of them may require some pharmacotherapy. Sometimes they might even require some surgical intervention by the ENT specialist if there is obstructive sleep apnea. So there are all a gamut of disorders that have to be considered. So through this question, I just want to highlight that this is very important for all of us to identify if we have our children are encountering some sleep related issues, then we should be aware that these may be significant and we should seek medical advice in such a scenario. Thank you, Dr. Prashant, for summarizing everything, in a very concise way. Just to add that there is also a concept of sleep hygiene, that we should tell them कि normally कैसे सोना चाहिए, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, नींद में सराउंडिंग कैसे होना चाहिए, गुड स्लीप प्रैक्टिसेस क्या है. तो हम ये सब चीज़ें जैसे हम हर तरीके का एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल में, सो दिस कैन बी ऑल्सो एन एस्पेक्ट वेयर वी जस्ट टेल देम अबाउट ऑल द हेल्दी स्लीप प्रैक्टिसेस एंड दे कैन फॉलो इट एट स्कूल. ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रशांत. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is for Professor Radhika Tandon, ma'am. So we'll skip this question. We'll take it when she is here. Okay. Again, the question is for you, Dr. Prashant. So a 5-year-old child is being very hyperactive as per mother. So this is a very common word, it is used by the mother, it is used by the teachers, that the child is very hyperactive. So what exactly you feel should be told to them, that when should we say it is hyperactivity, और parents को medical consultation कब लेना चाहिए? और कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, एक तो हाइपर एक्टिविटी है, दूसरे टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ये सारे चीज़ों को देखो तो दीज एक्चुअली आर सरोगेट्स फॉर इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन. तो
तो इनको अगर इम्प्रूव करेंगे तो ब्रेन फंक्शन, हाँ जी मैम। There's a comment from YouTube think volume low है, तो I think we should use the mic closely. हाँ जी ठीक है मैम, श्योर। हाँ Okay. तो डॉक्टर प्रशांत प्लीज। Okay, so again, this is again a very relevant question. So believe me that this hyperactivity is a very subjective thing, and all a good number of, if you encounter parents, a good number of them would say that some point of time their kid was hyperactive. So this is a very commonly used term, which doesn't mean that there is a problem with the kid always. So truly speaking, hyperactivity is what, that the child has increased movements, there is impulsive actions, there is easy distractibility, and there is a short attention span. So if these things are there, and these are causing some limitation in the learning of the child, these children are unable to focus in their school, the school work is not getting finished, they are getting bullied, they are getting punished because the teacher many a times considers them as naughty. So if it is affecting their peer relationship, if this affecting their social interactions, their family bonding, then it is the time that this parent needs to seek medical advice whether what they perceive as hyperactivity is actually there, which is a marker of some underlying neurobehavioral disorder, or there are certain other precipitating factors which are to be identified so that we can address and improve the quality of life here. So the common disease that has this hyperactivity, a pathological hyperactivity, is ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Generally, we label these kids once they are of beyond 4, 5, 6 years of age, and these problems persist for more than 6 months. And this has to be there in at least two settings. It's not that in a particular setup the child appears to be hyperactive. Say the child is hyperactive during the PE classes in the school. No, we need to see that it persists at least in two different settings, maybe at home and school, both the places, and it is hampering the social development of the child. If that is there, then we label the child as ADHD by running through some specific criteria that we have, and then the management would start accordingly. Now, coming to this different question, which is temper tantrum. So this is again one form of hyperactivity or aggression, commonly seen in a slightly younger kids, but this would stay all throughout childhood and sometimes in adolescence also. So this is actually in a younger kid is a way by which the child might be trying to seek your attention, might be trying to push her own desires or requirements on you. So that is one thing that has to be actually taken up by the parent in a appropriate manner so that they can diffuse that acute issues. Now, what should not be done is more clear than what should be done here. So as a parent, my recommendation or advice would be at least don't do these two things. First, don't start yelling or spanking or beating them, because this will inculcate this type of a response coming back from them. They would try to match your voice. So this is not a behavior which a parent would want. So you don't do this thing. And the other thing is also, don't give them a bribe or a reward. Don't give an ice cream so that they can stop that temper tantrum, because this would be rewarding them, actually training them ki okay, this is an acceptable behavior. So these two things are not to be done once you encounter such issue. So what should be done is that you need to actually stay calm, just listen to the child, make him understand that it is okay to be angry, but it is not okay to do these activities which he is doing at that. If he is throwing something, that should be completely said no. You need to be firm on that, but it doesn't mean that you will start yelling at them. So you can create a distraction, because kids, they don't have a very prolonged attention span. If you are able to distract them into certain other things, that actually gives you a more advantage, and gradually the child would start learning that this is not a way by which they would get their things through.
So if you want to agree to a child's demand, agree to it on the first go itself. Don't make them feel that if they cry, they throw tantrums, they melt down, and then you are going to agree. So this becomes a teaching for them that okay, if I can get, by crying I can get the remote for the television or maybe some other thing. So these are subtle ways by which maybe you need to go through it, and then you address if it is becoming excessive or it is too disruptive, then maybe at some times you might have to take a medical advice as well. Okay, thank you, Dr. Prashant. Yes, this is for Professor Rakesh Kumar sir. So, sir, this is a child who has been performing poor at school. Parents give a history of delayed language development. His school teachers reports that he wants things to be repeated twice or thrice, and he doesn't pronounce a few words properly. So, how do we proceed? सबसे ज़रूरी काम तो हो गया। सबसे पहले प्रॉब्लम को पता लगाना, जो इस केस में पता लगा ली गई। इससे पहले हम इस पे आएँ, सबसे ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हम पकड़ पाएँ, क्योंकि इलाज है और अगर हम इसे जितनी जल्दी पकड़ पाएँ उतना इसका जो असर है ब्रेन पे और डेवलपमेंट पे वो कम से कम होगा, जो एडवर्स इफ़ेक्ट है। तो जो 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले पेरेंट्स डिपेंड करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर। तो कई बार ये होता है कि वो बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं जी इसके ना पापा ने भी लेट बोला था तो ये भी लेट बोलेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल। बट जैसे सुबह भी बात हो रही थी, हमारा जो ब्रेन है, जो लैंग्वेज है, स्पीच है, वो करीब मेजर डेवलपमेंट 3 साल तक हो जाता है। जो बच्चा खुच्चा जो है वो करीब 4-5 साल तक हो जाता है। तो बाय द टाइम बच्चा स्कूल आया तो हमने जो गोल्डन पीरियड था वो हमने मिस कर दिया। तो हमारा एम होना चाहिए कि विद इन 1 ईयर या विद इन 1 मंथ ऑफ बर्थ हम उसको डिटेक्ट कर लें। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है हॉस्पिटल्स में, हमारे यहाँ पे चल रहा है, आप लोग कर रहे हैं ENT के साथ, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट पेरेंट्स को अवेयर होना है कि जब भी बच्चे का जन्म हो तो उसको एक बार सुनाई की जांच जरूर करवा लें कि बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। और अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो आसपास पता करें और एक बार ज़रूर दिखा लें, चाहे वो बच्चे के डॉक्टरों को दिखाएं या नाक कान गले वाले को दिखाएं अगर ज़रूरत पड़े। अपने आप भी चेक कर सकते हैं कि उसके आसपास अगर जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो कोई भी आवाज़ होगी तो उस तरफ बच्चा आईज़ फिक्स करेगा या उस तरफ बच्चा हेड टर्न करेगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोगों को केयरफुल रहना है कि कुछ गड़बड़ है। सेम वे जो बच्चा है करीब 6 महीने से 1 साल तक कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, मामा दादा बाबा, और 1 साल के बाद 1.25 साल के बाद काफ़ी तेज़ी से उसके वर्ड बढ़ जाते हैं, वो कुछ सेंटेंस बोलने लगेगा। बट उसके लिए वेट नहीं करना है क्योंकि लेट हो रहे हैं हम। एक बार स्कूल आ गया तो स्कूल में काफ़ी सारी चीज़ें पेरेंट्स को नहीं पता चलती या घर पे नहीं पता चल रहा है या और कोई नहीं पता कर पा रहा है। कई बार स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पिक कर लेते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्कूल जो हेल्थ चेकअप है उसमें ईयरली चेकअप होता ही है, स्कूल में एडमिशन पे चेकअप होता है, और जो बच्चे को पता लगता है दिक्कत है तो उसको फिर बीच बीच में ज़्यादा बार चेकअप कराते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर हम आएँ कि अगर उसका बच्चे का लेट डेवलपमेंट हो रहा है लैंग्वेज का, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि बच्चा सुन कैसे रहा है, ठीक सुनाई है कि नहीं है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि हम सुनाई की जांच करते हैं। उसमें एक ईयरफोन लगा देते हैं, उसमें अलग अलग तरह के हम साउंड देते हैं, पहले धीरे फिर तेज़ फिर और तेज़, और बच्चे को बोलते हैं जैसे उसको आवाज़ सुनाई दे वो उंगली उठाए, या एक कोई खिलौना दे देंगे, कोई खिलौना को उठा के एक ट्रे से दूसरी ट्रे में रखना है। तो उससे हम चेक कर सकते हैं बच्चा कैसा सुन रहा है। और अगर बच्चे का अटेंशन स्पैन नहीं है या बहुत छोटा है तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री बोलते हैं। उसमें एक आवाज़ दी जाती है और उसके आवाज़ से रेस्पॉन्स में जो रिफ्लेक्स हैं वो हम देख लेते हैं, टिम्पैनोमेट्री जिसको बोलते हैं। और अगर उससे भी दिक्कत है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक टेस्ट होता है ABR। ABR होता है कि हम साउंड देते हैं कान में और उसके रेस्पॉन्स में जो सिग्नल ब्रेन से आते हैं वो हमारा जो सुनने का भीतरी कान का भाग है जिसको कॉकलिया बोलते हैं, शंख की तरह का, वहाँ से आता है। फिर
जो सुनने की नस है कॉक्लियर नर्व वहाँ से आता है और फिर ब्रेन के सिग्नल से आता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं। पहली बात, अगर नहीं सुन रहा तो दिक्कत कहाँ पर है, कि ब्रेन में है या नस में है या कान के सुनने वाले शंख वाले अंग में है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम पता कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम पता कर लें टाइम से तो उसका इलाज संभव है। और इलाज ऐसा नहीं है हम उसमें ऑपरेशन करेंगे या फिर हियरिंग एड लगा देंगे स्ट्रेट अवे। कई बार क्या होता है, कान के अंदर पानी है, थोड़ा सा पानी है, तो उससे भी सुनाई कम हो सकती है, तो दवाइयों से भी इलाज हो सकता है। तो करीब 80% बच्चों का इलाज हो सकता है दवाइयों से या उस वक्त जो मेडिकल एडवाइस है उससे। और जो बचे वाले हैं उसमें से 50% ट्रीटेबल हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। या तो ऑपरेशन होगा या उसमें एक डिवाइस लगा सकते हैं, इसमें हियरिंग एड हो सकता है, या ऑपरेशन करके कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है। तो हम काफ़ी सारे बच्चों की मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हियरिंग जो प्रॉब्लम है उसको पता करना, वो सबसे ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी, बहुत जो सर ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों में भी ये होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ, कि माँ बाप भी देर से बोले थे तो ये बच्चा भी देर से बोलेगा, माँ बाप भी शाई थे तो ये भी शाई है इसलिए मिलता नहीं है। तो मतलब जब भी कुछ आता है ना, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। देर इज़ नो हार्म इन गोइंग टू अ डॉक्टर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा है, अगर प्रॉब्लम है तो हम नज़रअंदाज करके उसको बढ़ने क्यों दे रहे हैं। बिकॉज ये नॉर्मली टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में भी सुनवाई की प्रॉब्लम हो सकती है, और इनमें भी हो सकती है ना, जो ऑटिज्म वगैरह वाले में डिले डायग्नोसिस के कारण यही होते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगला क्वेश्चन है मिस्टर निशित वर्मा जी के लिए। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेरेंट्स का, केयर गिवर्स का, टीचर्स का। सब जानना चाहते हैं कि करंटली लर्निंग इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली टू प्रमोट ब्रेन हेल्थ। Hearing since from quite some time, and wonderful presentations and sessions taken by few of the experts and the panelists. So as far as the provisions for for provisions available to improve the learning of school children in the present day scenario is concerned, and the plans for the government, I'll stick myself to inclusive education for children with special needs. And under there is a program I'm sure you all must be knowing is. Sir, can you switch on the video? Sorry, if then everybody can see also, if possible. अगर net का connectivity ठीक है, but now you're visible on the screen. ये बोलो, slides हटा दिया. Hello. Sir, slides हटा दिया है. You're visible. मतलब your icon is visible on the screen. तो अगर आप video on कर सकते हैं, नहीं, वीडियो से फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। वीडियो अगर मैं ऑन कर दूंगा तो वो फिर वो आवाज नहीं सुन पाएंगे। देयर इज सम प्रॉब्लम इन Sir, continue. Sorry, I interrupted. Okay. So I'm Nishit Verma, by the way, and from Ministry of Education, and I look after the inclusive education program on behalf of Ministry of Education under Samagra Shiksha scheme. So there is a very dedicated component under Samagra Shiksha scheme called inclusive education, which was earlier under Sarva Shiksha Abhiyan also and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan also. This component existed, and now under Samagra Shiksha also there is a provision where we provide the financial assistance to all the states and UTs to take care of the scholastic and post-scholastic needs of the children from children with special needs from pre-primary to senior secondary level, for which there is a norm of rupees 3,500, which we people provide to us, conducting various activities to be done at the state and the UT level under inclusive education program. So this includes many activities for all the 21 categories of disability as mentioned in the RPWD, Rights for Person with Disabilities Act 2016.
and it addresses areas like distribution of aids and appliances, developing of instructional material, teaching learning materials, providing escort and the allowances facility like reader allowances, scriber allowances, and transportation allowances, and so on and so forth. We also work towards to ensure that there is a social inclusion of children with special need in with the regular children in the schools. We also promote social activities to be done at the school level, which includes like conducting of the sports activities, conducting of the exposure visits, along with the children with special needs and the normal children studying in the school. We also provide we highly support a child with special needs with providing them the assistive devices, aids, and equipment which will help in their learning enhancement in the classroom situation. Apart from that, few major activities what we do to ensure that children with special needs are addressed properly in the inclusive setup in any of the schools. We conduct a regular in-service training program of a special educator, and we also do orientation and sensitization workshops which happens on yearly basis in all the states and UTs for the various stakeholders who are there in the who are working for CWSN. This includes from a district level education officer, and it goes till the level of a peer group or the parents. So peer groups, parents, caregivers, education officers, block level education officers, principals of the school, the teachers, the block level education officers, district education officers. All these stakeholders are provided orientation and sensitization program, which helps us to ensure the more and more involvement of CWSN or the child with special need in the classroom situation, and also ensure that their performance is being addressed thoroughly and properly by the school. Apart from that, there is also a provision of special educators which we people provide as a resource support to for children with special needs in the schools. These special educators work along with the general teachers and provide and impart all the individualized education plan for the children with special needs, whosoever require it. Specifically, the children who are suffering from autism, the children who are suffering from intellectual impairment, the children who have got cerebral palsy, and the children who have got any sort of other specific disability which require a individualized special attention. Under inclusive education program of ours, there is also a provision with us wherein to ensure that individualized attention is given to a child not only in the schools but separately also. We have got a resource facility available with us, wherein there is a resource center developed at every block, and the funding is being provided to make them to ensure that they are equipped with all the aids and appliances and the scholastic materials and activities whichever is required by a child with special need, and which is attended by a child on depending upon his severity of disability, and individualized attention is provided at those centers also. Uh, uh, how, howsoever, since from the time this COVID was started in last 2 years, so lots of attention was also given on providing an online solution. So we have developed online digital content for children with special needs, which has been disseminated to all the states and UTs. And we have also ensured that maximum assistive technologies and devices may be used by a child with disability to ensure that his learning outcomes, his learning enhancement is takes place, and he may be able to address the academic performance in the similar or the same way the
child with the normal child is addressing in the classroom. Apart from that, the children who are with severe and profound level of disability, who somehow cannot attend a regular school because of their physical challenges or any other challenges, we provide them home-based education services also. So these parents and the special educator, they work hand in glove to ensure that a child is provided all the individualized attention, whether it is scholastic or co-scholastic, at their homes, at their places, wherever they are staying, and their activities are being done with the support of a physiotherapist or a speech therapist or a special educator, or parents are also being trained by the special educators. I will not use the word trained, maybe sensitized by the support of a special educator. Their services are being taken care at their native places only. So this is what we people do under inclusive education, and we are also working on ensuring that the girls with special needs are given due enrollments, and they should also get more and more enrolled in the school. So there is a provision of a stipend which we provide to all the girls with special needs who are enrolled in the government and government aided schools in the country, and that stipend is of rupees 2,000, which we people give them annually, and this is to encourage their enrollment and retention in the schools. And we have observed that eventually, in a period of time, number of girls and their enrollment has increased in girls with special needs, of course, has increased in the schools, and that weightage is also being considered. Capacity building of a special educator keeps on happening. There is a dedicated module of ours which is called as Nishtha, which is a national initiative for the holistic development of a teacher and a principal of the school heads. And this particular training program is provided to all the teachers and the principals. And earlier it was done in an offline mode. Now it is being done in an online and offline mode both. During the time of COVID, it was done in the online mode. And this has a dedicated component of inclusive education also, which provides us the opportunity to sensitize the general teachers also on disability aspects, so that they can also, apart from the trained professionals like special educators, they can also work with the children with special needs who have got a minor disabilities or not the major ones. We are dedicatedly started, and we have been working in this sector also, which is specific learning disability. We are ensuring that maximum children are in the schools are identified and with specific learning disability, because specific learning disability is such a condition which may or may not be very visible, and specific attention is being provided. Now we have started it, and since from I think couple of years, and dedicatedly we are coming up with a framework and designing for it, and soon we will be able to identify specific learning disability more and more in the blocks or at the cluster level on this, and we will ensure that maximum children are enrolled. In the children who are enrolled in the schools, if they have got a specific learning disability, they will also be addressed by us eventually. That is it from our side. If any questions comes, then I'll be very happy to answer it. Thank you. Thank you very much, sir. I I think think this this information must be very helpful to all the attendees. So anything you want to add, or should we proceed to the next question? Okay, thank you, sir. This question is for Srimati Anu Jain ji. The question is, certain problems in her connectivity. Okay, okay, okay. okay. So So sir, sir, वो आप ही Can provide the have you please because I had requested her last night, so she said you maybe आप कर दीजिए please. आप ही please कर दीजिए because this is a very important question which we added last time.
The question is that post-COVID era, has the education system changed? So there was a raise in the use of audiovisual aids in teaching. So can this become mainstream in future? Working on it. But the point is that the post-COVID, the COVID time, of course, the education system changed. We started working on more and more online mode of learning and education system. But then we also have to see what are the options available with us, because we used all sorts of online resources to reach to children, including children with special needs. So there was a, trying to reach to children through mobile, through laptops, through various other facilities. Of course, that has become that is now becoming an integral part of the training also, because of our teaching also, because it has been observed that online mode has helped us a lot during time of the COVID. However, the audio-visual aid of methodology of teaching, what we people have raised, that is going to be, that we are working on it, and how exactly it will take place in the coming future, that we will be able to tell you after some time. So we are in the process of working on it, that what exactly and till what level we will be able to address these audio-visual technologies to ensure a teaching of a child, and how we will raise this and how this will be visible in the coming future to us. So right now, yes, of course, we are working on it dedicatedly, and how exactly it will come up, uh, that we'll be able to tell you after some time, not at this point of time. Thank you. Thank you so much, sir. Now that we have Professor Radhika Tandon ma'am with us, so we'll go to the question that was for ma'am. So we have a child who has complete vision loss on both. I think. So there is a 10-year-old boy who has been brought with complaints of recent onset scholastic decline. So he has been getting these recent episodes of headache with excessive tearing, and the parents also notice that he is sitting too close to the TV while watching. So how should we proceed this kind of a situation? Thank you and good morning, everyone. Firstly, many congratulations to the team for having arranged this very wonderful interactive session on such a important day. Now, coming to this query, now this is a very important aspect, that you are having a child who was perfectly all right in general performance and activities, and then all of a sudden, or over a period of time, people are noticing, or the parents have noticed, that the child is uncomfortable with the visual task, or trying to take the object very close to the eye, or going too close to the TV. So this is an indication of the child developing a refractive error, particularly myopia. In simple terms, myopia is called short-sightedness, where the combination of factors in the eye make the refractive focusing point of the eye change. So the images which should be focused on the retina are not getting focused on the retina, they're getting focused in front. So therefore, the child, if the holds the object very closely, the child can see clearly. So the immediate thing one needs to do is go for an eye checkup, and it's better to show to an ophthalmologist. Of course, optometrists are very well trained and very well proficient in doing the refraction. But the reason you need to take the child to an ophthalmologist at the for the first time that you notice this, is because there may be other causes for the myopia. It's just natural that if there's some other cause for poor vision, then also one one will have a tendency to take the object very close to the eye. So अगर ऐसा होता है कि पहले किसी बच्चे को normal vision था, normal development था, और अभी पेरेंट्स या टीचर्स नोटिस करते हैं कि क्लास में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सही नहीं दिखता है, या स्पेशली जब बच्चा क्लास के पीछे बैठा हो, या घर में टीवी के पास बहुत ऑटोमेटिकली जाने लगे, तो ये संभावना है कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है, मायोपिया बोलते हैं, और कोई और प्रकार के भी रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं जैसे अस्टिग्मेटिज्म. सो सिंपल टर्म्स में ये है कि इस बच्चे की विजन कम है या बदल गई है और डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो इनकी नज़र चेक होनी चाहिए, आँख का भी चेकअप होना चाहिए. ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई और प्रॉब्लम भी हो जो मिस हो जाए. तो फिर आई चेकअप के टाइम फिर चश्मे का नंबर मिल जाएगा, चश्मा पहनाएंगे और चश्मे के साथ इसको सही दिखेगा.
अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जब चश्मा आता है काफ़ी पेरेंट्स बड़े अपसेट हो जाते हैं. लॉट ऑफ पीपल फील दैट ओ दिस इज स्पेक्टिकल्स एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दिस myth or sort of bias about spectacles. So that is something that you have to realize, that spectacles is very much a part of the growth and development. Many people have the need to wear spectacles. So एक तो उससे upset नहीं होना है. और कुछ लोगों के मन में ये होता है अगर चश्मा avoid करें या उसको नहीं पहनाए तो हो सकता है हम ये ठीक हो जाए या कुछ ड्रॉप से ठीक हो जाए या कुछ एक्सरसाइजेज से ठीक हो जाए. तो ये भी एक गलत संभावना है, गलत कॉन्सेप्ट है. तो चश्मा बच्चे को पहनाना चाहिए और जो चश्मा है वो भी इम्पॉर्टेंट है. कोशिश करनी चाहिए कि दैट इट इज़ अ प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक स्पेक्टिकल, बिकॉज इफ़ इट इज़ ग्लास एंड द चाइल्ड हैज़ एन इंजरी, गिर जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो पीस ऑफ ग्लास शुड नॉट गो इनसाइड द आई. सो अ प्लास्टिक फ्रेम, plastic lenses, and then you have to go back for follow-up, because sometimes with the first number itself patient may not be very comfortable and it may have to be corrected, and also over time ये number बदल भी सकता है. दूसरा है कि आजकल मायोपिया के कंट्रोल के लिए भी ट्रीटमेंट्स है. Because some people have a very high number, -6, -7 तक पहुंच सकता है, उससे ज़्यादा भी. So now there's also a new concept of atropine drops. So that is why I want to emphasize कि अगर ऐसा हो तो it is not good to go to just an optometrist. You should see an eye specialist, an ophthalmologist, and also discuss this issue about whether any drops can help to contain the prescription. Thank you so much, ma'am. So, now moving on to the next question. This is again for Saroj Yadav, ma'am. So, ma'am, there is an adolescent girl जिसको अभी कुछ दिनों से फिर से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत शुरू हुआ है. सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ को सोचना चाहिए? मतलब जैसे प्यूबर्टी शुरू होता है तो एडोलेसेंट का मेंटल स्टेट पे उसका असर होता है. एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एडोलेसेंट को? एंड मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलग से एडोलेसेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए? ये सारी इश्यूज़ मैम. जी, ये एक आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस पर एनसीईआरटी भी काम कर रही है कि सबसे पहले तो हम पॉपुलेशन एजुकेशन में काम करते थे, फिर देन 1994 का जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो फिर एडोलेसेंस इश्यूज़ आए, क्योंकि उसमें कहा गया कि एडोलेसेंट को कोई ध्यान नहीं देता. बच्चों के डॉक्टर हैं, बड़ों के डॉक्टर हैं, पर एडोलेसेंट के कोई डॉक्टर नहीं है. तो उनके वो सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल ग्रोइंग अप पर है और उनके कोई इश्यूज़ नहीं है. लेकिन प्यूबर्टी के दौरान डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे उनके मिथ्स भी हैं उससे रिलेटेड, और उससे क्या होता है कि उनकी जो पढ़ाई की तरफ ध्यान है वो नहीं जाता है. तो इसके लिए एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है जो आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. और मैं इसके बाद थोड़ा एक प्रेजेंटेशन इसी पर ही है मेरा, लेकिन उसमें यही है कि फिज़िकल डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं. मेंस्ट्रुएशन, नॉक्टर्नल एमिशन, जो कि बहुत लड़कियों और लड़कों दोनों को बहुत प्रभावित करता है, और बहुत सारे उससे रिलेटेड जुड़े हुए मिथ्स हैं. इवन हाइट एंड वेट से रिलेटेड जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये मेरे से लंबा क्यों है, ये मेरे से छोटा क्यों है, मेरे में ज़्यादा परिवर्तन क्यों आए, उसमें क्यों नहीं आए. इमोशनल डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे जैसे कि पहले भी एक इशू में था कि बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं. तो ये सारे इमोशनल डेवलपमेंट जो बच्चे समझ नहीं पाते, विशेषकर जो 10 to 19 ईयर्स को जो हम एडोलेसेंस एज कहते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस आती हैं. और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को तो आज तक हमने एडोलेसेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, सो मेंटल एबिलिटीज़ भी अपने आप डेवलप हो रही हैं. लेकिन आप देखेंगे सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, सेल्फ हार्म बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, रोड रेज बहुत बढ़ रहा है, बुलिंग बहुत बढ़ रहा है, अब्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं. तो ये सारे एक ऐसे मुद्दे हैं कि वो अभी तक स्कूल एजुकेशन में नहीं ज़्यादा डिस्कस हो रहे थे. तो इसलिए आयुष्मान भारत में 11 कुछ थीम्स हैं जिन पर बात की जाती है, विशेषकर फोकसिंग ऑन एडोलेसेंस. बल्कि हम ये कहते हैं कि आप बच्चों को शुरू से ही बताइए व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच, व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उनको ये जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, जो डे ड्रीमिंग है, या जो उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनको के बारे में अगर हम उनको एम्पावर कर देंगे तो डेफिनेटली उनकी जो स्कॉलिस्टिक एरिया, जो पढ़ाई लिखाई में उनका मन है, वो और अधिक लगेगा. क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ना वो किसी से डिस्कस कर सकते हैं,
ना वो किसी से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स भी उनको मदद नहीं करते, टीचर्स भी मदद नहीं करते. Even maybe over the period of time, reproductive system which is a part of biology or science textbooks, बहुत सारे टीचर्स उसको नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन 100% स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता. इसलिए सरकार ने ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम किया है और डेफिनेटली इसमें रोल सभी का है. टीचर्स का भी रोल है कि टीचर्स बच्चों से चाहे क्वेश्चन बॉक्स एक्टिविटी के थ्रू करे, चाहे रोल प्ले के थ्रू करे, चाहे वीडियोस दिखाए या कुछ भी करे, लेकिन टीचर्स उससे डिस्कस करे. पेरेंट्स का भी बहुत रोल है क्योंकि पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं. पेरेंट बच्चों से बात नहीं करते हैं. जब उनको ज़रूरत होती है तो उनको बड़े बना देते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो उनको छोटे बना देते हैं. तो ये जो डायलेमा है ये भी बच्चों को पेरेंट्स से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं. पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है. दोस्त अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली दे विल डेवलप गुड हैबिट्स, लेकिन दोस्त जो इस तरीके की जैसे ड्रग अब्यूज़ में है या रिलेशनशिप के मुद्दे हैं उसकी तरफ ले जाते हैं, तो उनमें भी वो मुद्दे उभर करके आते हैं. तो ये सारे चीज़ें इसलिए भी हमारा जो अभी तो खैर नई शिक्षा नीति कोई स्कॉलस्टिक की बात नहीं करती है, वो कहती है सारी एक्टिविटीज़ स्कॉलस्टिक हैं. चाहे आप सड़क पर भी चल रहे हैं तब भी आप किसी नियम का पालन करते हैं. इसका अर्थ है कि सब का सब हमारी लर्निंग को एनहांस करता है अगर हमारे मिथ्स मिसकंसेप्शन ख़त्म हो जाएं और हमें साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन हमें मिले, सो दैट वी कैन हैव द लाइफ स्किल्स, यानी स्किल्स का डेवलपमेंट हो, तो द चिल्ड्रन कैन हैव रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. और जो उनका समय बहुत सारे ऐसे मुद्दों में सोचने में करने में जाता है, वो उनसे हम उनको बचा सकते हैं और उनकी लर्निंग को हम बेटर कर सकते हैं. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Moving on to the next question. So, a 7-year-old boy, Dr. Prashant, ये आपके लिए है. थोड़ा सा रिलेटेड ही है पिछले सवाल से जो आपको पहले पूछा गया था कि एक बच्चा है 7 साल का, उसको डे ड्रीमिंग होती है लास्ट 6 महीने से. सो क्लास में इनअटेंटिव रहता है, क्वेश्चंस जो है वो ढंग से आंसर नहीं कर रहा है, अचानक से ऑल ऑफ ए सडन थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा लगता है, लॉस्ट ज़्यादा लगता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ होते हैं इसमें, मतलब बीमार वर्सेस नॉर्मल, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके तो ये जो डे ड्रीमिंग है ये एक्चुअली लोगों ने देखा है बहुत स्टडीज़ में और काफ़ी इस पे स्टडीज़ हैं कि ये एक्चुअली ब्रेन की क्रिएटिविटी है. सो दिस इज़ नथिंग दैट एवरीवन हैज़ टू बी स्टॉप्ड या यू हैव टू बी वेरी अग्रेसिव कि बच्चा अगर किसी अपने ख्यालों में थोड़ा खो रहा है तो उसको स्टॉप करे. तो अगर बहुत कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग है, ट्रांजेंटली बच्चे कुछ रोल प्ले अपने दिमाग में बनाते हैं, दे see themselves as a superhero or maybe there are a lot of things that they plan and do. So some if ये कुछ लिमिटेड है, जब ये अपने बोर्डम को हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उसके बाद वो किसी तरीके की ड्राइंग या पेंटिंग में वो उसको थॉट को ला पा रहे हैं, पॉजिटिवली अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं, तो देन इट इज़ गुड. बट समटाइम्स क्या होता है, ये डे ड्रीमिंग is because of a certain scenario in house. Now there is a discord which is there. तो अपने आप को वो रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्ट करने के लिए वो कई बार डे ड्रीमिंग शुरू करते हैं. तो वो चीज़ें या स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही उनके लिए एम्पावरिंग नहीं है या दे आर नॉट वेरी हैप्पी, कोई स्कूल चेंज है, तो वहाँ पे फिर वो अपने आप को कुछ ग्रेटिफिकेशन देने के लिए दे आर ड्रीमिंग हेविली. तो जब ये डे ड्रीमिंग बहुत ही एक्सेसिव हो जाता है सच दैट कि वो जो अपने जो इम्पॉर्टेंट आवर्स हैं स्कूलिंग आवर्स में वो कंट्रीब्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी लर्निंग हैम्पर हो रही है, वो अपने सोशल पीयर रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, वो अपने में ही सेल्फ इनगॉज्ड रह रहे हैं. तो जब ये चीज़ें इतनी एक्सेसिव हैं तो हम उसको फिर मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग बोलते हैं. तो अगर ये मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग है तो देन दैट इज़ अ मार्कर ऑफ एन अंडरलाइंग mental illness which is there. So that has to be then addressed. And इस डे ड्रीमिंग के जैसे और कई सिनेरियोज हैं जिसको कई बार हम रॉन्गली डे ड्रीमिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ही ट्रांजिएंट है, बहुत थोड़ी देर के लिए बच्चा अपने आप में खो सा जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, टीचर सोचते हैं कि ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं वो दिन भर में. तो ये चीज़ें कई बार कुछ तरीके की एपिलेप्सीज भी हो सकती हैं जिसके लिए
हमें कंसर्न रहना होता। तो अगर ऐसा कुछ है बहुत ट्रांजेंटली बट मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, जो कि आप घर में स्कूल में नोटिस कर रहे हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक सीजर्स हैं जिसको एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं, वो हो सकता है। मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग है जो इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड है, जिसमें बच्चा अपने इंपॉर्टेंट वर्किंग आवर्स को मिस कर रहा है। अगर ये सारी कुछ चीज़ें हैं तो उसको फिर हमें पैथोलॉजिकल बोलते हैं और उसे फिर मेडिकल एडवाइस के लिए आना होता है। अदरवाइज अगर ये ट्रांजेंटली है और शॉर्ट है तो ये एक क्रिएटिविटी ही बूस्ट कर रही है, तो हमें उसके लिए बहुत अग्रेसिवली बच्चों को स्टॉप नहीं करने की ज़रूरत होगी। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए तभी हमने एक लास्ट सेशन रखा है जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट बताएंगे, और तभी वो एडोलेसेंट के अंदर भी जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट्स के अंदर काफ़ी इश्यूज वैसे ही होते हैं न्यूरोटिपिकली, जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, जो अभी नॉर्मल नहीं बोलते, टिपिकली डेवलपिंग में भी ग्रोइंग अप इश्यूज होते हैं, एंड देन उसके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर वगैरह सब है, तो इसलिए वो लास्ट वाला सेशन में वी विल बी एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज का। और जो अभी डॉक्टर प्रशांत ने जो बताया और जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कोई देर से बोल रहा है तो हम डिले कर रहे थे कि ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पेरेंट्स भी लेट से बोला था, तो यहाँ पे कुछ भी इशू है तो हमारे को एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर वहाँ आसपास नहीं है तो एक पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है कि नहीं। मतलब इग्नोर मत करिए, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट। Thank you, ma'am. We are moving towards the end of the first panel. So this is a class 6 boy जिसको pediatrician ने कहा है कि उनको dyslexia है. So डॉक्टर मिसेस यादव मैम आपके लिए है ये कि इसमें स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है करंट सिचुएशन में, हमारे कंट्री में स्पेशल एजुकेटर को लेकर कितना अवेयरनेस है, और क्या लीगल प्रोविजन है एसएलडी बच्चों के लिए, और कुछ मतलब जो बच्चे सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड में अपीयर करते हैं एसएलडी बच्चों के लिए कोई खास प्रोविजन है ऐसे, ये सारी चीज़ें मैम। इसमें ऐसा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे कि अभी वर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पॉलिसी भी ये कहती है कि स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे देश की स्थिति है, हमारे यहाँ 15 लाख स्कूल्स हैं और हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर्स हैं, तो इतने सारे स्कूलों में 15 लाख स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर, इवन पॉलिसी ये करी इवन कंसल्टेंट भी काउंसलर भी होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को टीचर्स को कर सकें। तो जो एफर्ट किए जा रहे हैं उसमें पहली बात तो यही है कि भाई टीचर्स को ट्रेंड किया जाए कि दे शुड आइडेंटिफाई एंड देन सम मटेरियल हैव बीन प्रिपेयर्ड सो दैट दे कैन मेक यूज़ ऑफ दोस। उसके साथ साथ निष्ठा जिसकी बात कर रहे थे उसमें यह कि 100% टीचर्स को ट्रेंड करना है, और एलिमेंट्री टीचर्स ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके थे बिफोर द कोविड। अब वो सेकेंडरी टीचर्स का ओरिएंटेशन ऑनलाइन ऑफलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए कुछ वर्क बुक बनाई गई हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं, कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो इस तरह की प्रोविजंस गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, और इवन हेल्प भी है। पॉलिसी तो इंक्लूजन फंड की बात भी करता है कि इन बच्चों को अगर मदद चाहिए किसी तरीके की लर्निंग स्पेशल एजुकेटर से तो वो भी है। होम बेस्ड, जैसे उन्होंने कहा, होम बेस्ड एजुकेशन है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन भी है कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम क्या है कि चैलेंजेस बहुत है हमारे यहाँ। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, हालांकि अगर आप डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज में तो बहुत कम है, बट एब्सोल्यूट नंबर इज़ क्वाइट लार्ज। तो इसलिए वहाँ तक पहुँचना, सब तक पहुँचना अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। जी, तो ये वाला जो हमने मॉर्निंग में लॉन्च किया था वो इसीलिए किया है, वो AI बेस्ड प्रोग्राम, ताकि इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड उसमें जब हमें डेफिनेटिव एविडेंस मिला है रिसर्च से कि वो एक्चुअली इंप्रूव कर रहा है, ब्रेन नेटवर्क्स इंप्रूव कर रहा है। द इशू इज़ कि अभी वो हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस पे करना है एंड डिस्ग्राफिया डिसकैल्कुलिया पे करना है। इसमें डॉक्टर शेफाली मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने डेवलप किया, NCERT ने भी बहुत सारी ऐप डेवलप की है, जैसे यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग है ना, बहुत सारी ऐप्स आप सब उससे कनेक्टेड हैं। तो जब आपने ये डेवलप किया है तो इट्स बेटर टू टॉक टू NCERT so that they can include in their NROER also. Yes. And that will be you can say available to larger number of teachers. Of course, that was the idea. Yeah. That was the so idea. NCERT NROER is a free, you can say, educational channel.
and they are inviting such type of materials. There is a committee, the committee will, you can say, review that material, and once they find it is very useful, as per the policy direction and curriculum framework, so definitely they will try to include in their NROER. So it's a good opportunity, congratulations to you. And there are a lot of material in the second session. I'll like to present what NCRT has done about it. Thank you so much. Ma'am, would you like to add, because you have been instrumental in getting them into the disability certification? So या एक्चुअली आई एम चेयर फॉर द सब कमेटी जिसमें वो SLD ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, तो उसके अंदर एक क्लियर वो जो प्रोविज़न की बात है, तो जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल जो अभी अप्रूव हुआ है बाय द मिनिस्ट्री, एक ही किया था ताकि यूनिवर्सल रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। पहले हम लोगों ने 3 की बात की थी, पर उन्होंने कहा 1 करो, तो उसमें जो है वो निम्हांस बैटरी लगेगी, जो उसके अंदर किसी को भी आ रहा है SLD, तो उसको मोर देन 40% किया जाएगा। तो एक ही कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सबको वो बेंचमार्क माना जाएगा। तो उसके बाद सारे बच्चों को जो NCERT के जो और CBSE के जो कंसेशंस हैं वो मिलेंगे। दैट इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। कैन वी जस्ट एक्चुअली डॉक्टर बीजू इज देयर फ्रॉम लंदन, वी कैन जस्ट फिनिश फास्ट द अदर्स। या डॉक्टर सर, ये किसी को अगर बायलैटरल प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डायग्नोज होता है, तो क्या ऑप्शंस है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एट प्रेजेंट सिनेरियो? जी, पहले तो ये है कि पावरफुल हियरिंग एड्स आ गई हैं, तो उसको लगा के पहले चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हियरिंग टेस्ट करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ केसेस में ये पाया गया है कि उसमें अगर पावरफुल हियरिंग एड यूज़ करेंगे तो वो भी यूज़फुल है। अगर उससे भी नहीं होता है प्रॉपर यूज़ और प्रॉपर टाइम तक यूज़ करने के बाद, तो कॉकलियर इम्प्लांट है। कॉकलियर इम्प्लांट ऐसी डिवाइस है, अगर आप ये देखें कि इंडिया में तो खैर अर्ली 90s से स्टार्ट हुआ है, काफ़ी हॉस्पिटल कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बट उससे पहले अगर कोई बच्चा नहीं सुनता था, सेंसिटिव हियरिंग लॉस है, तो ये होता था कि भाई ये तो बिल्कुल आवाज़ है ही नहीं आसपास, तो उसको पता ही नहीं नॉर्मल क्या है। और फिर हम लोग बोलते थे कि भाई जो मूक बधिर है उसको और कुछ सिखाइए, जैसे कि कुर्सी बुनना है, चारपाई बुनना है। बट जब से कॉकलियर इम्प्लांट आया, और अगर हम इसको ठीक एज पे इम्प्लांट करें, तो बच्चा किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह सुनेगा और बोलेगा। इसका क्या मतलब है, अगर हम बच्चे को प्रॉपर एज पे कॉकलियर इम्प्लांट ना दें, तो वो एक सोसाइटी के ऊपर बर्डन है, अनलेस ट्रेंड, एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट, और पेरेंट्स के लिए भी उसको सपोर्ट करना काफ़ी एफर्ट का काम है। अगर कॉकलियर इम्प्लांट करें, जो आजकल काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ और जो आपके ऑफिसेज हैं वो इसमें फंडिंग करते हैं बच्चे के लिए, तो वो बच्चे को हम 2 से 3 साल ट्रेनिंग के बाद एक नॉर्मल बच्चे की तरह हम उसको हेल्प करेंगे डेवलप होने में। इसका क्या मतलब है कि वो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। ही कैन बी साइंटिस्ट, ही कैन बी ए डॉक्टर। जो हमने 90s में इम्प्लांट किए थे, उसमें कई सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स बने हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ अवेलेबल है, बट इम्पॉर्टेंट है उनको सही टाइम पे पता करना कि बच्चा सुन नहीं रहा है, और अगर उसका प्रोफाउंड सेंसरी हियर लॉस है दोनों कानों में, तो कॉकलियर इम्प्लांट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू सर। सो आई थिंक वी हैव दिस क्वेश्चन इज फॉर अगेन प्रोफेसर राधिका मैम। सो किसी को मैम CNS मतलब ब्रेन का TB होने पे विजन लॉस हो गया है, तो उसका रिहैबिलिटेशन हम कैसे प्लान करेंगे? तो क्या क्या एजुकेशनल ऑप्शंस है एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के मतलब एजुकेशन के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, एंड इन अ वे ये और बीमारियों से भी कनेक्टेड है। CNS ट्यूबरकुलोसिस एक एग्जांपल है जहाँ पे विजन लॉस हो सकता है। ऐसे कई और बीमारियाँ भी हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल. Firstly, one has to remember that vision stimulus is very important for the overall brain development and the overall growth of the child, the cognition and the ability to recognize and understand. So here also it depends कि किस age पे ये problem हुई है. And corollary would be कि a very newborn child who may have some other hypoxic brain damage or other things, उनके लिए भी ये applicable है. So we have to first see कि patient का के visual system में कितना vision है. It's not necessary कि there is complete loss or absolute loss. So there will be some vision, and depending कि vision का क्या level है, उसी हिसाब से हम उसको
सॉर्ट ऑफ कस्टमाइज कर सकते हैं उसका अप्रोच। तो जिन पेशेंट्स का थोड़ा बहुत विजन है तो वो अवेलेबल विजन को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं लो विजन एड्स के हिसाब से के हेल्प से और लो विजन एड्स ऑप्टिकल विजन एड्स होते हैं जैसे टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग लेंस एक्सेट्रा। प्लस आजकल डिजिटल डिवाइसेस भी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी अगर रीडिंग है तो देन दे कैन यूज़ द लार्जर स्क्रीन एंड देयर आर लॉट ऑफ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस ऑल्सो। काफ़ी स्मार्टफोन्स के साथ इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो देर आर लॉट ऑफ एप्स which can help. So there are depending upon the level. अगर patient का थोड़ा सा vision है then using that app he can for example convert a visual stimulus to an audio input. Or reading के लिए they can change the contrast in the screen. They can have the reverse contrast like have black bright letters against a black background. So there are a lot of options. There are some कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि vision loss complete है कि लाइट भी नहीं पता चल रही है दिन रात भी नहीं पता चल रही है। सो इन सिचुएशंस में देन वी गो फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एक तो है इमोशनल सपोर्ट फॉर द चाइल्ड एंड द फैमिली। ये भी डिपेंड होता है कि किस एज पे हुआ पहले थोड़ा सा विजन था कुछ देखा हुआ है प्लस अगर हियरिंग ठीक हो बाकी सेंसेस ठीक हो तो उसके हेल्प से द चाइल्ड कैन बी कैन लर्न। नहीं तो of course there is braille and there are the tactile sense which can be used to educate the child. Also nowadays we have virtual reality devices and also devices which can give you audio input. So if the child has ability to थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो और वो उस devices को handle कर सकता है तो वो भी हमारे लिए aid है। तो educational options आजकल it is the concept है कि try to integrate them in the normal schools. Earlier there was a concept कि blind school में भर्ती करना है उसमें फिर ये ज़रूरत होती थी कि child has to be little older able to take care of themselves। तो वो 5, 6, 7, 8 साल वो used to go waste। you know अभी ये concept है कि आप इनको integrated school में भेजें क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों के साथ और you know by integrating with other friends and all peers उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। It's not only isolated book से ही सीखना है। So every effort, so of course I know as ma'am said that the facilities in the schools is also not easy, but I think a lot of schools are making the effort that जो visually handicapped children हैं जो visually severely disabled है उनको regular school में ही पढ़ाते हैं and then they have other children who volunteer and help them navigate and etc. So I think education options if there is some vision in a normal integrated school and using help of devices and it is important कि इनको certification दें because their certification if it is more than the benchmark they can be given concessions in the form of extra time, they can be given a writer for the exam. So these are also important considerations. Just few. Yeah, definitely I agree with you because now large number of children are in the school and there are talking books for those who are not able to, you can say, see them. Then there's on Braille also they are developing materials. For example, Universal Design of Learning, where there's a print as well as the Braille part is also there. And then in sign language also now material is being developed. So large number of students are there and they are still working very well in the school system. So inclusion is being definitely. Ma'am, but I still feel कि ये भी अभी कम है बिकॉज सेंसिटाइजेशन करना सारे मेन स्ट्रीम के जो टीचर्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनको समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करना है। अगर हम वो नए करिकुलम में डाल रहे हैं पर वो CMEs एंड ऑन गोइंग इन सर्विस इनको समझ में आना चाहिए, इनको सेंसिटाइजेशन होना चाहिए हाउ टू हैंडल स्पेशल नीड चिल्ड्रन बिकॉज वो भी घबरा जाते हैं कि कैसे करना है। सो इट इज़ अ लॉस। सो डेवलपिंग दिस इज़ वेरी नाइस बट इवन वी हैव टू सेंसिटाइज। That's why I'm saying in Nishtha what he said, in Nishtha 100% teachers are being trained including in special education also. But you are very right, intensive training how to handle and that can be done only by doing practice. लास्ट क्वेश्चन तो हम लोग बात कर चुके हैं जब लर्निंग डिसेबिलिटी की शुरू में हमने बात की थी तो उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात हुई थी और ये बात हुई थी कि उनकी मानसिक समझ उनकी सही होती है इन बच्चों की। आई थिंक वी विल एंड बिकॉज वी आर रनिंग लेट एंड इसके बारे में हमने काफ़ी कर लिया चर्चा। और डॉक्टर बीजू हमीद हमारे साथ ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट से हैं ऑलरेडी ऑनलाइन।
for a very long time. उनका 12 o'clock था. Before, so by the time we are going to log in and welcome in, and Dr. Kakuli would welcome, we are going to thank all the panelists. I would request now Dr. Shefali Gulati to give the memento and the planter to Dr. Radhika Tandon. Planter, kindly give the planter, Kesha. Now I would request. Now I'd request Dr. Shefali to give the memento to Professor Saroj Yadav and the planter. With this, we come to the end of the panel A, panel 1. Now I would request Dr. Biju Hamid, who is a consultant pediatric neurologist with extensive experience in complex movement disorder. His special clinical interests are he has expertise in management of children suffering from cognitive, neurological and psychological issue. We at Neurology Division has been collaborating with Sir for more than a decade. We would like to now welcome Dr. Biju Hamid to deliver his perspectives on prevention of brain injuries. And I would like to add that Dr. Biju, who has roots from India, and he's a very close friend and working for a very long time. Dr. Biju? Thank you so much. Yeah, and I will translate. You don't worry because you've been for 3 decades in UK. I will translate you to Hindi afterwards. Yeah, I have the slide printout. You Yes. want to share? You can. Okay, we have it, but we are stopping present. You can share that. Yeah, but ours are ready if you want. But then you have to tell us for the next one. It's coming. Full screen अभी नहीं आया. Full screen. Can you make? No, it's not as yet full screen. Full screen is not come, Dr. Biju. We can start. Yeah, I could share. Yeah, and I'll be standing here, right? Yeah, you can stop sharing, Dr. Biju. You can stop sharing, and Sushin, आप करिए. Sorry, this problem comes with Google Meet. You know, we were trying to get a Zoom subscription, but कहाँ रखा है? Dr. Biju, all yours. Can you see the slide?
very important, the physical impairment which happens afterwards, like which could start with problems with locomotion, problems with walking, problems in coordination, control and balance, problems with visual and motor difficulties. But equally important are the unseen problems, the problems which are not obvious, like tiredness, fatigue, problems with vision and hearing, problems with taste and smell, anxiety, depression, hormonal imbalances, weight gain, problems affecting the growth and sexual development. Next. And most importantly is the intellectual and educational consequences. Now, we've been listening to several case scenarios. Now, in each of those case scenarios, you could always argue that this could be potentially a sequelae of a head injury which that child has had, because the cognitive and the psychological sequelae of head injury is so enormous and so under represented or under recognized, which includes the speed of information processing, attention and concentration, learning and memory, speech and higher level language skills, personality changes, emotional changes. Next. It is hence the silent epidemic, because we now know, and the World Health Organization has now acknowledged that traumatic brain injury is the leading cause of death and disability worldwide, with over 10 million people killed every year or hospitalized. And when you look at the prevalence of head injury, then you can easily see that the low and middle income countries are disproportionately affected. Next. So this is the incidence of traumatic brain injury by the World Health Organization regions. And on the right side of the screen, you can see the incidence of traumatic brain injury from road traffic collisions. And you can easily see India is looking dark red. And that's the problem that India is facing at the moment. Next. In India, around 1.6 million people are admitted to hospitals every year with traumatic brain injury. And every year it accounts for more than 200,000 deaths. And hence, India is the #1 country in increased in the incidence of traumatic brain injury. And the two things which are most important are the road traffic injuries and falls. And children constitute around just over 1/3 of the population of India. And head injuries in children account for 20 to 30% of all cases. And that's where the problem lies. And why is it a public health problem? It is a public health problem because of the increased mortality, because of the increased morbidity, because of the short and long-term sequelae resulting in significant disability, and because of the huge economic burden and the emotional burden associated with it. Next. And if you look at the healthcare cost of pediatric TBA, traumatic brain injury, we don't have data from India, but if you look at the United States data from mild, moderate, and severe, it's the median costs are so enormous, and it puts a huge economic burden on the countries. Hence, the economic costs are also very, very significant. And it's not just that, it is a vicious cycle. It affects the family, it breaks up families, it affects economic activity, it affects the economic opportunities, and this cycle goes on. So it's a cycle of disabilities. Next. And if you put this in perspective of the other neurodevelopmental disorders that we've been talking in the morning, autism, the prevalence rate is 0.6 to 1.2%. Attention deficit hyperactivity disorder, learning disabilities, dyslexia. And when it comes to traumatic brain injury, it's so easy to see where the magnitude of the problem. To put this in perspective in relation to the other neurodevelopmental disorders. Next. And as I said earlier, we hinted earlier, if you look at the distribution of the causes of the child injury deaths, two things which are very important is the road injuries, drowning, and falls. And then the whole host of other things like poisoning, like burns,
self-harm, forces of nature, death, children dying because of conflicts across the world, children dying because of exposure to environmental pollutants, etc. But most importantly, road injuries and drowning. Next. And if you look at this, if you look at in many African countries, and there's no much data on this from India, but perhaps this is very similar in the Southeast Asian situation as well. Traffic accidents now kill more people than malaria in many African countries, including Kenya, Ethiopia, South Africa, and Sudan. If it is a parasite, or if it is a virus, if it is a bacteria, then it is obvious. We know that there is a cause. But in head injury and the sequelae, there is this hidden element to it, which makes it even more challenging to identify and manage. Falls, yet another important aspect. 126 children die from a fall every day, and 66% of this are fall from heights. And often it goes like severely high during school holidays. Falls from rooftops, windows, stairs, playground equipment, trees, building sites, sports, falls from prams, baby walkers, etc. So how do we address the prevention? Now, several things have been looked into on how we can prevent this huge epidemic, brain injury prevention. And there are certain things which have been shown to work. And the two things are the use of bike helmets and also addressing the falls by proper designing of windows, like sliding windows, deeper window sills, use of stair gates, etc. And addressing pedestrian injuries by properly marked zebra crossings, proper sidewalks, and repairing sidewalks promptly, use of pedestrian signals, use of cell phones while walking. Now, these are the few interventions which have been shown to work, particularly the use of bike helmets and in pedestrian signals and sidewalks and zebra crossings. Next. Next. It's next. It's the photograph. Yeah. Next, please. Yeah. So if you look at the cost effectiveness of this prevention, and this is a study from the Johns Hopkins Injury Institute, for every $1 spent on bike helmets, you save $29. For every $1 spent on road safety improvements, you save $3. For every $1 spent on child restraints, you save $29. Prevention counseling by pediatricians, equally cost effective. Smoke alarms, $1 spent on smoke alarms results in a saving of $65 per person, and that's the money numbers behind it, the cost effectiveness of these preventive strategies. So in any which way you look at it, it is the prevention is very, very important. Next. But then it is easier said than done, because these interventions, bike helmets, child car seats, child-proof tops, smoke alarms, these are not brand new inventions which happened in the last few years. These inventions been around for 40, 50, 60 years, but this has not translated into actual improvement, because of the main reason why that has not happened is because that we have been slow to increase our awareness and to make everyone else aware of the magnitude of the problem, the importance behind the use of these devices. And hence the reason why, even though we had all these inventions for the last several decades, we haven't been able to use it properly, because of lack of initiatives in implementing these safety precautions, devices. Like, for example, if you look at the motorcycle helmet laws and helmet standards by country, you can see that in India, it shows dark red. This is quite recent data from the World Health Organization, where the helmet laws are not comprehensive or
in some situations, some states where there is no law. And this is again a very important eye opener to the situation that we need to urgently address. Next. But things have changed. You know, the 2021 to 2030, 2010 to 2020 was also a decade of action for road safety, where road safety management, safer roads and mobility, safer vehicles, safer road users, post crash response were implemented. But that has also been continued into the second decade for action of road safety from 2021 to 2030, and this was proclaimed in the UN resolution on improving global road safety, with a target to reduce road safety deaths and road deaths and serious injuries by 50% by 2030. Next. And this is the problem that we need to address. And you know, like we mentioned, the increase in use of mobile devices, etc., has had an impact on safety issues, as we can see in this picture. You know, being distracted by mobile devices while crossing the road. Next. Yet another example of the situation that we have at hand. Next. Now, like we said before, there are particularly when you address pedestrian injuries, properly marked zebra crossings and properly enforced traffic laws, proper sidewalks, use of pedestrian signals, not using cell phones while walking, not being distracted are important. There are three other things which have been shown to improve the road safety. Safe routes to school programs, enabling safe corridors for children to bike to school, use of backup sensors in cars and use of backup cameras in cars, which most of the new generation automobiles have, and training children in pedestrian safety. These are yet other interventions which have been shown to work. Next. There are loads of things that we can do to try and address the problem, but it is very important to focus on interventions that are effective. Hence the reason to focus on that education, focus on the road safety, because that's where the most the high incidence of traumatic brain injury lies. But how do we know that's where it lies? Because we need data. It is quite important to collect this data and focus on the most frequent causes and focus on interventions that are effective. Next. And we need to integrate child injury into a comprehensive approach to child health and development. And we know, if we look at the medical curriculum, and if we look at policies, and if we look at even UNICEF and WHO policies, they have been, international organizations have been quite late to acknowledge this and adopt child injury and to acknowledge the importance of child injury prevention. The focus should be on developing and implementing a child injury prevention policy and a plan of action. And data collection should be strengthened to improve the quality and the quantity and raise awareness towards child injury prevention. Next. We have the National Road Safety. We had the National Road Safety Week in January. So things are moving forward. Steps are being taken to address the issue. So all hope is not lost. Next. So those who are interested in public health might be very aware of this graphic, which represents the 2030 agenda for sustainable development adopted by the United Nations member states in 2015. And this is in fact a 17-item, a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. Now, the core of the sustainable development plans are an urgent call for actions by all countries, both developed and developing, in a global partnership. And what's important is, while you are implementing strategies to improve health and implementing strategies to improve education, to reduce the inequality and to promote economic growth, it is also important that ending poverty and other deprivations should go hand in hand with this. All this is while we are tackling other
scourges like the climate change and working to preserve our oceans and forests. But sadly, even if you look at the 17 item, if you look at the individual goals that the United Nations and UNICEF had promoted, there's still a lot that can be done in terms of child injury prevention, and that's quite important to address that. We talked about this earlier, the importance of collecting data. Next. And this is where it is important. So we have network, you have the policy developers, you have the stakeholders and the multi-sectors, and you have the resources. And this calls for collaborative work, because you need the research, you need the collaboration, you need the research, and you need the training. And all this have to gel in nicely in order to tackle the main problem, which is the injury and preventing injury. And each of these aspects are important. You need the research, you need the data in order to inform our policy development. You need the stakeholder engagement in order to promote this. You need the training in order to make whatever developments, whatever knowledge that has been created is sustained and implemented nicely. Things have moved forward, particularly in India. There have been some initiatives from the neurosurgery community, particularly the Neurotrauma Society of India, and there was this Indian Traumatic Brain Injury Consortium between the US and the Indian counterparts, and the members of the American Association of Physicians of Indian origin. The problem is no one really knows how big the problem is, because historically there has been an underreporting of road traffic deaths by the Crime Records Bureau in India. That's one problem. The second problem is basic critical care standards have not been uniform across health centers. And there has been a study a few years ago called a collaborative head injury study and adherence to guidelines, and that was done at Jaiprakash Narayan Apex Trauma Center, and they showed that adherence to guidelines and protocols can significantly reduce the incidence and the sequelae of deaths and disability in head injury. So it's not that this is impossible. It is possible to adhere to guidelines, develop guidelines, and adhere to it. But the problem is we need to know, we need to get more data, we need to do more research, and we need to do more training in order to make this happen. Next. But injury control is not just prevention. It is a continuum of the child getting injured, receiving acute care, and then the rehabilitation. Often rehabilitation is looked as something separate from this, but no, rehabilitation should be the natural continuum of the acute care, and the focus should also be on rehabilitation in order to minimize the secondary effects of the brain injury. Because traumatic brain injury is not something which happens just at the time of impact. It lasts for hours, days, weeks, months, and years afterwards. And so important to have the rehabilitation implemented into this cycle. Equally important along with prevention. Next. So ultimately, we all have a mandate. We all have a mandate to improve our children's lives through education, through research, through training, and public awareness. And I'm really, really impressed by the amount of work that Professor Gulati and her team at All India Institute has been doing. We have been collaborating for the last few years on trying to develop a registry, of which brain injury is a very important aspect of it. And because we don't have the data, there's been some work recently done by Dr. Priyanka under the supervision of Dr. Gulati, who looked at the incidence of traumatic brain injury, and it again shows that how big the problem is, and steps have been taken. So we need more data, we need more public awareness, we need more training, and we need more research. For example, in malaria, for example, we know that distribution of bed nets will address the problem, and we can talk about distributing bed nets free for communities.
but we never talk about distributing helmets, for example, for communities, because the magnitude of the problem is at par with the major killers, like the diarrheal diseases, the communicable diseases, the malaria, poverty, malnutrition, etc. But it is high time that we address the problem, because by 2050, the statistics show that India will overtake the United States in the number of automobiles on the road. So this problem is only going to get worse. So the time to act is now. And hence it is so important that we make use of every opportunity, like for example arranging symposias and seminars on brain day, in order to further increase the awareness, because it is a silent epidemic, and it's always not obvious whether a child has had head injury or not. And with these children in school, and where the people engage with them, behave with them, are so important. And like in the UK, the Child Brain Injury Trust have introduced a card, an identity card called "I have had a head injury," so that people would be able to recognize, like, okay, this child looks okay on the outside, but everything is not as simple as it seems, because I've had a head injury. I get I get overwhelmed by environmental stimuli. I can't concentrate. I need to be approached with care. I need to be handled carefully. So all this is important, and we have to, and we wouldn't think about it unless we are aware of it. And our duty is to make ourselves and each one of us aware of the problem, and continue with the education, the research, and the training. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Biju. Uh, In in 3 minutes, 3 minutes, I I will will. just outline basically ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो है उसमें है इंजरी का जो होता है किस हेड पे जो झटका लगता है, चोट लगती है, उसकी वजह से होता है। और उसके जो कारण है, हिंदुस्तान में ये फॉल्स के बहुत होते हैं, बच्चे सीढ़ियों से गिरते हैं और ऊपर हमारे यहाँ पैरापेट नहीं होता है, तो वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से गिर जाते हैं, तो वो उसको रखना है। और सीढ़ियों के अंदर गेट नहीं लगा होता है, बच्चे ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे को प्रैक्टिस में दिखता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो है ही है, स्पोर्ट्स इंजरी तो है, और वो जो शेकन बेबी सिंड्रोम है उसका भी है। दैट इज़ काइंड ऑफ अनदर प्रॉब्लम विच इज़ देयर। साथ में क्या है कि बाकी और कारणों से भी है, कुछ मेडिकल कारणों से है, उनको मोटर में प्रॉब्लम होती है, चलने वलने में हो सकती है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर बीजू ने जो बताया था, हमारी जो स्टडी थी, डॉक्टर प्रियंका का थीसिस था, वो हमने ट्रॉमा सेंटर के साथ किया था। उसके अंदर जो माइल्ड इंजरी है, माइल्ड इंजरी में भी हमें लगता है ना हल्की फुल्की चोट लगी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर उसके अंदर भी उनके बच्चों की समझ, उनकी कॉग्निशन, उनके दिमाग की समझ में प्रॉब्लम आई है। सो दैट मीन्स इट इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम। ये नहीं है कि सीवियर हेड इंजरी ही सीवियर प्रॉब्लम है, दे कैन बी वेरी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर ये इसका तो साइलेंट एपिडेमिक है जो सर ने मतलब आपको दिखाया है डॉक्टर बीजू ने कि क्या उसका प्रेवलेंस है। और इंडिया का जो था वो नक्शा में लाल कलर में था, तो बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा कारण है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे ना स्कूटर और मोटरसाइकिल में तो हेलमेट हो जाती है, लेकिन साइकिल में लोग हेलमेट लगाते नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि साइकिल में जो नॉर्मल साइकिलिंग है वो नहीं कराते। अगर आप विदेश के आप डिज्नी जूनियर के भी कार्टून्स देखोगे, उसमें वो कार्टून्स भी जो छोटी बेबी कार में भी चला रहे हैं उसमें भी हेलमेट लगाना सिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे बच्चों को नहीं करा रहे ट्राई साइकिल वगैरह में वो। और दूसरा, अगर हमारे बच्चों को दौरे पड़ते हैं, कईयों को दौरे पड़ते हैं जो गिर जाते हैं दौरे में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको हेलमेट बना के दें, ताकि वो डे टाइम में जब वो चल वल रहे तो वो हेलमेट रहे, ताकि वो हेड इंजरी ना हो। वो भी एक कारण है जब जो दौरों में जो दौरे पड़ रहे हैं जिसमें वो गिर जाते हैं, उसमें हम लोग वो नज़रअंदाज करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ देयर। और उससे ऑब्वियसली सीरियस में तो डेथ हो सकती है, लेकिन मैंने बताया प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली हो सकती हैं। और जो एक्यूट केयर तो है ही है, डॉक्टर बीजू ने बताया उनका रिहैबिलिटेशन वगैरह करना है, तो ओवरऑल कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर प्रिवेंशन। एंड उससे क्या है, इट इज़ नॉट ओनली वो बच्चे का, पर उसकी फैमिली का और सोसाइटी में पूरा उसका रोल है। और उन्होंने जो स्लाइड दिखाई थी जिसमें जो हमारा ऑटिज्म वगैरह का जो प्रिवलेंस बढ़ रहा है हम बात करते हैं, लेकिन आप देखो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी तो 24 to 31.6% था, तो मतलब दैट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ मोस्टली प्रिवेंटेबल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रोड इंजरीज और ड्राउनिंग दिखाई थी आपको डॉक्टर बीजू ने, हमारे यहाँ पे फॉल्स काफ़ी हद तक आती है हमारी प्रैक्टिस में।
और जो उन्होंने बताया कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज़्यादा बच्चों की और लोगं की मौत हो रही है बनिस्बत मलेरिया से अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और जो फॉल्स का बताया है वो इम्पॉर्टेंट है कि पैरापेट बने, वो जो ऊपर का रूफ टॉप है और जो सीढ़ियाँ हैं उसमें हमेशा गेट होना चाहिए, कोई देखता ही नहीं है, बॉदर नहीं करता है। और जो साइकिल बच्चे जा रहे हैं, अगर साइकिल मेन रोड पे जा रहे हैं, एक तो हमारे पास साइड में जो पैरेलल रोड होती है एक्चुअली बनती है साइकिलिंग के लिए, वो कोई फॉलो तो करता नहीं है। तो एक्चुअली विदेश में आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक साइड में आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गए हैं, कि एक लाइन लगी होती है, उसकी परली साइड ही साइकिल वाले लोग चलाते हैं और वहाँ पे ये बड़ी वाली गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। पर यहाँ तो सब zigzag ही चलता है, तो दैट इज़ वी हैव टू एडहियर, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और साइकिलिस्ट का आपने देखा है कि कितने साइकिलिस्ट ने आप लोग ने हेलमेट पहनी हुई है, आई फील कि वो नहीं है। और हम बच्चों को हमारे को सिखाना चाहिए। और डॉक्टर बीजू ने कहा था कि मलेरिया के लिए बोलते हैं कि वो मच्छरदानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो प्रिवेंशन है। तो यहाँ पे हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, और वो हेलमेट के लिए वो बात नहीं हो रही है कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और जो सेल फोन की एक नया परेशानी जो उभर के आई है, लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं, वो ये 2 मिनट रुक जाओ, उसना क्या हो जाएगा। आई मीन इट्स ऑलवेज इट, आई मीन आजकल वी आर बीइंग रूल्ड बाय ऑल दीज गैजेट्स। और ये लोग कोई पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं चलते चलते, ये सारा फेसबुक और ट्विटर और ये सब ही हो रहा है, इंस्टाग्राम, तो वो सब फालतू की चीज़ें। इफ़ यू थिंक कि आप उसकी वजह से जो टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको आप नेगेटिव नहीं बता सकते। ये फालतू की सोशल वाली चीज़ों के ऊपर ये कर रहे हैं। और उस लड़की जो चल रही थी सीढ़ी पे क्रॉस करते हुए, आपको पढ़ाई थोड़ी कर रही थी, वो किसी से फेसबुक पे हो गई या व्हाट्सएप चैट हो रही होगी। और उन्होंने बताया जैसे स्मोक अलार्म्स है, वो सब अभी नया नहीं है। कार सीट है, कितने लोग कार सीट में बच्चे को बिठाते हैं, कोई लगाता ही नहीं, उनको लगता है हमारे साथ तो होगा नहीं कुछ भी। एक ये नॉट मी फिनोमिना होता है कि हम तो सेफ हैं, वो ये नहीं। कार सीट कितने लोग करते हैं, सब स्टाइल के लिए तो कई लोग खरीद लेते हैं, कौन लोग प्रॉपर्ली उसको लगाते हैं। दिस इज वन थिंग ना। इवन हम लोग पढ़े लिखे लोग, कहाँ से सब लोग पढ़े लिखे ने तो कार सीट खरीदी होती है, पर कौन लगा के प्रॉपर स्ट्रैप कर रहा है। वो स्ट्रैप ही नहीं करेंगे तो कार सीट भी मतलब वो जो बच्चे की सीट है उसको अगर आप स्ट्रैप नहीं करोगे तो वो ही आगे गिर जाएगी। तो आप मतलब उसको रखना क्या, शो ऑफ के लिए है। और वो लॉज को रिजिड होना पड़ेगा, पर हमारे को खुद की रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। लॉज बनते हैं तो सारे लोग बाईपास ही करते हैं, मतलब उसको क्या हमें समझना है कि हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है। हेड इंजरी हो गई, उसके बाद कितना प्रॉब्लम हो जाएगी सारी लाइफ में। किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, दिमाग से समझ कम होगी, पूरी लाइफ बदल जाती है उस बच्चे की भी और पूरी फैमिली की। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि रोड सेफ्टी का पहले एक डिकेट था 2010 से 2020 तक, कुछ टारगेट्स बनाए थे। अब 2021 से 2030 तक भी टारगेट बनाए हैं ताकि उसका प्रिवेंशन करा जा सके। तो अभी जो है एक साइकिल आया, वो साइकिल में एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े हैं, मोबाइल फ़ोन वाला दिखाया। और जो हमारे हैं जो टेम्पो टुम्पो के ऊपर 10,000 लोग चढ़े रहते हैं और उसके ऊपर साथ में ट्रकों में चढ़े जाते हैं, ऊपर से एक और डेंजरस वो ट्रेन में चढ़े रहते हैं, उसके ऊपर से तो वो इलेक्ट्रिक करंट वाला होता है, तार लगी होती है। तो यू नेवर नो पीपल, और कई बार कई लोगों के सर कट चुके हैं। मतलब इट इज़, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी क्या जल्दी है, अभी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो वाई आर यू इन हेस्ट। और वो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह कोई फॉलो नहीं करता है, सिग्नल कौन लोग फॉलो करता है। अब वो फाइन्स वगैरह होने चाहिए मनी वगैरह के अलावा, और कोई उनको समझ में आएगी नहीं आई थिंक। और अगर खुद को अपने यहाँ से अंदर से जागरूकता होनी चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना, जो कार्टून्स हैं हमारे, कोई कार्टून बताते हैं कि जो उसकी टॉय है उसको अगर कार्ट में बिठा रही है उसको, या ट्राईसाइकिल पे उसको हेलमेट बना रही है। विदेश वाले कार्टून देखो तो वो जो डॉल्स वॉल्स हैं उनको भी पहनाते हैं, ताकि बच्चे को अपने आप ही बिल्ट हो जाए कि भैया साइकिल में जाना है तो हेलमेट है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे डॉक्टर बिजू ने बताया वो डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा रजिस्ट्री था जो कंप्लीट नहीं था, जिसका हमने एनालिसिस किया था, जो डॉक्टर प्रियंका के थीसिस में 2 पार्ट किए थे, वो रजिस्ट्री का डेटा कलेक्ट किया था। और जो माइल्ड वाले इंजरी थी उसमें देखा था कि दिमाग में समझ और उनकी एनालिटिक कैपेसिटी, मेमोरी, वो सब कम होती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन बाद में उसको चेस करते रहो। और नेशनल रोड सेफ्टी वीक होता है तो आई थिंक उनको मनाना चाहिए। WHO वगैरह ने, यूनिसेफ ने ग्लोबल गोल्स बनाए हैं बच्चे की पूरी लोगों के पूरे उद्धार के लिए। तो हमें उसमें इंजरी प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। और उसके अंदर हमारे को होना चाहिए कि वी हैव टू हैव रिसोर्सेज, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। अभी रिसर्च से ही पता चला ना कि माइल्ड वालों में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोच रहे हल्का फुल्का कोई नहीं है। तभी वो डॉक्टर भी जो कह रहे हैं ना, आई हैड इंजरी, वो है क्योंकि बाद में चल के क्या हुआ, इंजरी हुई, कहीं पे दिमाग में थोड़ा झटका लगा, वहाँ थोड़ा स्कार हो गया, उस समय दौरा नहीं पड़ा, बाद में पड़ सकता है। तो मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर वो लिखा है तो आइडेंटिफाइड रहेगा। तो कोलैबोरेशन करनी है गवर्नमेंट से, रिसर्च से, और साथ में एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सरकार के थ्रू
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला एक्यूट केयर प्रिवेंशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्यूट केयर के अलावा रिहैब में हमें फोकस देना है। हमारा रिहैब बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड पार्ट है और बहुत ज़्यादा करने की है उसमें, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा होलिस्टिक रिहैब नहीं है, जिसके लिए हम डॉक्टर बीजू से पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिकॉज वो न्यूरो रिहैब का हेड कर रहे हैं वहाँ पे। और अभी उसलिए सारे बच्चों की एजुकेशन, रिसर्च, उनकी न्यूट्रिशन, उनके सारे सब चीज़ों के लिए हमें इम्प्रूव करना है और सारा उधार तभी होगा। और ये हेड इंजरी जो है, हम कभी बात नहीं करते हैं, स्कूलों में बच्चे फुटबॉल लगाते हैं, दूसरे के सर पे लग जाती है। तो मतलब वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर, दीज आर इश्यूज विच हैव टू बी हैंडल। एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर बीजू? बिकॉज अभी उनका तो सुबह 4.5 घंटे पीछे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, उनको अपना काम करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनके लिए, और मुझे पता है कि कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, वो नेक्स्ट पैनल शुरू होने से पहले उनका सवाल पूछ लेंगे। अब डॉक्टर बीजू वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने वो सवाल नहीं लिया था पिछले पैनल के एंड में। एनी क्वेश्चन किसी को है डॉक्टर बीजू के लिए? एनी क्वेश्चन? पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी रेजिडेंस, आप पूछ लो यार। आप क्या कुछ नहीं पूछना? ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर बीजू, इट वाज वेरी You're muted, Dr. Bizu. Thank you, thank you. Thanks, Dr. Shafali. Thanks very much. And thank you to everyone who's been listening, and have a good day. Getting live streamed on YouTube, so mostly people are there on YouTube. Yeah. Thank you so much. Grateful to you. Thank you. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Bye. सभी विशेषज्ञों को, डॉक्टर बिजू आपको धन्यवाद। इस पैनल के पश्चात हम अगली ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। अब उन बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको विशेष पूर्वक अधिक ध्यान और अधिकतम देखभाल की ज़रूरत है, जिससे उनकी क्षमताओं का बेहतर पालन हो सके और उनमें और बढ़ोतरी की जा सके। इस परिचर्चा के नेतृत्व के लिए मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर शेफाली गुलाटी मैम को। पैनल के संचालन करने के लिए चाइल्ड न्यूरो डिवीज़न के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत जौहरी सर को आमंत्रित करती हूँ। पैनल चर्चा के सदस्य स्टेट कोऑर्डिनेटर AIIOSD मिस्टर अजय कुमार सिंह सर, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, एडवाइजर फॉर CBM इंडिया ट्रस्ट मिस्टर TD धरियाल सर, फॉर्मर डीन एकेडमिक NCERT एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेसर सरोज यादव मैम को, और चाइल्ड न्यूरो डिवीज़न के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु चक्रवर्ती सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज़ पैनल के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने पिछले पैनल में डिस्कस किया कि कैसे टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या कॉमन इश्यूज हैं और उनको हम कैसे एड्रेस करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पैनल में हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों में जो कि खुद से ऑलरेडी उन किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये बच्चे स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम इनके किड्स विद स्पेशल नीड्स इन्हें हम बुलाते हैं। तो इनके ब्रेन हेल्थ को हम कैसे और पोटेंशियल इनके बढ़ाएं और इनका ग्रोथ ऑप्टिमल कैसे करें, उसके बारे में हम इस पैनल में चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम इस पैनल के, और ये क्वेश्चन डॉक्टर अजय से होगा हमारा कि ये जो बच्चे हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बोलते हैं, इनको नॉर्मल स्कूल में इनका प्लेसमेंट हो या इनकी स्कूलिंग चले, इसके बारे में उनका क्या विचार है, वो कैसे? अच्छा, हम ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, अभी डॉक्टर अजय हमारे साथ नहीं हैं। हम ये मिस्टर धरियाल जी को मैं ये क्वेश्चन पुट अप करूँगा
कि ये जो बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, इनको सर्टिफिकेशन हम कैसे करें, इनको क्या बेनिफिट्स है इस सर्टिफिकेशन से, इसके ऊपर वो अपना विचार रखें। धन्यवाद। पहले तो मैं एम्स और आपके पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विषय पे ये कॉन्फ्रेंस करिए, वर्कशॉप करिए, जो भी है, पब्लिक लेक्चर रखा है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, हम सब लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं और साइकियाट्रिक की बात करते हैं, लेकिन ब्रेन की बात नहीं करते थे। मैं पहली बार इधर देख रहा हूँ कि हमने उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेन हेल्थ आज पूरे विश्व दिवस है, ब्रेन डे, और ब्रेन हेल्थ सबके लिए हो। और सबसे बड़ी चीज़ में जो अक्सर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी अवसर हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उसमें इक्विटी की बात करते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, या SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, या RT है, RTE है, या हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है। उसमें हम सब कह रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं। पहले इक्विटी की बात नहीं करते, इक्वलिटी की बात करते थे कि हर चीज़ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को समान मिले, उतना मिले जितना औरों को मिलता है। सो ये इक्विटी की बात, ब्रेन हेल्थ की भी इक्विटी की बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसेबल बच्चे या कम्युनिटी अक्सर नेग्लेक्टेड रहती है, और बच्चे भी, और वो तो बोल भी नहीं सकते। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मुझे एक आपसे जो सवाल मुझे पूछा गया है, सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, आज 21 डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे RPWD एक्ट 2016 में। उन 21 डिसेबिलिटीज़ को कैसे असेसमेंट करना है, उनका सर्टिफिकेशन कैसे करना है, उनकी गाइडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने निकाल रखी है। वो सब एक्सपर्ट्स हैं। प्रोफेसर गुलाटी, शेफाली गुलाटी, उसमें एक कमेटी में डिसलेक्सिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कैसे असेस करते हैं, उसमें कमेटी में थी। उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल, मैं बोल रहा हूँ सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म को में आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं आपका फोटोग्राफ में पहले हुआ करता था डिसेबिलिटी को दिखना चाहिए, नो, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस जो नॉर्मल जो आपकी फोटोग्राफ होता है, वो फोटोग्राफ होगा। और दूसरा आपके रेजिडेंस का एक ID प्रूफ होगा। और इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं पूछा जाएगा। वहाँ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म देंगे। आपको एक दिन, अक्सर सभी ये हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिन निश्चित होता है। उस दिन में आपको बुलाएंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी, ओवियस डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, पैरालिसिस है, किसी को हाथ कट गया, पैर कट गया, या स्पाइन इंजरी है, बेड में पड़े रहते हैं, या मेरे दोनों आँख नहीं है, नहीं देख पाता हूँ, तो इन जो कैटेगरीज मैंने, ओवियस डिसेबिलिटी, इसके लिए कोई भी डॉक्टर, एक ही डॉक्टर, और कोई भी डॉक्टर MBBS भी होगा तो वो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट असेसमेंट कर सकता है। क्योंकि इसकी पूरी एक स्केल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। अगर एक हाथ मेरा या एक अंगुली कट गया तो कितना डिसेबिलिटी है, तर्जनी अंगुली कट दिया तो कितना है, अंगूठा कट गया तो कितना है, पूरा हाथ कटा तो कितना, वो हमारा
एक स्केल वो बना हुआ है, चार्ट बना हुआ, उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया, फिर उसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका बनेगा। आज हमारे देश में ये तो हो गया ओबियस डिसेबिलिटी के। नंबर 2, कोई जैसे जो डिसेबिलिटी को आप देख नहीं सकते हैं, ये जैसे डेफनेस है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, लो विजन है, मसल है, या आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, साइकियाट्री का जो मेंटल इलनेस है, या कोई लिप्रेसी क्योर, ये जो 21 डिसेबिलिटी उसके लिए जो दिखती नहीं है, उनके लिए आपको उस विषय का, उस जो डिसेबिलिटी है उसका स्पेशलिस्ट उधर होंगे, वो स्पेशलिस्ट अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देंगे। एक ही स्पेशलिस्ट की, भले किसी को डेफनेस है या विजन लॉस है, लो विजन है या ब्लाइंडनेस है, लेकिन आंख दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पता नहीं चलता कि ब्लाइंड है, सो उनको आपको उनका जो असेसमेंट है उस स्पेशलिटी का एक डॉक्टर कर सकता है। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं, मान किसी स्पेशलिटी कोई डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे, मुझे याद है जब मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर हुआ करता था, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट, हरियाणा, उत्तराखंड, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो मैं जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं था, इसलिए हम आईक्यू नहीं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते थे, तो हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को समन किया था एंड देन इशूड है डायरेक्शन। तो वो स्थिति बहुत सारी जगह होगी कि स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उसमें यह कि अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो कोई प्राइवेट जो डॉक्टर है एक्सपर्ट को आप ले लीजिए, या बगल के डिस्ट्रिक्ट से आप वो कर लें, और वो, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट डॉक्टर सर्टिफाई कर रहा है तो उसमें सुपरिंटेंडेंट उस सर्टिफिकेट में हॉस्पिटल का वो साइन कर देंगे, काउंटर साइन होगा। ये सर्टिफिकेट सिंगल डिसेबल, पहले बोर्ड होता था, देयर इज नो नथिंग लाइक बोर्ड, आप पहले हम बोलते मेडिकल बोर्ड या मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं बोलिए, मेडिकल बोर्ड भी नहीं, इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और ये मेडिकल बोर्ड नहीं है, ये है सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। शब्दों का भी हमें, टर्म्स का भी प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए एक हो गया। अगर हमारे पास मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से ज़्यादा है, ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसके साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड सो एंड सो फोर्थ, ऑटिज्म है, तो उसको हम जितनी किस्म की उसकी डिसेबिलिटी है उतने किस्म के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वो सर्टिफिकेट कर देते हैं। तो एक आपका असेसमेंट हो गया, उस दिन असेसमेंट करने के बाद आपको फिर बता दिया जाएगा कि इतनी तारीख को आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये हमारे रूल में है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल। मैं थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्या होता है मुझे पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी में दिल्ली में रह चुका हूँ, वहाँ हमने डॉक्टर्स को घर में जाकर, 3 ऐसे केसेस जिसको डॉक्टर को घर में जाकर के, क्यों, बिकॉज द पीपल कैन नॉट मूव, सो व्हाई कांट द डॉक्टर गो होम एंड असेस, तो वो 3 केसेस को ऐसे हुआ था। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, यू कैन इमेजिन द हिली टेरेन्स एंड वेरी रिमोट एरियाज, ट्राइबल एरियाज, कितनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये है कि उसमें आपको बोलेंगे कि आकर के आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लें। ये भी रूल में है कि सर्टिफिकेट को ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा जाएं, उसको बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है, आपके वहाँ डिलीवर किया जा सकता है। आज ऑनलाइन में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डाउनलोड भी किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको UDID कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट का एक स्कीम है। तो हर डिसेबल्ड व्यक्ति का एक UDID कार्ड होगा, जैसे आपका आधार कार्ड है, उसके हिसाब से आपको हर बेनिफिट सब मिल जाएंगे। अब इसको बनाने का क्या फ़ायदा है? अब जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आ गया, इसमें तीन लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% से कम भी है तो उसको डिसेबिलिटी अगर है, डॉक्टर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगता है कि ये डिसेबिलिटी की वजह से इनको फंक्शनल इतनी दिक्कत आएगी, तो उसको वो जांच करेंगे। विजन में मान लिया पहले एक ही आंख में कोई दिक्कत नहीं है बताया तो 30% होता था, तो विजन लॉस है या जो भी हो, लेस देन 40 भी है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगता है कि ये इसको फंक्शनल डिफिकल्टी होती है, तो देन उसको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी का डेफिनेशन ही है। मीन्स उसका डेफिनेशन मैं इधर नहीं कहूँगा, वो अलग विषय है, बट देन वही एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारे देश में कि जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमने एक सोशल वो जामा पहनाया है, न कि मेडिकल, कंप्लीटली मेडिकल नहीं है। तो दूसरा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मैडम ने बात भी आपने बताया था कि बेंचमार्क
40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी अगर परसेंटेज है तो उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलेंगे। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हर व्यक्ति को बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे? रिजर्वेशन इन एडमिशन मिलेगा, उनको कोई एजुकेशनल जो खासकर फाइनेंशियल बेनिफिट मैं कहूँगा जहाँ पे वो इन्वॉल्व है, जॉब में रिजर्वेशन है या लाइवलीहुड के इश्यूज है उसमें रिजर्वेशन है, और एक हाई सपोर्ट नीड है। अगर हाई सपोर्ट का परसेंटेज नहीं है, 40% वाला भी हाई सपोर्ट वाला हो सकता है, 100 वाला भी हाई सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो हाई सपोर्ट का मतलब है कि ऐसा डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति जिसको उस डिसेबिलिटी की वजह से ऐसी आवश्यकता है कोई सपोर्ट की, वो जो ह्यूमन सपोर्ट हो सकता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, वो कुछ रीजनेबल अकोमोडेशन का सपोर्ट हो सकता है, तो वो हाई सपोर्ट नीड को असेस करने के लिए एक अलग से उसका बोर्ड होता है। उस बोर्ड को वो फाइनेंशियल हाई सपोर्ट नीड को असेस करेगा, किस तरीके का हाई सपोर्ट नीड चाहिए और उसके हिसाब से कौन देगा, सरकार देगी या खुद देगा। ये हमारा सर्टिफिकेट बेनिफिट ये है। कोई ये बोले कि भाई, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे साहब 40% से कम डिसेबिलिटी है तो क्या फ़ायदा है, फिर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलना है, एजुकेशन में नहीं मिलना है, कोई और पेंशन नहीं मिलना है, या इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं। उसका बेनिफिट ये है कि हमारे एक्ट में, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में ये बोला है कि डिसेबिलिटी के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। सो 10% डिसेबिलिटी किसी को है, उसके आधार पर किसी को अगर ये हो रहा है, एपिलेप्सी वाला मैं बहुत सारा लड़ा जब ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैडम शेफाली गुलाटी को बताया, ऐसे फोर्सफुली बोली कि एपिलेप्सी शुड बी इंक्लूडेड एज ए डिसेबिलिटी। आज की डेट में भी उसमें कंफ्यूजन है, वो अलग से मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन जिस तरह से हमने इंटेलेक्चुअल ये इसको बोला है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बोला है, तो उसमें हम सर्टिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये समस्याएं आती हैं, कोई डिसेबल व्यक्ति है 40 नहीं है, तो ये हमें थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे उससे इसे काफ़ी गेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विश्वरूप चक्रवर्ती सर से कि कई बार ये बच्चे, इनके पेरेंट्स खास तौर से आते हैं हमारे पास, स्पेशली जिन्हें हम कोई जेनेटिक डायग्नोसिस दे देते हैं, तो इनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि उनके बच्चे को क्यों ये ऐसा हो गया, और उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी या उनके किसी नॉन फैमिली मेम्बर को नहीं थी, तो ये कैसे, तो ऐसे कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, हमें उन्हें क्या बताना चाहिए? ये क्वेश्चन इनफैक्ट इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर देखें तो इसमें जो साइंस है वो इतना इजी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा साइंस होता है जब हम किसी भी बीमारी के जेनेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को ये समझाएं कि क्यों इसको जेनेटिक बोला जा रहा है। तो एक ये जो बीमारियां हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पेरेंट्स सिर्फ करियर होते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स में लक्षण नहीं होते। बच्चे में जब दोनों पेरेंट्स से वही चीज़ आ जाती है तो बच्चे में वो चीज़ ज़्यादा होकर ज़्यादा नज़र आता है, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं उन बीमारियों को। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स में एबनॉर्मल होने के बावजूद भी हो सकता है बच्चे में वो चीज़ दिखे, पेरेंट्स में ना दिखे, क्योंकि अलग अलग जीन हर जनरेशन में अलग तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप एक इंडिविजुअल में हो जाता है, उसमें किसी फैमिली हिस्ट्री में या फैमिली में किसी में उसमें करियर स्टेट होने की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप बच्चे में वो एबनॉर्मलिटी आ जाता है, तो उससे भी हो सकता है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके इन बीमारियों में कि मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, कि जेनेटिक्स इज़ जस्ट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, उसके अलावा एनवायरनमेंट होते हैं, आर डाइट, अदरवाइज सराउंडिंग एवरीथिंग, द एंटीनेटल पीरियड दैट द मदर हैड गॉन थ्रू, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड देन दैट डिजीज़ मैनिफेस्ट्स। सो इसी तरह से हम जितने सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जा सके, पेरेंट्स को समझाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमें कारण पता लगता है, कारण पता लगता है तो हम उनको आगे बता सकते हैं कि ये बच्चा कैसे बिहेव करने वाला है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इलाज संभव है कि नहीं है, और दूसरा ये कि अगले प्रेगनेंसी में हम उनको अप्रोप्रिएटली काउंसिल कर सकते हैं ताकि एक और बच्चा उनको ऐसे डिसेबिलिटी के साथ नहीं हैंडल करना पड़े। तो थैंक यू। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई जेनेटिक शिकायत होगी तभी बच्चे को, कई और कारणों जैसे डॉक्टर विश्वरूप ने बताया उसके वजह से बच्चों को ये शिकायत हो सकती। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये मैडम यादव मैडम से है
कि ये जो प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं इन बच्चों के स्पेशल नीड्स पे, ये हम इनको कैसे टैकल करें, ये क्या हैं, क्या कॉमन इश्यूज हैं जो कि स्कूल में या घर पे पेरेंट्स को, टीचर्स को सामने आती हैं? ओके, है यहाँ पे है मैम? ओके, तो एक बार को करेंगे। अजय इज नॉट जॉइनिंग। हाँ, अभी ही इज जॉइनिंग इन 10 मिनट। तबीयत नहीं। तो जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, इवन क्योंकि कुछ लोग हम ट्रेडिशनल भी हैं, टेक्नोलॉजी तो ये कोविड ने हमें ज़्यादा सिखाई है। तो जैसे कि सवाल पूछा कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा इश्यूज क्या है कि हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। यानी बहुत सारी सीवियर डिसेबिलिटी हैं, वो तो हैं ही, बट इवन हम नॉर्मल बच्चों को भी नहीं समझ पाते हैं। और हम विशेषकर जब वो बच्चे एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो हम उनको प्रॉब्लम समझने शुरू कर देते हैं। तो जो भी बच्चे हैं हमारे, इवन स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको सबसे ज़्यादा है कि हम उनको ट्रस्ट करें। यानी जो वो बता रहे हैं, कोई भी डिसेबिलिटी बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसको वो ट्रस्ट करें, हम अप्रिशिएट करें। क्योंकि एज ए पेरेंट्स, जैसे अभी मॉर्निंग सेशन में था कि भाई कोई बात नहीं, हमारे दादा परदादा को भी यही प्रॉब्लम थी, तुम भी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रिशिएट करें कि जो प्रॉब्लम बता रहा है और उसको रिस्पेक्ट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बात है कि क्योंकि मैं जो प्रेजेंट करूँगा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पेरेंट्स या जो हमारे टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे हेट्रोजेनियस होते हैं। यानी एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं। घर में भी कुछ कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसमें बहुत है, दूसरा जो है हाइपर एक्टिव है, तीसरा जो है बहुत स्लो लर्नर है। तो इस तरीके की हेट्रोजेनिटी स्कूल में भी होगी और उसी तरीके की हेट्रोजेनिटी घरों में भी होगी। तो ये भी हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हर बच्चा अपनी तरफ से लर्न करता है। फिर ये है कि हमें ओपन और जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि स्कूल में टीजिंग बहुत है। अगर थोड़ा सा बच्चा विद डिसेबिलिटी है, सुन नहीं सकता है, या उसको विजन की प्रॉब्लम है, तो टीजिंग बहुत है। तो ये एक ज़रूरी है कि स्कूल में एक एम्बियंस ऐसा बनाया जाना चाहिए कि हर बच्चा हर एक की रिस्पेक्ट करे, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एनवायरनमेंट जॉयफुल होना चाहिए, स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पहले से ही कोई प्रजम्पशन अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं सीख सकता, तुम पीछे बैठ जाओ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम आगे आ जाओ। तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए और स्टिग्मेटाइज हमें नहीं करना चाहिए। फिर एम्पावर चिल्ड्रन थ्रू पार्टिसिपेटरी नॉन जजमेंटल, यानी जो एनसीईआरटी जो स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है, उसमें यही है कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाओ जो उसकी एबिलिटी है टू बिगिन विद। जैसे जो बच्चा कोई बहुत कम बोल सकता है लेकिन लिख बहुत अच्छा सकता है, तो उसको उसके राइटिंग में उसको इन्वॉल्व करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन एक्टिंग से भी बहुत सारा बात बता सकते हैं। तो उस तरीके से बच्चों को पार्टिसिपेशन में सबको उनकी एबिलिटी के हिसाब से पार्टिसिपेट करवाएं। नॉन जजमेंटल होना टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर अपने वैल्यूज़ और पेरेंट्स भी अपने वैल्यूज़ को उस पर बच्चों पर थोपते हैं कि हम तो ऐसे थे, जब हम थे तुम्हारी उम्र में तो हमने ये किया। और टीचर्स भी यही कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या समाज में ऐसा है। तो ये जो अप्रोच है कि हम अपने जजमेंट, अपने वैल्यूज़ को बच्चों पर नहीं डालें, ना कि जो दूसरे बच्चे हैं और विशेषकर जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं उन पर तो इस तरीके की चीज़ों का वजन बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। लाइफ स्किल्स को एनहांस करना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस बच्चों का वो एनहांस करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि जैसे कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं, आप क्या कर सकते हैं उससे स्टार्ट करें। यानी स्ट्रेंथ बेस्ड स्ट्रेटजी अगर हम अडॉप्ट करें कि आप ये मत सोचो कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये सोचो कि आप ये काम कर सकते हो,
सो व्हाई नॉट टू एनकरेज द चाइल्ड. सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ बेस्ड स्ट्रेटजी पेरेंट्स भी, अध्यापक भी और कम्युनिटी मेंबर्स भी जो भी बच्चों से डील करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए. फिर सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे मैडम ने, डॉक्टर्स ने पहले भी कहा था कि सेंसिटाइजेशन, लेकिन सेंसिटाइजेशन के साथ साथ हमारे टीचर्स की ओरिएंटेशन और पेरेंट्स की ओरिएंटेशन. अगर नई शिक्षा नीति को 2020 की शिक्षा नीति को देखें तो उसमें कम्युनिटी और पेरेंट्स का रोल बहुत अधिक है. वो कहते हैं कि स्कूल की बाउंड्रीज ओपन है. पहले स्कूल की बाउंड्रीज बंद थी, सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आ सकते थे. नहीं, अब आपको स्कूल की बाउंड्रीज को खोलना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने 10 बैगलेस डेज भी दे दिए हैं कि बच्चों को बाहर लेकर के जाओ, कम्युनिटी में लेकर के जाओ, कम्युनिटी से सीखो. तो वो एक बहुत ज़रूरी उन्होंने फोकस किया है. और एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो मैं आपको बता रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत के तहत किया गया है, जिसमें सभी बच्चों के लिए है. ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज हु हैव सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी हु आर इन द स्कूल सिस्टम, उन सब के लिए है. और ये पेरेंट्स को भी अवेयर करने की ज़रूरत है और इसमें टीचर्स को तो अवेयर होने की ज़रूरत है. इवन निष्ठा में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है. तो ये 11 थीम पर फोकस कर रहे हैं कि ग्रोइंग अप हेल्दी, कि हर बच्चा किस तरीके से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसकी हेल्दी रहे, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट सही रहे, मेंटली वो स्टेबल रहे. उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ हैं और किस तरीके से जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर किया जाए. इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सुसाइड है, अब इन्होंने कहा कि ट्रैफिकिंग में भी बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म बहुत अधिक करते हैं. और आजकल वन साइडेड लव बहुत है, यानी एक तरफ का जो आप लव कहते हैं, इनफैचुएशन, अट्रैक्शन और लव में अंतर नहीं समझते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. सो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि ब्रेन से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इन पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है. और ये मॉड्यूल क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के इसमें विषयों को इंक्लूड किया गया है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली से, पीयर से, कम्युनिटी से किस तरीके से हम अपने हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं. वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप पर फोकस है. जेंडर इक्वेलिटी की बात है, बल्कि फोकस ये किया गया कि लड़कों को भी एजुकेट करो, नॉट ओनली गर्ल्स को एम्पावर करो, बट यू एजुकेट बॉयज ऑल्सो दैट दे शुड रिस्पेक्ट द अदर ऑपोजिट सेक्स. न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन तो बहुत ज़रूरी है. आप सब बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और आपने देखा कि ये जो NFHS 5 है वो बता रहा है कि 57% गर्ल्स आर एनीमिक, जो कि NFHS 4 में 53% था, वो बढ़ कर के ज़्यादा हो गया. वो इसलिए भी है कि ज़ीरो फिगर, कि लड़कियां ज़ीरो फिगर है या खाना नहीं है, स्मार्ट बने रहना है, लेकिन न्यूट्रिशन सही नहीं लेना है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है, जैसे मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. तो उसके उन सब पर इसमें चर्चा की गई कि न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. और सैनिटेशन डेफिनेटली कोविड-19 ने तो बता ही दिया कि जितने सैनिटेशन पर हम ध्यान देंगे, दैट इज़ फॉर एवरीवन, इवन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस मिसयूज ऑल्सो इज़ वन ऑफ द इशू, कि जो टबैको अभी एम्स ने और टबैको पर शायद एक ग्लोबल टबैको पर रिपोर्ट आई है, जिसमें पाया गया कि 10 to 14, am I taking more time? I'll finish within 5 minutes. 10 to 14 के बच्चे भी टबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. अब हुक्का बार शुरू हो गया है, यानी आप जितना बच्चों को करते हैं उतना और फैशन में नई चीज़ आ जाती है. तो वो एक टबैको कंजम्पशन, मिस यूज, सब्सटेंस डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं खांसी ज़ुकाम के लिए उसका मिस यूज़ करते हैं, वाइटनर का यूज़ करते हैं. दिल्ली में तो वाइटनर और जो इरेजर था इंक, उसको बैन कर दिया क्योंकि बच्चों ने उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है. बच्चे पाया गया है कि ब्रेड पर आयोडेक्स लगा करके खाते हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि इस आयुष्मान भारत के इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है. हेल्दी लाइफस्टाइल मॉर्निंग में भी बताया, जिसमें कि 60 मिनट्स कम से कम हर बच्चा 60 मिनट्स एक्सरसाइजेस करे, वॉक ही करे और कुछ नहीं तो. और NCF तो ये कह रहा है कि हर बच्चे को हर कोई ना कोई गेम में इन्वॉल्व जरूर करे. और योगा तो अब आजकल काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गया है, इवन हरियाणा जैसी स्टेट ने तो योगा को अपने करिकुलम में ही डाल लिया है. सो हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV प्रिवेंशन, यानी आज भी 1.7 मिलियन लोग HIV से ग्रसित हैं, और ये जब शुरू हुआ था तो पता लगा था कि एडोलेसेंट्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे क्योंकि दे वर टेकिंग रिस्की बिहेवियर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात, क्योंकि एक तरफ से आपकी पॉपुलेशन, आप कहते हैं फर्टिलिटी हाई, हालांकि अब तो डाटा शो कर रहा है कि TFR काफ़ी नीचे आ रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है, लेकिन दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। सो बिकॉज की मेंस्ट्रुएशन के दौरान अदरवाइज पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो मेंस्ट्रुएशन के समय कम से कम पैड का यूज़ करें या क्लीन क्लोथ यूज़ करें। लड़कियों को इस बारे में जानकारी जब उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो उससे पहले ही देना बहुत आवश्यक है। सेफ्टी सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज तो बहुत ज़्यादा है, जैसे स्टॉकिंग है, पीछा करते हैं, या बुलिंग है, या ईव टीजिंग है, या जैसे इन्होंने कहा कि फॉल होता है, फॉल सिर्फ सीढ़ियों से नहीं होता है, धक्का मार देते हैं स्टूडेंट्स स्कूलों में। तो ये बहुत सारे सेफ्टी के इश्यूज हैं, इंजरीज के इश्यूज हैं, जिसके बारे में बच्चों से बात की गई है। और प्रमोशन ऑफ सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट, गैजेट्स एंड मीडिया, तो एक कैसे मीडिया का तो आपने देखा है, और अभी कल ही न्यूज़ में देखा था कि आप एक और इशू नया आ गया है कि जो आप फेसबुक पे डालते हैं कितने लाइक्स आ रहे हैं, अगर लाइक्स आपके कम हो गए तब भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरे लाइक्स पहले बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब मेरे लाइक्स जो है वो कम हो गए। तो नए नए इश्यूज है, 2 से 3 घंटे बच्चे वो कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस स्कूल हेल्थ में काम किया गया है, और हम सभी स्टेट्स के 36 की 36 स्टेट्स के टीचर्स की ट्रेनिंग में अभी आयुष्मान भारत के तहत लगे हुए हैं। पहले रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, निष्ठा में भी इसको डाला हुआ है, और इन सारे मॉड्यूल्स पर फिल्म भी बनी हुई है, वीडियोस, जो NCERT की वेबसाइट पर है, जिसको लिया जा सकता है। इस प्रोग्राम का सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें छोटे छोटे केस स्टडीज़ हैं, उन केस स्टडीज़ के भी वीडियो है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं, विच इंक्लूड इवन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको इसमें वीव इन किया हुआ है। ये कोर लाइफ स्किल्स पर फोकस है। मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगी क्योंकि आप सब बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि NCERT ने, बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन NCERT ने इस पर काफ़ी काम किया है। ई पाठशाला बनाया है, जो कि एक तरह से ई पाठशाला का ऐप है, यानी जो बच्चे, जिस तरीके के भी बच्चे हों, उनको अगर वो यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को, तो रीड ए लाउड बुक भी है उसमें, ई पाठशाला में, कि आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। सो दो चिल्ड्रन हु आर हैविंग हियरिंग इश्यूज, दे कैन ऑन मोबाइल ऐप दे कैन लिसन टू दैट, और उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और NCERT की किताबें तो ज़्यादातर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक तरह से अडॉप्ट कर रही हैं। फिर बरखा सीरीज में छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे पॉलिसी कह रही है कि ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल से पहले ही अगर शुरू हो जाता है, और इस तरह के की अगर मटेरियल मिल जाता है जिसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, तो इसकी एक कॉमिक के रूप में किताब बनाई गई है, जिसमें अगर एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा साथ बैठा है और दूसरा बच्चा जो है ब्लाइंड बच्चा बैठा है, तो ब्लाइंड वाले के पास भी वही किताब है और नॉर्मल के पास भी वही किताब है, और ब्लाइंड वाला ब्रेल की तरह वो पढ़ेगा और नॉर्मल वाला प्रिंट से पढ़ेगा, तो उसी में प्रिंट है और उसी में ब्रेल है। इससे दोनों को, कोई जो इक्विटी की आप सर बात कर रहे थे, वो इक्विटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि बोथ हैव द सेम बुक। एक तो वो भी एम्पैथी लेगा कि हाउ ही इज रीडिंग, और दूसरा ये कि उसको भी लगेगा कि मेरी किताब और इसकी किताब में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक कई लेवल के रूप में इसको बनाया गया है, जिसमें बर्ड्स, एनिमल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गेम्स, ये क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बनाया गया है, और ये डिजिटल वर्जन भी इसका तैयार है और इसका ब्रोशर भी तैयार है। तो ये एक दिया गया है। फिर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन इंडियन साइन लैंग्वेजेस में भी NCERT ने बनाया, जिसका वीडियोस है क्लास 1 टू क्लास 5, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। वो फिलिप बुक भी है और वीडियो प्रोग्राम्स भी इसमें है। डिक्शनरी भी बनाई है कि डिक्शनरी के रूप में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सेसिबिलिटी कंसर्न इन NCERT टेक्स्ट बुक्स, यानी अगर एज ए टीचर आपको क्लास, वो अभी अपर प्राइमरी पर है, कि क्लास 6 के बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है, लेकिन वही NCERT की किताब है और उसमें आपकी क्लास में स्पेशल चिल्ड्रन है, तो उस टेक्स्ट को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जो बच्चा आपकी को सुन नहीं रहा है, उसको आप राउंड में दे सकते हैं या इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये एक मटेरियल है। 5 से कॉमिक बुक भी बनाई गई है, और
तो ये बहुत सारे पीएम विद्या पर बहुत सारे हैं। और एक सबसे लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि इवन हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए टेक्टाइल मैप बनाए गए हैं, जिससे कि क्योंकि अभी तक हम छोटे बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते थे, जैसे डायग्राम्स हैं उनको भी एक टेक्टाइल के रूप में बनाया गया है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है और एनआरओ यहाँ पर अवेलेबल है। और सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Dr. Ajay, thank you so much. Sorry, things were going late. Please, on. Dr. Ajay? Welcome, Dr. Ajay. So there is a question for you that can a child with intellectual disability have placement in a normal school? Thank you, sir. This is a very relevant and contextual questions for all stakeholders, especially for the school education under RPWD Act and the new education policy. This is a challenge as well as the comprehensive program under inclusive education we are providing for children with intellectual disability. Intellectual disabilities, as we all know, intellectual disability has 4 major categories: severe, profound, mild, and moderate. So below the 35 IQ, we consider as a severe and profound case. So for these, as in the earlier sessions also from Government of India, we all got awareness about the home-based education for these children. In Directorate of Education under Samagra Shiksha, Delhi, we are providing home-based education to severe and profound children with intellectual disability. And for even for 1 hour, if with parents, we are providing in school access to these children under the supervision of parents and SET for their inclusive exposure in the regular schools. For the children with moderate and mild, we are providing for moderate categories. We are providing especially pre-vocational skill-based educational program for children with moderate category ID children. And for the mild also, we have each child for IEP and the all CBSE relaxations are being provided so that children with mild disabilities can go the best maximum level of the potential under inclusive education. So these children of especially in the intellectual disability category are being provided inclusive education under the different cascade of services under Directorate of Education in government schools as well as other managements under inclusive education regular schools. Thank you. Thank you, Dr. Ajay. मैं इसमें ऐड कर दूं पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन के लिए दिल्ली हमारे एक्ट में जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में जो है वो किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, आपको वो सब रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। और एक अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने बोला कि स्पेशल एजुकेटर एक्सेट्रा ये होगा। और इनफैक्ट मेरा ऑर्डर एक था एज स्टेट कमिश्नर, उन्होंने बोला पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट करो। दैट इज वन। और दूसरा ये है कि जो आप एडमिशन स्कूल में देंगे वो सब फैसिलिटीज़ तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा किसी भी बच्चे ये दिल्ली में अलग से इन एडिशन टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 3% सीटें हर प्राइवेट स्कूल में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व है आउट ऑफ दैट 25%। सो आज की डेट में मेरे हिसाब से कोई भी डिसेबल्ड बच्चा दिल्ली में एडमिशन चाहे किसी भी स्कूल में शायद वो मिल जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से यानी 18 साल तक उसको एजुकेशन फ्री मिलेगी, ये भी है। बाकी बच्चों को तो 6 से 14 में मिलेगी, पर इनको 18 तक फ्री मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर ये आप 1-2 सेंटेंसेस अगर इस पे बोलना चाहें कि पेरेंट्स को स्पेसिफिकली क्या चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं। दरियाल सर। पेरेंट्स को जो मेरे संज्ञान में आया है या जो मैं देखता हूँ वो सबसे बड़ी बात तो एक इक्विटी की होती है।
मैं उनकी बात करूंगा जो 70% लोग गांव में हैं या छोटे छोटे शहरों में हैं, उन बच्चों की बात, उन पेरेंट्स की बात करूंगा। वहाँ एक वो चैलेंज दोनों के लिए, स्कूल और उसके लिए, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। से स्पेशल एजुकेटर हम बात कर रहे हैं, अभी हम जो फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन मैंने सुना था मिनिस्ट्री से या यूपी का, वो बता रहे थे कि जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में जो 3 स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है, एक ब्लॉक इतना कितना बड़ा होता है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं पिथौरागढ़, तो वहाँ पे इतना डिस्टेंस होता है, तो एक टीचर, 3 टीचर संभव ही नहीं है। पहले तो 3 टीचर कहीं भी बहुत मुश्किल से है, और दूसरी बात ये संभव नहीं है। मैं इन क्लियर शब्द में ये बोलूँगा कि जो वो सिस्टम हमारा था आइटिनरेंट टीचर का, वो एक्चुअली हैज़ नॉट सक्सीडेड। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्या थी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर आपका ब्लॉक में है और मैं किसी गांव में रहता हूँ, वहाँ से ब्लॉक की दूरी 10 किलोमीटर भी हो सकती, 10 मील भी हो सकती है, और वो चल के बच्चे को उधर ले जाना या टीचर को मिलना एक ही। दूसरा, पेरेंट्स की समस्या ये होती है कि वो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का जो टीचर मेरे मेन स्ट्रीम स्कूल में, मैं नॉर्मल नहीं कहता, मेन स्ट्रीम कहना चाहता हूँ उसको, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में जो मेरा बच्चा डिसेबिलिटी वाला, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जो भी डिसेबिलिटी वाला जा रहा है, उसको मेरे टीचर जो मेन स्ट्रीम टीचर्स हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक ये समस्या है। और वो पेरेंट्स की एक डिलेमा है कि वो उनका बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। एक तो ये चैलेंजेस हैं। दूसरा, एडमिशन के लिए अक्सर दिल्ली जैसे शहर में भी ये एडमिशन का एक प्रॉब्लम है कि चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अक्सर स्कूल्स मना कर देते हैं, लिख के नहीं देते, लेकिन ये बोलते हैं कि साहब देखिए हमारे स्कूल में आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, ये हमारे पास स्पेशल एजुकेटर नहीं है, हमारे पास ये टीचिंग लर्निंग एड्स नहीं है, हमारे पास रैंप नहीं बन सकता। इतनी छोटी भी बात में एक ये चैलेंज उनको बहुत ये है। स्पेशल नीड भी मैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेशल नीड किसी की भी हो सकती है ना, कोई नहीं है। मैं डिसेबिलिटी की बात करता हूँ, स्पेशल नीड में अगर मैं कहूँगा तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर हो सकता है, आई मीन इंटरसेक्शनैलिटी जो होती है वो हो सकता है। बट पेरेंट्स को सबसे बड़ी समस्या आता है एडमिशन की। दूसरी समस्या आती है उन पेरेंट्स को जो खुद पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ये पता नहीं है, उनको इन बच्चों को, जैसे मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की बात करूं, तो जो बच्चों को हम एडमिट करते हैं, चाहे वो डीपीएस है चाहे या सरकारी स्कूल है, उनमें हम एडमिट करते हैं, और आफ्टरनून में हमारे स्पेशल एजुकेटर की टीम है, उनको हर बच्चे को सब्जेक्ट के भी है उसके भी है, उनको पढ़ाते हैं, तब जाके कोई एमआईटी में हमारे ब्लाइंड बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। तो वो हम इमेजिन करिए दिल्ली और एक रूरल एरिया। तो गवर्नमेंट से अभी मैं कल यूएन स्कैप की एक मीटिंग में ये जो डेकेड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2013 टू 2022 था, अब अगला उसकी बात कर रहे हैं। यही चीज़ मैंने कल उधर बोला, जितने भी हमारा क्या बोलते हैं एशियन एंड पैसिफिक रीजन में जितनी कंट्रीज़ हैं, उन सब की समस्या ये है, एक्सेप्ट फॉर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और सभी देश गरीब देश हैं। तो ये फोकस गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, theory and practical, what is the difference? There is so much of huge gap between what we have in policy and what we have on ground. तो ये बहुत पेरेंट्स की समस्या। मैं जाऊं, आप कल चले जाए किसी बच्चे को लेकर के दिल्ली के किसी स्कूल में चले जाए, यू विल हैव सो मच ऑफ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स दिल्ली में इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट देन आप फरीदाबाद जाइए, आप गाजियाबाद जाइए, क्या ये संभव है? वेरी वैलिड सर, वेरी वैलिड। सर ने जो अभी खास के रिसोर्स सेंटर्स से रिगार्डिंग जो अभी बातें सर ने कही, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले सर 4 था, अब हमारा 8 रिसोर्स सेंटर स्टार्ट किया है। और चूँकि हर गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है, और अभी जैसे पेरेंट्स के लिए खास के चिल्ड्रन विथ आईडी, एएसडी, सीपी, इन पेरेंट्स का एक सबसे मेजर चैलेंज ये भी है, जो प्रॉब्लम है कि इन बच्चों का थेरेपी जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो इनके लिए अंडर जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी प्रोविजन है रिसोर्स सेंटर का, लेकिन अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्ट किया है, और वो ओवरऑल 31 हर जोन में स्टार्ट होना है। विद इन 5 किलोमीटर रिसोर्स सेंटर में
हर बच्चे को जिनको ज़रूरत है उनको फ्री थेरेपी सर्विसेज मिलेंगे। और इसके बाद जो है इन बच्चों को ले जाने आने के लिए भी स्पेशल एजुकेशन टीचर दिल्ली गवर्नमेंट का फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और फिर बच्चों का फॉलोअप स्कूल लेवल में अंडर इंक्लूसिव अंडर इन द स्कूल इन द रिसोर्स रूम फॉलोअप होता है, जिससे बच्चों का जो थेरेपिटिकल नीड था, जिसके लिए अभी पेरेंट्स बहुत ही खास के गवर्नमेंट स्कूल का वो बच्चे को मिलता ही नहीं था, वो अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हर बच्चे को मिल रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ। तो ये एक बहुत ही चैलेंज था और जिनको कि अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें हम होम बेस्ड एजुकेशन के बच्चों को भी और एमसीडी के बच्चों को धीरे धीरे एक्सेसिबल करेंगे, सो दैट चिल्ड्रन जिनको भी थेरेपिटिकल नीड जरूरी है वहाँ फुल टाइम ओटी, पीटी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट और इसके बाद एक हमारा रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो बच्चे को अपनी सर्विसेज देते हैं। Thank you, Dr. Ajay. It was wonderful. I be for paucity of time. Next questions में I will just summarize few points and ask the experts to add on to that. ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस एस्पेक्ट में देखते नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर जो बैठे रहते हैं वो बस पेशेंट की प्रॉब्लम देखते हैं। हमें होलिस्टिकली सब कुछ एक तो देखना है और उसको देखना है अलॉन्ग विद एम्पैथी एंड यू हैव टू सी उसकी हर लाइफ की एक डिग्निटी होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड जो हमारा राइट है इस दुनिया में, इस देश में, वो सब बच्चों का और सब इंसानों का है। अगर उसको स्पेशल नीड्स है तो एक होती है इक्वालिटी और इक्विटी। वी डोंट वांट इक्वालिटी फॉर देम, वी वांट इक्विटी, ताकि उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दो ताकि वो ज़्यादा ऊपर आके बढ़े। तो उनको थोड़ा सपोर्ट देना है। तो यहाँ इक्वालिटी का रोल नहीं, इक्विटी का है, विद डिग्निटी ऑफ लाइफ टू बी केप्ट इन माइंड। And a central aspect of inclusion is to remove the special labels and breaking stigma. I think ये बहुत important है। तो destigmatization के लिए बहुत important है। सर आप बताइए कि because I think it is very important that media and all has to do, because जो बच्चों के parents जिनके typically developing होते हैं उनको लगता है कि भैया not me phenomena, ये परेशानी दूसरे की, let them झेलो। हाँ, और वो लगता है हमें तो कुछ हो नहीं सकता। पर ऐसा है कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे को स्पेशल नीड्स हो सकती है। ये तो सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ना आपको। अगर सब कुछ सही है दूसरे के बारे में और उसकी गलती नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है ना, उसको प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम बच्चे की या उसके माँ बाप की, किसी की कोई गलती नहीं है, उनका भी राइट है विद डिग्निटी रहने का। तो ये डिस्टिग्मेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि जो स्टिग्मा अटैच है, क्यों अटैच है स्टिग्मा। जो ये लोग मॉल्स में जाते हैं, बाकी लोग नीचे क्यों देखते हैं, उनको देखना क्यों चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे देखेंगे नीचे रूप में कि थोड़ा थोड़ा माँ बाप रोने लग जाते हैं कि ऐसे देख रहे हैं। तो इट इज़ नॉट राइट ना, किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मजाक नहीं बनाना और ये नहीं सोचना कि हमें नहीं हो सकता। नहीं सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड सर? मेरे ख्याल से इस जो आपने बताया प्रोफेसर शेफाली, ये बहुत ही ट्रू है। ऑन रियलिटी में हमें सब जगह देखने को मिलता है और वो चाहे किसी भी लेवल में हो। मैं एक छोटा सा एक लाइन में उदाहरण देता हूँ। मुझे एक मध्य प्रदेश में दिल्ली के रहने वाले जज हैं, उन्होंने मुझे एक बार टेलीफोन किया था कि उनकी बहन डॉक्टर हैं और उनको उनके बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में, बहुत ही माने जाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन और उसको रीडिंग राइटिंग मटेरियल या जो भी रिसोर्स है, शेडो टीचर की आवश्यकता, ये बोलते हैं। तो ये समस्या इवन जजेस, यू कैन इमेजिन, आज से काफ़ी साल पहले हाई कोर्ट के जज साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने डेफ बच्चे को का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, वो लिख के मुझे दिया था। एक ही पैनल में ऐसे बैठे थे। तो ये समस्याएं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इन प्रैक्टिकल चीज़ों को हम समझें। सो कहीं भी आप जाएं, चाहे वो गरीब, मैंने बोला गांव बोला, या फिर दिल्ली में, ये समस्याएं जरूर आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट में अगर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी उल्लंघन होता है हमारे एक्ट में प्रावधान का, ये जो पढ़ लें, तो उसके लिए पेनल्टीज़ का प्रावधान रखा गया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति को पेनल्टी लगा के ही ठीक हो सकता है। वो आपने जैसे बोला, समझना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, वो बहुत आवश्यकता है। बिना उसके कुछ भी नहीं। ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। एम्स जैसे जो संस्थान है वो ऐसे प्रोग्राम्स करें, हटके भी, केवल इलाज की ही बात न करें, इन चीज़ों की, ये बहुत बड़ी बात पर है। सर आप इतने सालों से हमारे पास आए रहे हैं, 15-20 साल से, और जो हमारे पेशेंट जिनको स्कूल में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं उनको बोलता हूँ मेल लिखो, मैं आपको भेजती थी, तो आप उनके स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लेते थे। चुप रहना नहीं है, अदर वे राउंड आल्सो, नहीं नहीं, लाइक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहीं नहीं बन रहा है दिल्ली में, तो वो हम इनके ऊपर डाल देते हैं। नहीं सर, पर ओनली नहीं, उनको एक ही मैसेज ही मेरे को बोलना है
कि अगर कोई आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो चुप नहीं बैठना है, कोई आपके पास नहीं आएगा, जस्ट राइज एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट. इट इज योर राइट. किसी से कोई किसी ने आप पे एहसान नहीं कर रहा, इट इज योर राइट. ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यही एक पैराडाइम से. एक और चीज मैं बोलूंगा, क्यों हो रहा है, क्यों होता है, हमने एक हर जगह क्यों हो रहा है. एक जो बोलते हैं ना आजकल, पहले हमने उसके बारे में सोचा नहीं, एबलिज्म, एबलिस्ट अप्रोच. हमारी अप्रोच, एटीट्यूड हमारा क्या है, एबलिस्ट. हम एक जैसे मुझको देख करके, या एक बच्चा जो जिसका कोई ये मानते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है, तो उसका एक हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं. ये स्टैंडर्ड है, हर बच्चे का यही स्टैंडर्ड होना चाहिए. इससे नीचे जो है तो वो गड़बड़ है, वो यूजलेस है. सो ये एबलिस्ट जो हमारे एटीट्यूड है, ये भी हमारी चर्चा में नहीं आया, इसको हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है. हाउ टू. नहीं सर, वो जब भी मैं न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से बात करती हूँ, मेरी एक स्लाइड होती है कैपेबिलिटी अप्रोच. मतलब मेडिकल मॉडल से उठ के हमारे को कैपेबिलिटी करना है कि बच्चा क्या कर सकता है. और एक मैसेज ये और है कि एक बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो क्यों है, एक मेडिकल कंडीशन की वजह से, प्लस आसपास का जो है अगर सपोर्टिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट कैन बी बोथ फिजिकल, जैसे अगर रैंप नहीं बना, वो सब, वो सारी चीज़ों का, प्लस ह्यूमन बिहेवियर. आप समझ रहे हो, अगर कोई आपको नीचा देख रहा है, वो बंदा अपने पोटेंशियल तक कभी रोज पहुंचेगा नहीं. तो डिसेबिलिटी इसलिए बन रही है. तो डिसेबिलिटी के लिए मेडिकल प्रॉब्लम को तो हल करना है, प्लस साथ में इन्वायरमेंट और लोगों के नजरियों को भी बदलना है. मैं एक रिक्वेस्ट सबको करूंगा. बंद हो गया क्या? नहीं सर, वो बंद नहीं, वो मेरी स्लाइड नेक्स्ट थी. सभी लोगों को, जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे, जो डॉक्टर्स, हम सब लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज जरूर पढ़िएगा डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. जो मैडम ने अभी बताया कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का डेफिनेशन जरूर पढ़ें. ये मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, इसलिए मैं डिसेबल्ड हो जाता हूँ. सर, और आप यू कैन कंटिन्यू टू स्टे ऑन व्हेन वी गो टू द लास्ट पैनल सर, बिकॉज अगर वो उसमें कुछ भी आपको कमेंट देने, यू कैन कंटिन्यू. विल फिनिश ऑफ द नेक्स्ट पैनल. डॉक्टर गगन हंस बहुत देर से ऑनलाइन है एंड डॉक्टर अजय भी है. तो हाँ मैम, तो आई थिंक वी शिक्षा नीति है, उसने ये कहा है कि कैच देम यंग, यानी जो एनवायरनमेंट आप बिल्ड कर रहे हैं तो प्री प्राइमरी एजुकेशन से ही शुरू करिए ना. उन बच्चों के एटीट्यूड को, उन बच्चों की सोच को बदलने के लिए. मुझसे ज्यादा अब हो गया, फर्स्ट 1000 डेज हो गया अब. मतलब यू नहीं, वो तो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी है कि जीरो से लेकर के करिकुलम बनाओ फ्रॉम द 1000 डेज. तो प्रेगनेंसी भी है. हाँ, तो उसमें तो बेसिकली ये है कि बच्चे जो हमारे यंग होने जा रहे हैं, उनको पहले से ही एनवायरनमेंट इस तरीके का हो, दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस एनीवन. थैंक यू सो मच. गौतम इधर आओ. So I think thank you very much. मैम वी कैन कंटिन्यू. सर आप रुक जाएंगे, नेक्स्ट पैनल. सर डॉक्टर गौतम इधर आ जाइए, डॉक्टर पवन, डॉक्टर संजीदा, डॉक्टर गगन हंस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन योर ऑनलाइन. डॉक्टर गगन, डॉक्टर गगन, अच्छा, अनम्यूट करिए डॉक्टर गगन. डॉक्टर अजय आप हैं ऑनलाइन? डॉक्टर Yes, अजय, ma'am. Yes. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर द पेशेंस. डॉक्टर गौतम इधर आइए मेरे साथ. डॉक्टर अजय आप हैं, डॉक्टर गगन हैं, डॉक्टर पवन और डॉक्टर संजीदा. नहीं सर, यू कैन स्टे ऑन विद कमेंट्स. थैंक यू सो मच. मैम एक मिनट, 2 मिनट बाहर स्नैक्स. एक सेकंड, ये पहला क्वेश्चन बैठती हूँ. मैं बैठ ओके बैठ. 2 मिनट, 15 मिनट में खत्म ही कर, खत्म कर क्लिनिक पे 15 मिनट. So the first question. सो ये क्वेश्चन डॉक्टर पवन के लिए है. तो इसमें एक सेकंड डॉक्टर पवन, रैपिड फायर. सॉरी, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो शुरू में ज़्यादा बोल के एंड वाले को जल्दी बोला ना, इज़ नॉट राइट. पर हमारा ना एक्चुअली क्लिनिक है आफ्टरनून में, वो 2 बजे से शुरू हो रहा है. 1:30 बजे से हमने आधे लोगों को भेज दिया. ऑटिज्म क्लिनिक और न्यूरो क्लिनिक है, तो इसीलिए कर रहे हैं. तो अभी सारा सवालों को करेंगे, लेकिन रैपिड फायर से करेंगे. हाँ सॉरी. एंड डॉक्टर गगन मैम, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस. तुम जल्दी बोलो, वो बोलेंगे. थैंक यू डॉक्टर गौतम. ये बड़ा व्यवहारिक समस्या है कि जो बच्चे आज खाना खाना है या बच्चे से कुछ भी काम करवाना है, तो एक उसको मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम का लालच देना होता है, उसके बाद ही बच्चा वो काम करता है. और ये लालच देते देते एक बार बच्चा को एडिक्ट हो जाता है. तो इस वाले केस में बच्चा जब तभी खाना खाएगा जब उसको वीडियो मिलेगा या मोबाइल मिलेगा, अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाने वाला है. सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ हम बोल सकते हैं कि छोटे बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन को यूज करने दें या ना करने दें, क्या बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे यूज ना करें मोबाइल?
आज के समय में मोबाइल यूज नहीं करना असंभव है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइफ का मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन हो गया है। स्कूलिंग भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट हमारी अब स्क्रीन पर है। इसको अलग नहीं कर सकते, बस इसको कंट्रोल और पॉजिटिव कर सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं? कंसेंसस जो है स्क्रीन टाइम के लिए कि 2 साल के छोटे बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, एक्सेप्ट वो अपनी फैमिली जो डिस्टेंस रिलेटिव्स जो हैं उनसे इंटरेक्शन अगर करना हो, उनसे वो मोबाइल पर या जो आपके अदर ऐप्स हैं उनके थ्रू वीडियो कॉल कर सकता है। 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो उन बच्चों को हम 1 घंटे के लिए स्क्रीन टाइम अलाउ कर सकते हैं, चाहे वो टीवी है, यूट्यूब है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं। बट साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चा उस डिवाइस को स्क्रीन टाइम को देखें तो पेरेंट्स साथ में रहें, को व्यूइंग करें कि बच्चा क्या देख रहा है, और उसमें जो टीचिंग पॉइंट्स आते हैं बीच बीच में जो इमोशंस आते हैं, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बच्चे को सिखा सकते हैं। वो चीज़ें हम वहाँ बता सकते हैं कि देखिए इसने ये बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे बात हो रही थी, ये देखो ये मिकी माउस हेलमेट पहन के साइकिल चला रहा है। तो पॉजिटिव बिहेवियर्स को हम रिइंफोर्स कर सकते हैं बच्चे साथ में। 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं इनमें लिमिटेशन ऑफ स्क्रीन टाइम नहीं है, बट हमें ये देखना है कि जो स्क्रीन बच्चा यूज कर रहा है वो पॉजिटिव स्क्रीन हो। पॉजिटिव स्क्रीन का मतलब ये है कि बच्चे स्क्रीन को यूज करे कम्युनिकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, स्कूलिंग के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए। अगर इन चीज़ों के लिए जब हम स्क्रीन यूज करते हैं तो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम बोलते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कुछ भी हो सकता है, या कोई भी स्क्रीन टाइम जो बच्चे के लाइफ स्टाइल को, रूटीन्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो स्क्रीन टाइम बैड नहीं है। यानी कि हर बच्चे जो 5 साल से बड़ा है वो 8 से 9 घंटे का नींद अपना ले, अपने स्कूलिंग करें, एक्सरसाइज के लिए 1 घंटे का समय निकाले, पेरेंट्स एंड फैमिली के साथ इंटरेक्शंस के लिए समय निकाले, अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकाले, और अपने फूड के लिए, मील्स के लिए समय निकालें। सेकंड कि जब हम ये टाइम्स तो है ही, टाइम के साथ हमें ये भी देखना है कि कब हमें स्क्रीन टाइम अलाउ नहीं करना है। खाना खाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त अवॉइड करना है कि साइकिलिंग के वक्त, आप बच्चा बाइक चला रहा है, कोई बड़ा बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है, साइकिलिंग के वक्त वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करे, ये हमें उसको बोलना है। फिर कुछ घर में जोन्स बनाने, जिसको बोलते हैं डिजिटल फ्री जोन, जहाँ मोबाइल या स्क्रीन या टीवी या लैपटॉप कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी डाइनिंग टेबल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, पूजा की जगह है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, बेडरूम में कभी भी टीवी या लैपटॉप या मोबाइल नहीं होना चाहिए। सोने के 1 घंटे पहले सारे स्क्रीन्स ऑफ हो जानी चाहिए, क्योंकि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है वो बच्चे के मेलेटोनिन के सिक्रेशन को कम कर देती है, तो बच्चे की नींद खराब होती है, उससे उसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो सकता है। सो हमें कंटेंट भी देखना है, टोटल टाइम भी देखना है, किस समय उपयोग नहीं करना है वो भी देखना है, और जब बच्चा यूज करेगा तो हम कैसे उसके साथ इन्वॉल्व होकर उसको व्यूइंग करें, या गेम खेला तो हम बच्चे के साथ गेम खुद भी खेलें और देखें कि कैसे हम उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली बच्चे के ऊपर मीडिया के अच्छे इफेक्ट भी हैं और बुरे इफेक्ट भी हैं, दोनों इफेक्ट हैं। अच्छे इफेक्ट हैं कि बच्चे की लर्निंग बढ़ती है, उसका नॉलेज बढ़ता है, उसका इंटरेक्शन सोसाइटी से बढ़ता है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एडिक्शंस हो सकता है मीडिया से उसको, अगर वो ज़्यादा समय देगा तो वो जो वेस्ट साइट्स हैं वहाँ जा सकता है, साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है, और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स को भी एक्सपोज हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर पवन। सो हमारा अगला सवाल डॉक्टर गगन हंस के लिए है। तो ये एक 9 साल का बच्चा है जिसको उसके माता पिता अस्पताल लेके आते हैं, और वो बताते हैं कि ये बहुत कुछ दिनों से अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है और रात को ढंग से सोता नहीं है। हालांकि उसको कोई बुखार तो है नहीं, पर वो कुछ सफ़ेद पाउडर स्निफ करता है। तो इस विषय में आपके विचार व्यक्त करें डॉक्टर गगन हंस सर। डॉक्टर गगन सर। डॉक्टर गगन है। डॉक्टर गगन, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर गगन, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू हैव बीन पेशेंट। डॉक्टर गगन, आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? हाँ, now you are audible, and I'm really grateful that you joined and kept the patience. Really, thank you. Actually क्या है,
आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन एबल टू मैनेज द टाइम, आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं ना घंटी रखने वाली हूँ, है ना, आई एम गोइंग टू जस्ट कीप 1.5 मिनट एंड घंटी एंड इट स्टॉप्स देयर, जिसने जितना कम्युनिकेट किया दे दिया, अदरवाइज जो एंड वालों को लेट होता है इट्स नॉट राइट, है ना, तो मैं ऐसे ही करूँगी शुरू से, मतलब हर एक को टाइम देके ना उसको ऐसे वही करना पड़ेगा, सीखते हैं प्रॉब्लम, नहीं सर? थैंक यू डॉक्टर गगन, प्लीज गो अहेड प्लीज। तो जो ये समस्या यहाँ पे मतलब इस प्रश्न में उठाई गई है कि मतलब बच्चे में ऐसा कुछ पाउडर का इस्तेमाल देखा गया है, तो ये प्रॉब्लम अर्बन रूरल एरियाज दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कुछ खास डिवीजन होगा कि रूरल एरियाज में कम पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों में ये समस्या काफ़ी कॉमन है और इसके कुछ खास मतलब कारण हो सकते हैं। इन कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स में ये इस तरह का नशे का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा में उनमें चांसेस रहते हैं कि ऐसा होगा। जो बच्चे अडल्ट सुपरविजन के अंडर नहीं रहते हैं, मतलब जिनको सारा टाइम जो है वो फ्री जो मतलब रहते हैं, किसी प्रकार का सुपरविजन उन पे नहीं रह जाता है, पेरेंट्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, मतलब पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल कोई रोल मॉडल का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं या किसी तरह की अटैचमेंट वो बच्चों के साथ शो नहीं करते हैं, स्कूल से फेलियर है, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया है, कमिटमेंट नहीं है स्कूल के प्रति, और साथ में ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा नशे का इस्तेमाल करते हैं या मतलब बच्चों में कुछ अग्रेसिव टेंडेंसीज ज़्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऐसे पदार्थ जो हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी ऐसे बच्चों को अगर है तो ये प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है इन द सेंस कि मतलब ये बढ़ती ही जा रही है। और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मतलब आप स्ट्रीट चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम मतलब यू कैन ऑब्जर्व इट योरसेल्फ दैट दे मतलब वो जो है वो ग्लू और जो स्निफिंग है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? How are the school-based children easily targeted? या स्कूल के बच्चे इसका आसानी से शिकार हो सकते हैं क्योंकि स्कूल में जो है पीयर इन्फ्लुएंस जो इस एज ग्रुप पे होता है, स्पेशली एडोलेसेंस में जो पीयर इन्फ्लुएंस होता है कि मतलब यू हैव टू कंफर्म टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मतलब आपको एक अगर ग्रुप की आपको मेंबरशिप चाहिए तो उस ग्रुप के कुछ मापदंड होंगे जिसको आपको पूरा करना है। अब कई सारे ग्रुप इस तरह से बने होंगे कि मतलब बच्चों में ये बहुत ज़्यादा स्पेशली एडोलेसेंट्स में या टीनेज में ये एक टेंडेंसी होती है दैट वो अपनी जो पहचान होती है वो एक ग्रुप के माध्यम से ढूंढते हैं, वो इस माध्यम से ढूंढते हैं कि हमें किस ग्रुप का मेंबर समझा जाता है, बिकॉज पर्सनालिटी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है। तो इस में मतलब कुछ ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जिसका मतलब एक उनके मापदंड इस तरह से होंगे कि आपको स्मोकिंग करनी ही करनी है या फिर आपको अल्कोहल का उपयोग करना ही करना है, और ये एक ऐसे ड्रग्स होते, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि गेटवे ड्रग्स होते हैं कि मतलब एक बार जब आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो फिर इसका इस्तेमाल मतलब आपको और हार्ड पदार्थों की तरफ जो है वो आगे लेके जा सकता है। तो स्कूल एज में मतलब एक ग्रुप को कंफर्म करना, सुपरविजन का ना होना, पेरेंट्स की तरफ से फ्रीली एक्सेसिबल होना इन ड्रग्स का, ये सब चीज़ें जो होती हैं जो स्कूल एज चिल्ड्रन को स्पेशली इस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वनरेबल बना देती है। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो हमारा अगला सवाल डॉक्टर संजीदा के लिए है। तो एक 15 साल की लड़की बार बार अपनी ट्यूशन मिस करती है, तो इस बात पे आप उसकी ट्यूशन टीचर आके उसकी माँ को बताती है और उसकी माँ उसको सब बाकी दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है। इस कारण से वो गुस्से से सुइसाइड अटेम्प्ट करती है। तो क्या ये इसकी माँ की तरफ से ये रिएक्शन सही था, और इस किशोर अवस्था में बच्चों को ये जो गुस्सा और ईगो इश्यूज होते हैं उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम जानते हैं और रिसर्च से ये बात प्रूव भी है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट बच्चों के साथ या किशोरों के साथ डील करने के लिए कभी भी इफ़ेक्टिव तरीका नहीं होता है। ये बच्चों में दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यू जैसे एग्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज़ और इन सब को बढ़ावा देता है। और
इसमें एडोलेसेंस, जैसा कि ये हमें पता है, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है जिसमें बच्चे बहुत हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं। एक कन्फ्यूज़न का स्टेट होता है, साथ ही में स्कूल में एकेडमिक प्रेशर होता है और पीयर प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से उस प्रेशर को कई बार वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस होता है जो एग्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। यहाँ पर इस एग्रेशन को अगर टाइम पे इंटरवीन ना किया जाए तो उनको फ्यूचर में दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है, और वो हार्मफुल बिहेवियर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो खुद को हार्म पहुँचाएँ या दूसरों को। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को उन्हें हैंडल करने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है कि आप अपने बच्चे से बात करें। स्पेशली एडोलेसेंस अगर है तो पॉजिटिव अप्रोच रखें। बच्चे में एक सेंस ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं अपने पेरेंट्स से जाके बता सकता हूँ, वो मुझे डांटेंगे नहीं या मारेंगे नहीं। दूसरा, आप अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बने। अगर पेरेंट्स खुद फिज़िकल मीन से डिसिप्लिन करते हैं बच्चे को, तो बच्चा भी अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एग्रेशन का सहारा लेता है। और आप अपने बच्चे के हर छोटे से छोटे बिहेवियर, जो भी बिहेवियर में तब्दीली आती है, उसको इग्नोर ना करें। चाहे वो बच्चे के पुअर ग्रेड्स आ रहे हैं, वो अपने पीयर ग्रुप में उसके झगड़े हो रहे हैं, और इस तरीके बच्चा अलग है, वो सबसे बात नहीं करना चाह रहा है, इस तरीके जब भी व्यवहार में समस्याएं आती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम, अगर आपको लगता है कि इस तरीके का कोई इशू बच्चा फेस कर रहा है तो प्रोफेशनल की हेल्प लें। हमेशा हमेशा हेल्प के लिए जाएं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है, बच्चा ट्यूशन मिस कर रहा था तो उसका कोई कारण हो सकता है, जैसे कि ट्यूशन में बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, या फिर उसको पढ़ाई में डिफ़िकल्टी आ रही है, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, बच्चे से बात करी जा सकती थी। दूसरा, यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट था कि बच्चे को हिट किया उसके पीयर ग्रुप के सामने, जो कि उसको इंसल्ट फील हुआ। जहाँ पे एडोलेसेंस में बच्चा एक एक्सेप्टेंस चाहता है अपने पीयर ग्रुप में, वहाँ पे उसको इंसल्ट फील हुआ तो वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, एंड ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ। अगर बच्चे से बात करी जाती या बच्चा फ्रेंडली होता पेरेंट्स के साथ कि अपनी परेशानी आके पेरेंट्स को बता पाता। और दूसरा, इसका एक हो सकता है अंडरलाइन कॉज डिप्रेशन रहा हो। अगर बच्चे के बिहेवियर पे ध्यान दिया जाता या टाइम पे इंटरवीन किया जाता तो इस सिचुएशन को रोका जा सकता था, या इस तरीके के किसी भी इंसिडेंट्स को रोका जा सकता है। थैंक यू। धन्यवाद संजीता जी। तो हमारा अगला सवाल गगनहंस सर के लिए है। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे बच्चों में कॉमन हैं, और अगर हैं तो इनको कैसे पहचाना जा सकता है, एंड क्या फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों में तनाव पैदा करते हैं? जैसे कि हम काफ़ी देर से ये डिस्कशन में सुन रहे हैं कि प्रेवलेंस इंसिडेंस जो है, मानसिक हेल्थ इश्यूज जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा है चिल्ड्रन में। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, हम इसके बारे में बात थोड़ा सा करेंगे कि इसमें जो कोर एक्टिविटीज होती हैं चिल्ड्रन में, मतलब जो कि मतलब एक बच्चे से एक्सपेक्टेड है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसमें खेल कूद, पढ़ाई करना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, अपनी एज के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करना, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जैसा कि बच्चे की उम्र के अनुसार संभावित हो वैसा अ, उसमें परफॉर्म करना। तो अगर हम कब कह सकते हैं कि मतलब बच्चे में कुछ ना कुछ जो है परेशानी आ रही है, जब खेल कूद में देर मतलब वो रूल ही नहीं समझ पाते हैं, जिस गेम को वो खेलने गए हैं, और ज्यादातर समय जो है उनका लड़ाई में जा रहा है, बल्कि इसके कि वो उसको एंजॉय करे। स्टडीज में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत कम रहती है, या फिर एकदम से या धीरे धीरे कुछ समय पे उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा कम हो गई है, या फिर वो मैथ्स या लैंग्वेज स्पेशली इन सब्जेक्ट्स में काफी ज्यादा पुअर परफॉर्म कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर पहले इंटरेस्ट दिखाते थे तो अभी सब्सिक्वेंटली वो इंटरेस्ट दिखाना उन्होंने बंद कर दिया है। और पार्टिसिपेट करना वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। और अ, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रूल क्या है मेरे पार्टिसिपेशन के। और एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि कुछ समय के बाद आप बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें कुछ स्किल्स होंगी जिसका वो इस्तेमाल करते हुए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। वो स्किल्स आपको नजर नहीं आ रही है, या वो अगर थी तो वो स्किल्स जो है अभी आप देख रहे हो बच्चा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और वो जो उनको असाइन की गई हैं टास्क, उसका अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि वो कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो रहा है। वो हमेशा अपने आप को विड्रॉन रखते हैं, या फिर बाकी लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो ओवर फेमिलियरिटी शो कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के साथ एज रिस्पॉन्स टू एज अपोज टू विड्रॉन सेल्फ। और वो हमेशा यहाँ बहुत ज्यादा इनहिबिटेड रहते हैं, या बहुत ज्यादा शाइनेस का जो है वो व्यवहार जो है कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो डिसफंक्शन है वो एकेडमिक, सोशल, फैमिलियर, लीगल या ऑक्यूपेशनल किसी भी फील्ड में जो है वो डिसफंक्शन आ सकता है। अब यूजुअली जब अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो बच्चों में सबसे बड़ा कारण जो स्ट्रेस का है वो ज्यादातर स्कूल वर्क या एग्जाम से रिलेटेड या उनके ग्रेड से रिलेटेड जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी से आता है। तो उसका सही तरह से निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं, ये आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, बट बच्चों को भी ऐसे जगल करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में कि खेल कूद, पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनको भी परेशानी आती है इस सब में। तो ये भी एक कारण हो सकता है बहुत बड़ा स्ट्रेस का। पीयर ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती, उसको बहुत सारे सवाल अपने बारे में पता नहीं होते हैं, तो उसका जवाब वो पीयर ग्रुप में ढूंढता है। तो अगर वो फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बुलिंग का शिकार है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है। बार बार अगर स्कूल चेंज हो रहा है और उसको बार बार वो रिलेशनशिप जीरो से स्टार्ट करने पड़ रहे हैं, या होमलेसनेस या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि बार बार बच्चे को मतलब डीमोटिवेट करने की वजह से आ रहे हैं, कि मतलब पेरेंट्स की वजह तरफ से या टीचर की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है बच्चे को, या कोई अंडरलाइन साइकाइट्रिक डिजीज है जैसे कि डिप्रेशन है जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, या बच्चे जिस समय बॉडीली चेंजेस से गुजर रहे हैं प्यूबर्टी में, जैसे उस समय वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। पेरेंट्स के बीच में किसी भी तरह का तनाव है, या वो डिवोर्स या सेपरेशन हो रहा है, तो ये एक बच्चे के लिए एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेस होता है। बिकॉज उनका जो आइडियलाइज्ड सेल्फ, आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ द फैमिली होता है, वो एक तरह से डिस्टर्ब हो रहा होता है, एंड दे थिंक कि समहाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर बच्चे जो अनसेफ एनवायरनमेंट में या फिर घर में मतलब वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, या नेबरहुड में सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और इसके साइंस क्या हो सकते हैं कि बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत लेट सो रहे हैं, वो हर समय डिसंगेज्ड है, मतलब उनमें हमेशा थकान है, या बहुत पैनिकी लग रहे हैं। दे मतलब ये इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि मुझे हर समय थकान रहती है, मतलब नॉन स्पेसिफिक से कंप्लेंट्स है कि मुझे पेट में दर्द हो रही है, सर दर्द हो रही है, हर समय इरिटेबल रहना, अ, अ, सबके साथ मतलब व्यवहार में कुछ परेशानी आना, कंसंट्रेट ना कर पाना, स्कूल जाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहना कि किसी वजह से स्कूल ना जाना पड़े। आपको लगे कि मतलब बच्चा जो अपना ट्रू सेल्फ है वैसा बिहेव नहीं कर रहा, खाना पीना कम कर देना, छोड़ देना, या फिर किसी खास तरह के खाद्य पदार्थों की अ, मांग करना, और अ, अकेले बहुत सारा समय स्पेंड करना। सो ये कुछ साइंस हो सकते हैं जो कि वार्निंग फ्लैग्स हो सकते हैं, कि विच कैन सर्व एज रेड फ्लैग्स दैट यू नीड, कि आपको उस बच्चे से और बात करनी है, और अंडरलाइन कॉज क्या है इस सब का, उसके बारे में और जानकारी उससे हासिल करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बड़ी बार ऐसा होता है कि जैसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे वो बड़ों में प्रेज़ेंट करते हैं, बच्चों में उनकी प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रेज़ेंटेशन हो सकती है। सो बच्चों में वेरी हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन, और मतलब इनफैक्ट अगर आपको छोटी सी भी कोई परेशानी लग रही है,
So seeking professional help at the earliest. This should be done because many a times their presentation is very, very different from the way these disorders present in adults. Thank you. धन्यवाद सर। तो अगला सवाल डॉक्टर पवन के 5 साल का बच्चा है जिसको उसके माता पिता अस्पताल लेके आते हैं। इसको हल्का सा बुखार हुआ है। इलाज डॉक्टर देखने के बाद वो अचानक बच्चा एक पिस्तौल अपने पॉकेट से निकालता है और डॉक्टर को धमकी देता है कि वो इसको इंजेक्शन ना दे। इस बात पे उसके पेरेंट्स और डॉक्टर हंस देते हैं उसकी नादानी समझ के। क्या ये सही है और इसका आगे का क्या परिणाम हो सकता है? थैंक यू डॉक्टर गौतम। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बच्चे के पास एक गन है जो प्लास्टिक गन जैसा लगता है, बट एग्रेशन जो है बच्चों में बड़ा कॉमन है। इट्स नॉट एन कॉमन थिंग, इट्स नेचुरल थिंग ऑल्सो, एंड द children learn how to control the aggression later in their life. Like with the adults, we know that aggression is good or bad, but children don't know. This is their part of behavior. But aggression with some thought to hurt somebody is the violent aggression, and that is not the right thing. So this is not the right behavior of this child. And if not controlled or not guided or not trained these children properly by the parents and society and the health provider, then these children later on become more violent in the life and may have some problem also. So why this picture? Does some children become more violent, more aggressive than the other children? So all children are different. So one is the personality trait of the child. Every child is different. Some are more aggressive, some are very go child like of thing we say. So we cannot change that personality trait, but we can modify those personality traits by changing the environment, in the home, in the society, by positively promoting the lifestyle changes in the children and behavior changes. Like if the patient have the child have some problem in the family, suppose the mothers don't have time to train the child, to support the child emotionally, or parents have non-responsive parenting, means whatever the child is doing, they are not concerned at all. Or the parents also are aggressive or promoting the aggression in the family. कई बार होता है कि एक झगड़ा हुआ, उसने चाटा मार दिया, तूने क्यों नहीं मारा, तू भी मार के मैं चलता हूँ. So if parents do all these things, if they are role modeling the aggression, the child become aggressive. Sometimes the child sees aggression in the society. Family is calm, okay, but outside in society, in the media, here they are exposed to a lot of violence. Against this violence can lead to this kind of personality trait in the behavior that child become more aggressive. So how can we prevent this aggression in the children? Is the most important thing is the family. Responsive parenting is the one thing. If something is happening, why it is happening? We have to talk to the child and tell the child this is not the right way to express the things. This is not the way to say that doctor that I will hit you or fire you. That's one thing. Let the child learn the communication. Second thing, parents should do the role modeling. They should behave in the proper way. Only then the child can learn the proper way how to behave in the society. We can cut the exposure to the violent gaming, violent movies, violent programs on the media. Because what happened? This is important because the small children, once they develop the neural pathways in the brain, once they are make, cortical, subcortical, hippocampal pathways are make, they are become fixed in the early life, then it's difficult to change. Okay, because these pathways control the aggression and behavior. So early in the life, below 5 years of age, it is very important to train the child what is wrong, what is right, how to express the anger, how to control it. As one common example is the temper tantrum. बच्चा मचल जाता है, जिद करना या मचल जाना बड़ा कॉमन समस्या है. तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं. When they have aggression, they divert the mind. The one thing. Sometimes टाइम आउट कर देते हैं, उससे बात ही नहीं करते, उसको सर पटक दे दो कुछ देर के लिए. कई बार उसको अच्छे व्यवहार के लिए हम लोग पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दे सकते हैं, रिवार्ड सिस्टम कर सकते हैं. कई बार उसके प्रिविलेज को कम कर सकते हैं. गुस्सा करेंगे तो हम टीवी को 1 घंटे नहीं चलाएंगे. सो दैट वे वी कैन हेल्प दिस चिल्ड्रन टू कंट्रोल द एंगर्स. थैंक यू. धन्यवाद सर. सो अगला सवाल अजय कुमार सर के लिए है. तो ये एक 6 साल का बच्चा है जिसको उसके स्कूल में उसके सीनियर्स चिढ़ाते हैं. तो क्योंकि वो एक पगड़ी पहनता है, अगले दिन वो स्कूल जाने से मना करता है एंड फिर कुछ दिनों के बाद वो दूसरों से बात करना भी बंद कर देता है.
तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की बुलिंग हमारे स्कूल में कितना प्रचलित है, और हमारे बच्चों को ऐसी बुलिंग से कैसे बचाया जा सकता है? स्कूल प्रशासन का इसमें क्या रोल होना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई लीगल एडवाइजरी रेगुलेशंस हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए? थैंक यू सर। ये बहुत ही रेलिवेंट बहुत ही कॉमन इशूज हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी ये बुलिंग का इशू कॉमन है, बट लास्ट 5 इयर्स में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे काफ़ी डिक्रीज हुई है। जैसे इसमें एक केस मेंशन्ड है कि टर्बन का, वो एक जैसे हमारे रिलीजन और टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजियंस उसके से रिगार्डिंग है। तो अभी ये सभी स्कूल में कॉमन नहीं है। पहला है कि हाउ मच यू फील सच टाइप ऑफ बुलिंग इज कॉमन, ये कॉमन हर स्कूल में नहीं है, और एरिया टू एरिया, लोकेलिटी टू लोकेलिटी वेरी करता है। दूसरा कि इसके लिए हमारे टू रिड्यूस बुलिंग एंड इवन की बुलिंग हो ही नहीं ऑन डिफरेंट एरिया, खास कर जैसे डिसेबिलिटी भी एक बुलिंग का रीजन है, जेंडर भी मतलब डिफरेंट एरियाज हैं जिसके बेसिस पर बुलिंग हम स्कूलों में होता आ रहा है। लेकिन अब चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसके लिए जो हमारे ईवीजीसी काउंसलर्स हैं स्कूल्स में, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है कि बच्चों को अवेयरनेस ऑन रिलीजन, ऑन डिसेबिलिटी, ऑन जेंडर इशूज, डिफरेंट इशूज पर एक कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव प्लान है, जैसे डीसीपीसीआर का भी है। तो उसके कोलैबोरेशन से हम लोग की बच्चों का बुलिंग ऑन डिफरेंट एरियाज ना हो लिए, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी हैं, एसओपी भी है कि यदि कहीं केस मिलता है तो उस केस में इस केस को कैसे डील किया जाएगा, फिर कैसे पेरेंट्स को बुला के फिर इन चीज़ों को बताया जाएगा, डिफरेंट जो बच्चा किया है, और बच्चे को उस बुलिंग के इन्वायरमेंट से निकाल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, फिर इनके कंसिक्वेंसेज बताना। तो वो हमारा एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हर गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स बच्चे को असेंबली टू होल द स्कूल इन्वायरमेंट को इनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए जो हमारा रोल है वो, इसके लिए जो ईवीजीसी काउंसलर हर स्कूल में उनकी सर्विसेज दी जाती है, और डीसीपीसीआर के साथ मिलके दिल्ली कमीशन ऑन चाइल्ड विद राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो कमीशन है हमारे दिल्ली में, उनको कोलैबोरेशन से हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिससे कि रेगुलर रूटीन इंटरवल पर, जिससे कि ये बुलिंग ऑन डिफरेंट एरियाज ना हो। और यदि ये केस नोटिस में आता है तो इनका सेट ऑफ प्रोसीजर भी है कि हाउ टू रिड्यूस इट द प्रॉब्लम ऑफ बुलिंग। यदि किसी पेरेंट्स को इस तरीके का यदि शिकायत आता है कि हमारे बच्चे को इस तरह की बुलिंग हुई है, तो हम फिर बच्चे को आइडेंटिफाई करके फिर बच्चे को इसकी अवेयरनेस हम देते हैं, उनको बताते हैं ये कंसिक्वेंसेस क्या हैं, ये आपके कलीग्स हैं, इक्वल हैं आपके, और जो उनको बुलिंग किया वो रॉन्ग है। तो इस तरीके से अभी हमारे यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और इनके जो जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट रूल्स में, वो हम स्कूल्स में ऑन डिफरेंट कॉर्नर्स हम लगा के रखते हैं, जिससे पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, ऑल स्टेक होल्डर्स, एसएमजी के थ्रू भी हम ये चीज़ें बताते हैं कि बुलिंग इज नॉट ए गुड थिंग्स, और हम से नो बुलिंग करके हम कैंपेन भी चलाते हैं हर क्लास में, हर स्कूल्स में एंड सोसाइटीज़ में, कि बच्चे को स्कूल इन्वायरमेंट में या इवन की कम्युनिटी में ना हो बुलिंग। थैंक यू। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूँ। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। कुछ केसेस मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं, उनको हैंडल किया है, एंड काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, और पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है बुलिंग की वजह से, और बहुत सुसाइड्स भी होते हैं। उनका डिटेल में मैं नहीं जाता। एक दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी बच्चे की बुलिंग होती है, छोटे बच्चे की या बड़े बच्चे की, और वो एक तो पेरेंट्स को वो समझना है, उसको रियल समस्या है,
ये कह के नहीं टाल देना है कि नहीं नहीं ये तो अक्सर घर में भी ऐसा कर रहा है, पड़ोस में भी आपने गड़बड़ किया और स्कूल में भी क्या हो, टीचर तो आपकी ये बोल रही हैं, बिकॉज टीचर को बिलीव करते हैं और बच्चे को नहीं बिलीव करते हैं। एक ये समस्या है। दूसरा, हमें ये जानना ज़रूरी है पेरेंट्स को और बच्चे को भी कि हमारे पास उसकी क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो ये है, एक तो हर स्टेट में स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, अगर डिसेबल्ड बच्चों के लिए है तो ये तो केवल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को देखेंगे, वहाँ आप जाएं, वहाँ कंप्लेन करें। दूसरा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी बच्चों के लिए है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर जगह होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाएं और जैसे डॉक्टर अजय ने बताया, नेशनल लेवल पे हमारा NCPCR है, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो वो नेशनल लेवल पे हो गया और हर स्टेट में एक स्टेट PCR होती है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका काम है और किसी बच्चे को कोई भी समस्या है उसके प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, वहाँ पे अपने इश्यूज़ को दें। दिल्ली में मैंने देखा जो हैंडल किए थे, ऐसा कोई बच्चा आया था बट पेरेंट उनका बहुत ही जागरूक थे और वे डिफेंडिंग द चाइल्ड। ही वॉज ए चाइल्ड विद ऑटिज़म, उसको बुलिंग भी होती थी और स्कूल वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे और बच्चों को सपोर्ट करते थे। ये बोलते थे नहीं ये बच्चा विद ऑटिज़म और इसलिए कभी ये एग्रेसिव हो जाता है, अब इसलिए इसको हम अलग करो या इधर से निकालो कि किसी दिन वो पेंसिल से और जो बच्चे हैं उनकी आँख में घुसड़ सकता है, नुकसान कर सकता है, और विदाउट रियलाइजिंग कि एनी चाइल्ड कैन डू दैट इन द क्लास। तो वो चीज़ें एक अपने हक का पता होना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन के लिए हर जगह कोई ना कोई प्रावधान गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो इनका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। धन्यवाद अजय सर और धारियाल सर। अगला अगला सवाल गगन सर के लिए है। तो दिस इज अ चाइल्ड हु हैज बीन ब्रॉट टू अ साइकियाट्रिस्ट बाय द कंसर्न पेरेंट्स सिंस there have been frequent complaints against him from the school. He has been aggressive in the recent days and he has set fire to his answer sheets since he could not perform well in the exams. So what are the causes for childhood conduct disorder? How do we deal with such children and can it be prevented? कि बुलिंग जब आप इलेक्ट्रॉनिक किसी क्षेत्र में मतलब बुलिंग का शिकार होते हैं, जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सब जगह पे उनकी प्रेजेंस है साइबर वर्ल्ड में, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस सब पे वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वहाँ अगर वो बुलिंग का शिकार होते हैं तो ये साइबर बुलिंग के अंडर आता है और मतलब दिस इज आल्सो अ वेरी सीरियस इशू। काफी सारे बच्चे मतलब शर्म का शिकार होने की वजह से मतलब वो इस चीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका बच्चा बुलिंग का शिकार हो रहा है तो अगर उसका आपके साथ ऐसा एक रिलेशन नहीं है जिसमें कि वो इतना फ्री फील करे कि वो आपसे अपनी बात कह सकता है, तो कई बच्चे जो होंगे वो मतलब ऐसा ओवर्ट बिहेवियर नहीं होगा और दे विल कंटिन्यू टू सफर इन साइलेंस। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए बुलिंग के क्षेत्र में। conduct this कंडक्ट डिसऑर्डर की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसके कारणों की बात करते हैं कि मतलब ये क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो बेसिकली एग्जैक्ट रीजन वी डू नॉट नो इट इज, मतलब हमें एग्जैक्ट कारण इसका नहीं पता है कि ये क्यों ऐसा होता है। यूजुअली इसकी जो होने के कारण होते हैं वो काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। मल्टीफैक्टोरियल इन द सेंस कि जिसमें कुछ पार्ट जो है वो जेनेटिक हिस्ट्री का होता है कि अगर पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम रही है पहले अग्रेसिवनेस की, कुछ मतलब कुछ बर्थ, अगर थोड़ा आईक्यू में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है पहले पेरेंट्स की, या फिर मतलब और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स रही है, एग्रेसिवनेस की हिस्ट्री रही है पेरेंट्स में। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
को जो बच्चे बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स में सब्सटेंस यूज होना, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की मतलब मदर में किसी प्रकार का वायरल डिजीज हो जाना जिसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब बहुत सारे कारण, एग्जैक्ट कारण क्या है कंडक्ट डिसऑर्डर का, ये कह पाना काफी मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? यस, देखिए ऐसे बच्चों का डील करना जो होता है, मतलब यूजुअली ये साइकोथेरेपी के द्वारा ही किया जा सकता है, और ऐसे बहुत कम जो क्लिनिकल ट्रायल हैं वो अवेलेबल है कि मतलब जब लॉन्ग टर्म हम इंटरवेंशन करते हैं, शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन से ऐसे बच्चों में आप किसी तरह के सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इनमें सुधार की उम्मीद करते हैं तो जो वो सुधार आ सकता है वो लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी से आ सकता है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इस चीज को अच्छे से मतलब साबित भी किया गया है, ऑल्दो कि अभी इतना ज्यादा उसका एविडेंस नहीं है, बट स्टिल जो एविडेंस है वो इसी तरफ पॉइंट करता है कि साइकोथेरेपी जो कि सालों साल चले, और जब सालों साल की हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, जो कि साइकोथेरेपी रेगुलर सेशंस पे चल रही है, जो बच्चे के बिहेवियर को बिल्कुल मॉनिटर कर रही है अच्छे से, और मतलब ऐसी साइकोथेरेपी ने शो किया है कि अ, कैसे ये चेंज किया जा सकता है। डेफिनेटली मतलब प्रिवेंशन के मतलब कुछ 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट ओवरऑल मतलब मतलब जैसे हम कहेंगे कि अगर पेरेंट्स में ड्रग यूज ना हो, पेरेंट्स में मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो सोसाइटी की इम्प्रूव की जाए, या एजुकेशनल लेवल थोड़ा सा बेटर हो, तो इस तरह के जो जेनरिक मेजर्स होते हैं जो कि एक सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, तो उस तरह के कारण जब होंगे तो डेफिनेटली वो मतलब इसकी जो प्रेवलेंस है उसमें कमी देखी जाएगी, जब ऐसे ओवरऑल पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा, बिकॉज ये सब चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, पॉवर्टी, सब्सटेंस यूज एंड occurrence of these disorders. Thank you. सो अगला सवाल डॉक्टर पवन के लिए है। सो ये कोविड-19 के दौरान जो मानसिक स्वास्थ्य में असर पड़ा है बच्चों में, उसके क्या कारण हो सकते हैं? कोविड-19 के दौरान जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है, इसमें काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। एम्स में भी रिसर्च इस मुद्दे पर हुआ है, जिसमें पाया गया कि लगभग 80% बच्चों में व्यवहार में समस्याएं देखी गई, मानसिक समस्या देखी गई। सबसे बड़ा कारण तो जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 में, जिससे कि बच्चे अपने घरों में रह गए, बाहर उनके स्कूल बंद हो गए, इंटरेक्शन बंद हो गया पीयर से। पेरेंट्स के जो जॉब से, कई पेरेंट्स के जॉब्स चले गए, जो लोग डेली वेजेस थे, दे स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो वन थिंग इज व्हेन अ चाइल्ड आर वेरी प्रोन फॉर द मेंटल हेल्थ, सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं मेंटल प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज उनका जो मेंटल हेल्थ स्टेटस डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पर, उनके पीयर ग्रुप्स पर। कोविड-19 के दौरान बच्चों ने अपने पीयर ग्रुप से मिलना बंद कर दिया, तो जो स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर्स, जो सेफ्टी वाल्व थे, वो उन्होंने काम नहीं किया, जिससे उनको स्ट्रेस बढ़ा। सेकंड, जो पेरेंट्स थे बच्चों के, उनके वेजेस लॉस हुए, जॉब लॉस हुए, उनको भी मानसिक समस्या बनी। पेरेंट्स, बच्चे यूजुअली अपने पेरेंट्स का अनुकरण करते हैं, जैसा पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। जब पेरेंट्स को जब मानसिक समस्या बनी तो उसका रिफ्लेक्शन बच्चों में भी आया। हालांकि बच्चों की तुलना में पेरेंट्स में लगभग आधे ही पेरेंट्स को ये मानसिक समस्या देखी गई। सो एक तो कारण था कि पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन आना, एंजाइटी आना, पेरेंट्स के जॉब लॉस हो जाना। देन सेकंड, जो बच्चों को मेंटल हेल्थ इशू हुए, वो जब घर में रहे बच्चे, तो उन्होंने सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, ये भी काफ़ी बढ़ा। इसके एक्सपोजर से भी बच्चों को काफ़ी चेंजेस बच्चों के व्यवहार में देखे गए। कई बच्चों में एग्रेशन भी देखा गया बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू सोशल मीडिया। सो वी कैन से द सोशल मीडिया इफ वाज यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे, ये चीज़ें रुक सकती थी। पेरेंट्स का इंटरेक्शन अगर बच्चों से बढ़ता उस टाइम पर, देन हम इन चीज़ों को कम कर सकते थे। जो बच्चों के अंदर स्लीप प्रॉब्लम्स हुए, अटेंशन डेफिसिट हुआ, आपकी स्कूलिंग पूरी ऑनलाइन हो गई। अगेन दैट वाज अ बिग चेंज in the society, because from the formal schooling now you are adapted to learn on the screen. So उससे ही बच्चों के व्यवहार में और समझ में काफ़ी फ़र्क पड़ा। So
अगर ऐसा कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि जिसमें कि इस तरह की चीज़ें आती हैं, अभी तो फॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ दिस कोविड, so now child's again going to a school, but if this happen again, then positive parentings, maintaining daily routines, exercise even in the homes can prevent can improve the mental health in the children. वी हैड डन अ स्टडी, हमने किया था एक मेटा एनालिसिस जिसमें हमने 15 स्टडीज़ को जोड़ के अराउंड 23,000 बच्चों को देखा। उसमें से 34.5% को था उनको आया था प्रॉब्लम ऑफ एंग्जाइटी, 41% को डिप्रेशन और 42% को इरिटेबिलिटी और 30.8 को इनअटेंशन। दैट मीन्स बिहेवियरल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो बच्चों में अराउंड 80%, 79.4% में थी ड्यूरिंग कोविड टाइम, और ये टिपिकली डेवलपिंग और वो सारा मिला के हैं। अब फाइनली विल जस्ट आस्क डॉक्टर गगन अबाउट जुवेनाइल डेलिकेंसी। So your comments regarding the factors associated with juvenile delinquency, जिसको बाल अपराध कहते हैं। है कि अगर पेरेंट्स का सुपरविजन नहीं है, पेरेंट्स का सुपरविजन अगर मिसिंग है, पेरेंट्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जो बच्चे इमोशनल या सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज का शिकार रहते हैं, उनमें भी मतलब ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों में इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है जो कि अनट्रीटेड रहे लंबे समय के लिए, वो भी इस समय पे इस लाइन पे चल सकते हैं। अग्रेशन जो है वो थोड़ा अनकंट्रोल्ड है, थोड़ी सी आईक्यू की प्रॉब्लम है, लो आईक्यू है, और इसके साथ साथ जब सब्सटेंस अब्यूज रहता है तो मतलब जुवेनाइल डिलिक्वेंट होने के चांसेस जो है बच्चों में बढ़ जाते हैं। लीगल इम्प्लीकेशंस इसके काफी वेल नोन है कि हमारी कंट्री में, जैसे कि मतलब जो इनको ट्राई किया जाता है वो एक सेपरेट कोर्ट्स में किया जाता है, जिसमें कि मतलब एक फीमेल जज जो है वो प्रिसाइड करती हैं प्रोसीडिंग्स पे। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस अभी रिसेंटली किए भी गए हैं, रिसेंटली जो बहुत मतलब हीनियस क्राइम्स हुए हैं उसको लेके कुछ इसमें चेंजेस किए भी गए हैं लॉ में। इसको प्रिवेंट करना, जो जहां तक उसको प्रिवेंट करने की बात है, तो मतलब ये इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम कहें कि हम इनको आइसोलेशन में देखेंगे और इसको आइसोलेशन में हम एक अलग चैम्बर में हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जहाँ तक लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉवर्टी, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, lack of equal opportunities, substance use, uh, uh, crime in the society, availability of drugs in the society, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में ग्रो कर रहा है इसका उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। क्या वो एक ऐसी सोसाइटी में या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे क्राइम को नॉर्मलाइज किया जाता है? जैसे कि एक बहुत कॉमन चीज है जो कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक अगर बैकग्राउंड से एक बच्चा आ रहा है तो वो देख रहा है कि देयर इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो क्या वो ये सब चीजों को देख के इस सब को नॉर्मलाइज कर रहा है, और ये ऐसा उसके सामने एक मॉडल है जिसको वो फॉलो कर रहा है? तो अ, मतलब इन सब चीज़ों का आपस में कनेक्शन है। सो हम इसको एक आइसोलेटेड साइलो में नहीं देख सकते हैं कि हम इसको अलग से कैसे कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जब तक हम ओवरऑल मतलब अपनी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के बारे में बात नहीं करते, जब तक हम मतलब इकोनॉमिक बेटरमेंट की बात नहीं करते, एम्प्लॉयबिलिटी की बात नहीं करते, तो तब तक इस चीज़ को प्रिवेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ऑल्दो अगर हम मतलब इसके बारे में थोड़ा-सा टाइम टू टाइम थोड़ा-सा मतलब वो करें, प्रचार वगैरह करें, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। बट डेफिनिटली इसका डेफिनिटिव सॉल्यूशन जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में ही है। Thank you, sir. Thank you, Dr. Pawan. Thank you, Dr. Sanjita, and thank you, धन्यवाद, Dr. Dharia. Basically, how can role of
ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट ब्रेन फंक्शन। तो इसमें हमने ना जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे और स्पेशल नीड्स दोनों में किया है। तो आजकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ताकि हाउ कैन यू फैसिलिटेट लर्निंग, और ये टिपिकली डेवलपिंग की बात कर रहे हैं जो कि अभी फ्यूचर में है। तो इसको बस ये मेंशन करना चाहती हूँ, उससे बहुत सारी वे में लोग बच्चों की स्टूडेंट इंगेजमेंट जो है उनकी लर्निंग को इम्प्रूव हो सकता है। जस्ट वांटेड टू प्राइम यू, सो देयर इज इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। एंड वो जब टेक्नोलॉजी होती है बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इंगेज करते हैं वो उसमें। तो डाइवर्स टेक्निक्स नई आई हैं, मल्टीमीडिया की आई हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, डिस्कशंस हैं। तो वो नए नए मॉडल्स बन रहे हैं। काफ़ी सारे टूल्स हैं, वाइट बोर्ड टूल है, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको दिया जा सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ई लर्निंग जो डिस्टेंस लर्निंग है, इंटरनेशनल ग्रुप्स बना के लर्निंग हो रही है। तो जो हम लोग नहीं जा पाते थे, कोई लोग कहीं, तो दूर दूर तक इट इज़ गेटिंग मोर रीच। एंड वीडियो असिस्टिव लर्निंग, फिर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सारा चीज़ें हैं। और कभी बच्चों का जिसमें कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बन सकते हैं। ई लर्निंग इज़ द वे फॉरवर्ड एंड इट इज़ देयर। वीडियो असिस्टेड लर्निंग में ज़्यादा समझ आता है अगर सिचुएशन समझते हैं। और इमर्सिव लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं वो आप उसका वर्चुअल उसका एनवायरनमेंट बनाया हुआ है अराउंड यू, उसके अंदर थ्रू द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया था, अभी हम एक ब्रेन मशीन लर्निंग का हम लोग कर रहे हैं सीडैक के साथ। उसके अंदर वी आर गोइंग टू हेल्प असिस्ट, जिनको पुअर लर्नर्स हैं उनको कैसे असिस्ट कर सकें। तो ये सारी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इट टू गो फॉरवर्ड एंड देर इज़ एन एडवांटेज। इट इज़ एंड इट कैन रीच इन फार ओवर एरियाज। बट हाँ, ये गांव में जाने की इशू है। जब लोगों के घर मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो ये बेसिकली आर मोर केटरिंग टू द सिटीज़। तो जब एक घर में एक ही मोबाइल फ़ोन है तो कई लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट। सो ये एक इशू हमारा रहता है। तो उससे बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लाइफ सेटिस्फैक्शन हो रही है। पर यही मैंने बताया, अवेलेबिलिटी, और कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको थ्रू सम एड्स, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, या कुछ जो विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, एंड उनको वी कैन यूज़ वेरियस टेक्निक्स टू टीच देम। सो द लॉट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है स्पेशल एजुकेशन में। और जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं उसके लिए ऑगमेंटेड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का है, हम भी एक ऐप बना रहे हैं, हम ऑटिज्म के लिए बना रहे हैं, जिससे वो ऐप से पेशेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट कि क्या वो चाहता है। तो दिस इज देयर टू टाइप्स ऑफ ऐप्स, वन विल बी, मतलब दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप, बट दे विल बी डिफरेंट, हाई टेक है, कोई लो टेक है, बट दे आर डिपेंडेंट कि कोई ऑटिज्म के लिए डिफरेंट है, सेरेब्रल पॉलिसी के लिए डिफरेंट है, जो कि परेशानियाँ डिफरेंट है। माई आइडिया इज जस्ट टू सेंसिटाइज यू कि बहुत चीज़ें आ रही हैं। लॉट ऑफ यूजिंग अडाप्टिव कंप्यूटिंग, ह्यूमन स्पीच रिकॉग्निशन, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो और उसके बाद ये तो हम टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में जो न्यूरोटिपिकल हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। पर रिहैब में किया जा सकता है, मैंने जो बताया अल्टरनेटिव ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन, सीपी के लिए अलग प्रॉब्लम है, ऑटिज्म के लिए अलग है, तो उनके लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताइए। साथ में रोबोटिक्स का यूज़ है। एंड दो टाइप के रोबोट्स होते हैं, एक तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, हम लोग ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे काम कर रहे हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ। उसके अंदर ऑटिज्म के बच्चों के साथ हम उसमें काम कर रहे हैं ताकि जल्दी उनको पिकअप करा जाए। तो ये ऑटिज्म के लिए हमने ये बनाया है, अभी ऐप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारा हम लोगों ने हर चीज़ के लिए क्या है, तो वो हम लोगों ने उसके पिक्चर्स और आवाज़ वगैरह सब बना के अभी रखा है। तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव डेवलप जॉइंट अटेंशन टास्क और स्पेशल प्रेडिक्शन के लिए ये सेम IIT के साथ हमने बनाया है। स्पेशल और टेम्पोरल प्रेडिक्शन के लिए ऐप्स बनाए हैं। और वर्चुअल रियलिटी हमने CP के लिए बनाया है, कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। उसमें क्या होता है, बच्चा वो जब सामने बैठा है वेब कैम के, तो अगर लड़की है तो वो लड़की आती है, लड़का है तो वो लड़की आते हैं। और जो मॉडिफाइड कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी होता है, जिसको एक साइड में वीकनेस ज़्यादा होती है सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे में या स्ट्रोक वाले में, तो वो जो नॉर्मल वाला साइड है उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं एक स्लिंग में, जो फ्रैक्चर वाला होता है। और जो इफेक्टेड लिम है उससे एक्सरसाइज कराते हैं और गेम कराते हैं। तो जब वो कंप्यूटर से असिस्ट करते हैं तो हमने रिसर्च में देखा कि फ़ायदा था। और सोशल इमोशनल रिकॉग्निशन के ऊपर भी हमने काम किया है, और जिसके अंदर हैप्पीनेस वगैरह देखा गया है कि आसानी से पता चलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस ऑटिज्म के लिए भी चल रहा है। उसमें देखा जाता है AI से कि बच्चे जो है ना, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, वो एक लेफ्ट आई की तरफ ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा मतलब चीज़ें चल रही हैं जिससे पॉसिबली हम कुछ आगे चल के कुछ अर्ली डायग्नोसिस की चीज़ें आएंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन। ये पैरेट वाला मैंने आपको बताया था, और एक दूसरा ह्यूमनॉइड है, उस पर हम ह्यूमनॉइड में कर रहे हैं। हमने बर्बेक यूनिवर्सिटी के साथ एक स्क्रीनिंग टूल बनाया ऑटिज्म रिस्क का, बेस्ड ऑन एन ऐप, एंड दैट वो हमने उसको स्टडी भी करा है।
एंड आई ट्रैकिंग डिवाइस बनाया है उन्हीं के साथ, जिससे हम ऑटिज्म को जल्दी पकड़ सकें। और ये तो आपको बताया था सुबह। तो अभी जो COE के अंदर है उसमें असिस्टिव सोल्यूशन ऑगमेंटेड रियलिटी का बताया है, ऑगमेंटेड रियलिटी का चीज़ें हैं। और उसके बाद जब यह एंट लिखा है तो उसके साथ एंट की फ़ोटो वगैरह भी डाल देते हैं। अगर आप उसको डिजिटल लाइव एलिमेंट से करेंगे तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाता है। तो दीज आर देयर। और बेसिकली बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उनका मूवमेंट और रिहैबिलिटेशन में हम उनको बेनिफिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल दीज। ये सब जो हम दिखा रहे हैं ये हम बना रहे हैं अलॉन्ग विद दैट AIIMS कोलैबोरेशन इन द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसमें हम लोग गेट के लिए भी जो बच्चों के फॉर इम्प्रूविंग द गेट we are trying to do all these things. So there is lot of work which is possible and lot of work we are doing. So we will be slowly coming out with all those things. Thank you so much for patient listening, and I am grateful to all of you who are there. Everybody, from media protocol, from set facility, and CMET, and everybody else who's been given all of you. Actually, वो खत्म होना था 1 बजे, तो it was only tea and snacks were outside, so we will just have that, and then we will just thank you so much.